Please. Yes, sir. Okay. A very warm good afternoon to all our distinguished dignitaries, esteemed speakers, scholars, and participants joining us from different corners of the globe. Welcome to second day of the two-day international conference on multidisciplinary research focusing on the theme tribal development, the challenges, opportunities, and sustainable development. I am today's moderator for today. I am Bhavna Ratnakar, Assistant Professor English here at Chaitanya Science and Arts College. We are proud to state that this mega event is organized by Chaitanya Science and Arts Autonomous College, Pamgarh, in esteemed collaboration with the Madhya Pradesh Chhattisgarh Economic Association, Janjatiya Sodhpeeth, and the Social Science and Management Welfare Association. So, moving forward, to set the tone for today's session, I have distinct honor to invite a visionary leader, a pillar of academic excellence, and the principal of Chaitanya Science and Arts Autonomous College, Dr. V.K. Gupta, sir, to deliver today's welcome address. Please, sir. Thanks, Dr. Bhavna. Thank you so much. Uh, Good morning, good afternoon. I know that various peoples are in different time zones, so thank you for joining us if it is odd time for you. And we send our warm welcome and greetings from India. And in India, in Hindi, we say Namaste to greet all of you. So we extend a warm welcome on the behalf of organizing committee to this international conference on multidisciplinary research in tribal development, challenges, opportunities, and sustainable development. We are honored to have distinguished guests, speakers, eminent academicians, researchers, international delegates, faculty colleagues, dear students, and participants. So once again, uh, our organizing committee has made great efforts to make it possible. We welcome you all on this international conference platform through online meet. It is a matter of really great pride and honor for us, for the Chaitanya College, for bringing together scholars from India and abroad to deliberate on an issue that is closely related with social justice, human dignity, cultural identity, and sustainable development. Fortunately, today is 9th August, if you remember. Bhavna madam, Danesh ji, can you permit me to share my slides if possible? I have two slides only. Rajesh, sir, please allow sir to show the slides, sir. Rajesh, sir. Yes, allow me, allow me. Yeah. Already, please. Can you see me? Hello? Can you see me? Yes, sir, you are visible. My slide, is it visible for you? The slide is not showing right now, sir. Okay, okay, okay. I will try again. And Ganesh, it is showing Chrome tab, Windows. I should select Windows. Windows or entire screen I have selected. Okay. Okay. Uh, um, Now visible. Oh, oh, no, but I'm not able to show my screen. I'm not able to show my screen.
Can you see the PowerPoint? Can you see this world? What? So I just want to remind that really we are fortunate that today is the great moment for us, the academic community. Today is 9th August, and this makes this gathering particularly significant as we observe World Tribal Day today, the International Day respect and learn. World Tribal Day is not merely a day of celebration, it is a day to recognize indigenous cultures, respect their rights, preserve their identity, and most importantly, listen to their voices. And this was only possible when we could collaborate with our potential collaborators, and we are very honored to have a collaboration with them, Madhya Pradesh Chhattisgarh Economic Association, and then Jati Shodh Sansthan Peeth, and Social Science and Management Welfare Association. And so we are together. It's a great celebration and for the cause. So for generations, the tribal communities have lived. I am audible, sir. Is it okay, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So World Tribal Day is not merely a celebration. It is a day to recognize the indigenous cultures, respect their rights, preserve their identity, and most importantly, listen to their voices. For generations, the tribal communities have lived in close harmony with nature. Their traditional knowledge of forests, biodiversity, medicinal plants, agriculture, water conservation, and sustainable living represents a valuable heritage for the entire humanity. Today, I think I should make it a better one, and no, it's better, I think. Dhaneshji, is it better? Hello? Okay. Oh, okay. So for the generations from the tribal communities have lived in close harmony with nature. The traditional knowledge, forest, biodiversity, medicinal plants, agriculture, water conservation, and sustainable living represents a valuable heritage for entire humanity. Therefore, we should change our perspective. Instead of asking, we should go like this, that what can we give to tribal communities? We should also ask what we can learn from tribal communities. And then we can move from development for tribals to development with tribals. This is what I wish to submit. And really, this platform is going to contribute towards knowledge, science, and sustainability. The tribal knowledge can be seen as a living university. A university without walls, whose textbooks are nature, whose teachers are generations of experience. Our responsibility as researchers is not to replace this traditional wisdom with modern science, but to create a meaningful dialogue between indigenous knowledge and contemporary science. When we combine traditional knowledge, modern science, technology, and entrepreneurship, we can create new possibilities for sustainable livelihoods, biodiversity conservation, health, agriculture, ecotourism, and tribal entrepreneurship. But this must always be guided by respect, participation, and fair benefit sharing. Tribal communities should be partners and co-creators of research. They should be involved with it, not merely the subject of research.
And particularly, I would like to um, share with young researchers that, dear students and young researchers, please don't look tribal communities only through the lens of poverty or backwardness. Look at them through lens of knowledge, resilience, creativity, and sustainability. When you undertake research, do not ask only what I can publish, what I can uh, my research change. Our research should ultimately prove lives, create opportunities, and strengthen communities. Our commitment is on this World Tribal Day should be, let us make three commitments I propose. Respect tribal identity, preserve and value tribal knowledge, promote inclusive and sustainable development, and let us move from here, from welfare to empowerment, from research on tribes to research with tribes, and from development imposed from outside to development created with the community. This is this will be great if we can achieve it. And real measure of development is not how rapidly we change a community, but how respectfully we engage the community to shape its own world. And I must add that United Nations on this International Day of World Indigenous Peoples Day, can you see my next slide, please? Daneshji, is it visible? Yes, sir. Yes, Yes. sir. It is visible, sir. So this year, 2026, United Nations theme is honoring indigenous midwives, safeguarding the life and well-being. And this United Nations message, I would like to point it out because it contains major pointers what we should take into our recommendation. If you think proper, if the delegates and the committee thinks proper, it is just a suggestion. And the message goes like this: indigenous people are the guardians of cultural heritage, stewards of vital ecosystems, and crucial contributors to our shared future. The United Nations calls for rights-based health approaches, better data, investment in midwifery, and respect for indigenous women's informed choices. So our collective wisdom can protect new life. Let us respect indigenous knowledge, strengthen culturally appropriate care, ensure that tribal communities are partners in shaping our own future. So it is a great message and an insight to consider by the international community at this conference. And I would like to conclude on the behalf of organizer that Chaitanya means consciousness and awakening. Chaitanya, let this conference awaken new consciousness, development with dignity, science with sensitivity, innovation with inclusion, and progress with sustainability. So let every research paper here become a seed of an idea. We had on the day one, lot of interesting presentations were given, and every idea become an action, and every action contribute to a more inclusive, just, and sustainable world. So let us research not merely to know, innovate not merely to create,
and develop not only merely to progress, but to ensure no community and no culture is left behind. Thank you very much for your patient hearing. And I hand over for giving me a chance to say my few words and wish you all the best. And I am sure that this conference on such a relevant theme, meaningful theme, and we are the most ancient, all are tribals. We are all tribals in time. Actually, technology is changing so fast, and now it is a global problem. And we have discussed yesterday that global issues should have global dialogues. And I wish that this international conference will come up with new innovative ideas and give a new direction to respect our this indigenous people. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much for your warm words of welcome and providing us with a wonderful foundation for today's deliberation, sir. Thank you so much, sir. And before moving forward, I would like to take a moment and welcome all the dignitaries today present with us. Again, Dr. V.K. Gupta, sir, Mr. Dr. Tarun Hardivan, Mr. Abhishek Ranjan Kumar, Dr. P.L. Chandrakar, Dr. Divya K., Fadila Selsa, Dr. Prince Dan Mebache, Engineer Olorun Toyin, Dr. Rupendra Kavi, Dr. Amit Chandra, Dr. Chandramouli, Dr. Ratan Majumdar, Dr. Deepak, Dr. Sheila Sridhar, then Dr. Nikolta, and last but not the least, our organizer, Dr. Narendranath Guria, sir. Now, moving forward, it is my absolute pleasure and honor to welcome a truly eminent academic leader whose guidance shapes the educational landscape of our region. I would now like to request our esteemed special guest, Dr. Tarun Dhar Diwan, sir, the Honorable Registrar of Shahid Nand Kumar Patel University, Raigad, Chhattisgarh, India, to share his invaluable address with the Assembly. We are deeply honored by your presence, sir. Thank you, Dr. Diwan. It's warm welcome to you. And you see, I must introduce that he is from computer science and he's a wonderful person in handling the data. And recently he has been given a new assignment Yes. as the university of our registrar. And personally, he's so empathetic and so compassionate person. And this, I welcome you, sir, to address us. Thank you. Thank you so much. My voice is audible, sir. Yes, sir, you're clear, sir. Thank you, sir. फर्स्ट ऑफ Welcome, ऑल sir. थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ थैंक्स सर, है ना। मैं आप लोग से ही सीखता रहता हूँ सर कि अच्छे से काम कैसे करना है, चीजों को कैसे हैंडल करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत बहुत लॉट ऑफ विशिंग एंड मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आप लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे पता है कि कोई भी कॉन्फ्रेंस कराना नॉट ए इजी टास्क। आज के डेट में कॉन्फ्रेंस कराना बहुत ही एक बड़ा टास्क है। साथ ही उसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। जितने यूथ हैं, खासकर पामगढ़ एरिया के, जांजगीर चांपा के, रायगढ़ के, शक्ति सारंगगढ़ के, इवन पूरे छत्तीसगढ़ के, और ऐसे सब्जेक्ट को लेकर कराना जो सब्जेक्ट अभी बर्निंग टॉपिक है और पूरा का पूरा प्रदेश उस विषय को लेकर काम कर रहा है। जो ट्राइबल भाई हैं, जो हमारे जनजाति वर्ग के हैं, जो रहते हैं, उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, या चीजों को लेकर हम कैसे कर सकते हैं, या उनके पोटेंशियल को लेकर हम कैसे आगे ला सकते हैं, इन चीजों को लेकर फोकस करना और इन चीजों पे कहीं ना कहीं ऐसा माहौल तैयार करना कि वो बच्चे या उनकी कम्युनिटी या पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ को एजुकेशनल हब और रिसर्च जो उनके हैं, प्योर ट्रेडिशनल जो रिसर्च वर्क हैं, जो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन प्लांट्स हैं, या बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है, या बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो उनके पास है और कहीं ना कहीं वो आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिल पा रहे थे या धूमिल हो जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस रिसर्च के माध्यम से वो हम सभी को मिलेंगे और हम सबको इसका फायदा होगा। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि चैतन्य जो कॉलेज है हमारे शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय का सबसे बेस्ट कॉलेज है, और
हम लोग को तो बड़ा गर्व होता है कि हमारे पास ऐसा महाविद्यालय है। हमें जब रिप्रेजेंट करने की बात आती है, अभी कोई विषय आता है, तो हम जरूर चैतन्य कॉलेज को मेंशन करते हैं। नेट में भी ए ग्रेडिंग मिली हुई है, और साथ में लगातार उनका एफर्ट रहता है। आप देखेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, उनके लैब्स को जाकर देखेंगे। आप चैतन्य महाविद्यालय जाइए, जब भी आप मैं जाने का अवसर लगता है, मैं देखा हूँ कि लैब्स इतने सुंदर बने हुए हैं, क्लासरूम इतने सुंदर हैं, पूरा का पूरा परिसर एक पढ़ने का वातावरण, जो कहते हैं एक आइडियल जो अ, महाविद्यालय होना चाहिए या कॉलेज होना चाहिए, वैसा एक चैतन्य महाविद्यालय डेवलप कर रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में ब्रांड के रूप में भी है, क्योंकि कुछ ही एक महाविद्यालय हैं जो ऑटोनॉमस हैं, और छत्तीसगढ़ उनको ब्रांड मानता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, ऐसा महाविद्यालय हमसे जुड़ा हुआ है, हम उनसे जुड़े हुए हैं। और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश रहती है कि बेस्ट कैसे कर पाएं, विद्यार्थियों को कैसे बेस्ट दे पाएं। जब आज के डेट में एजुकेशन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बच्चों को शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं भटकाव है, और कहीं ना कहीं हम क्या करें इस दिशा में, इन चीजों को है, तो चैतन्य कॉलेज लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना में भी देखता हूँ, उनके यहाँ का आप जाकर देखेंगे, उन्होंने जो तैयार किया हुआ है एनएसएस का पूरा स्ट्रक्चर, जो बच्चे उनका जो हब है वहाँ पे, वो बहुत ही प्यारा और सुंदर सा बना हुआ है। मलखम के लिए बहुत फेमस है पूरे छत्तीसगढ़ में। मलखम की बात हो, कोई बड़े अपॉर्चुनिटीज की बात हो, मलखम में बच्चे अगर राष्ट्र में, भारत में अपने क्षेत्र का खेलों के माध्यम से गौरवान्वित कर रहे हैं, और पूरे छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, तो आप जाकर देखिए चैतन्य महाविद्यालय ने, मैं भी देखा हूँ वहां जाकर, मलखम के माध्यम से ही बच्चे वहाँ बेस्ट काम कर रहे हैं। साथ में लगातार रिसर्च के टॉपिक को लेकर हो, कोर्सेस में कोई नया इनपुट देना हो, या बेहतर करने की बात हो, चैतन्य कॉलेज लगातार काम कर रहा है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कॉन्फ्रेंसेस के लिए, बहुत सारे नवाचार करने के लिए, बहुत सारे शिक्षा के अलग जगाने के लिए। मैं इस महाविद्यालय का पार्ट ही हूँ, और आप लोगों को फिर से पुनः शुभकामनाएं देता हूँ इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए। मैं, मेरा साथ हमेशा जुड़ा हुआ है चैतन्य कॉलेज से, और उसके प्रोग्रेस को मैंने लगातार होते हुए देखा है, और प्राउड जैसा भी हम सभी फील करते हैं, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे महामहिम सर हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, और ये संदेश जाता है उन तक। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ, खासकर डायनेमिक जो प्रिंसिपल सर हैं उनको देता हूँ। उनका व्यवहार इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि जब भी मिलते हैं बड़े हेल्दी रूप से मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और सीखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अगर जो उनको जानकारी है किसी सब्जेक्ट की, उनके कम्युनिकेशन अगर फॉरेन में है और रिसर्च में है, तो उस चीजों को कैसे हम ला सकते हैं। तो मैं वहाँ के प्रोफेसरों को भी, सबको जो जुड़े हुए हैं, सर भी दिख रहे हैं यहाँ से, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आप यूं ही एनर्जी से लेकर लगातार काम करते रहें, हम सभी आपके साथ हैं, प्रदेश में यूं ही नाम गौरवान्वित करते रहें। और मैं इस विषय को लेकर, मैं जरूर कहीं कुछ होगा तो मैं भी जो आगे लाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ये महाविद्यालय अपनी ऊंचाइयों को पहुंचे, और छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत में भी इसका डंका गूंजे और बढ़िया हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं माननीय प्राचार्य महोदय जी को, डायरेक्टर सर को, मैम को, और सभी जो बंधु हैं और रिसर्च स्कॉलर जुड़े हुए हैं, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आपके नवाचार से हम भी प्रभावित होते हैं, हमें भी सीखने को मिलता है, और बेहतर जो आप कर रहे हैं करके, ये महाविद्यालय भगवान भोलेनाथ की कृपा से सावन में ये महाविद्यालय खूब बढ़े, खूब प्रफुल्लित हो, आप सभी सुखी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे जोड़ा और योग्य समझा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार डॉक्टर तरुणधर दीवान जी, आपके इस प्रेरणादायक संबोधन के लिए आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप अपना व्यस्त समय के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए, और हम सब आयोजन समिति की ओर से आपके प्रति आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक थैंक यू यू, सो सो मच। काइंड ऑफ यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए, आपके महत्वपूर्ण शब्दों के लिए। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू मैम, थैंक यू भावना मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। Moving forward, our next speaker brings deep geographic and regional expertise to the table. I now invite Dr. P.L. Chandrakar, Associate Professor of Geography at Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh, India, to share his thought with us. Please welcome, sir. One thing more about
ने एक सप्ताह पहले मुझे कहा कि सर हम इंटरनेशनल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं, इसमें आपको ट्राइब्स के ऊपर बोलना है। तो मैंने उसको ना 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 नहीं कह पाया, और मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम बात करेंगे इस विषय में। और बहुत अच्छा लगा ये आयोजन करने के लिए चैतन्य महाविद्यालय को, जो वर्तमान समय में नेक से ए ग्रेड प्राप्त है, उसको मैं कांग्रेचुलेशन करता हूँ, बधाई धन्य देता सर, हूँ। सर का और पीपीटी। साथ में हाँ, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना सर आप लोगों को? हेलो। सर पावर पॉइंट को शेयर कर Yes, दें। sir. हाँ, और इनके इस महाविद्यालय के डायरेक्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी बात को रखने के लिए अवसर प्रदान किया। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक about tribal development with special reference to Chhattisgarh. Tribal community are an important part of the social and cultural diversity of our country. They have their own unique tradition, custom, language and close relationship with नेचर एंड फॉरेस्ट। जैसा कि कुछ देर पहले डॉक्टर गुप्ता ने इस बात को अपने वक्तव्य में उल्लेखित किया। Tribal development does not mean only economic development. It include education, सर सर healthcare. पावर पॉइंट वहां पे इंटर स्किन कर रहे हैं क्या? नरेंद्र बोल रहा हूँ। Yes, हाँ 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 कर रहा हूँ। नहीं Employment. आ नहीं रहे सर, शायद दोबारा कीजिए ना। धनेश सर पावर पॉइंट को ऑन कर दे क्या सर का, नहीं तो अगर प्रॉब्लम हाँ यहाँ से। आ रहा है ना? धनेश जी काइंडली अपना प्रेजेंटेशन शेयर, ये जो एरो बना है सर वीडियो के बगल में, ये काइंडली धनेश सर शेयर। पीपीटी मैंने आपको दिया था, उनको देखो ना, यहाँ से हो जाए। आ रहा है, अब आ रहा है ना? दिख रहा है? We can see you, your presentation is not visible. आपको शेयर कीजिए, काइंडली शेयर योर स्क्रीन। ये वीडियो कैमरा के पास में एक एरो बना हुआ है, सर हम उसको लोग आप यहाँ से प्रेजेंट कर रहे हैं सर हम लोग यहाँ से प्रेजेंट कर रहे हैं सर। ओके श्रद्धा कहाँ चंद्राकर है? जी, हाँ Yes, sir. ये दिख नहीं रहा है, देखो। धनेश सर पीपीटी ऑन कर दो, अरे सर का इंटर स्किन से। चंद्रा जी, डोंट वरी, वी विल डू इट, वी हैव योर यस यस, प्रेजेंटेशन। ओके ओके। यस नहीं यस, इट इज। हाँ दिख रहा है, वहां से हो रहा है, ठीक है। ओके तो ओके। मैं ट्राइबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल अवेयरनेस एंड इम्पॉर्टेंट इन द equality of quality of life. At the same time, it is important to protect their traditional knowledge, culture, identity, land and natural resource. Chhattisgarh is a home of several tribe community, each having its own unique culture, tradition, language, and lifestyle. The tribal population has a close relationship, forest and natural resource. However, tribal communities face various challenges such as education, employment, displacement, superstition, and others problem. I will briefly discuss their socio-economic condition, major problems and my observation. Next slide. स्लाइड को चेंज करेंगे सर। हाँ, छत्तीसगढ़ में जहां तक बात है, छत्तीसगढ़ ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड 42 शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप according to 2011 census. They are 30.6% of the state total population. Gond, Oraon, Kanwar, Halba, Bijwar, these are major tribal groups, and Pahadi Korwa, Baiga, Kamar, Abuj Madia, Birhor,
पर्टिकुलरली वुलरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीबीटीजी। इनके लिए इस तरह से छत्तीसगढ़ में 2 तरह के ट्राइबल ग्रुप्स निवास करते हैं और इनकी डेंसिटी जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो साउथ में जो बस्तर कहलाता है वहां पर बहुत सबसे ज्यादा इनकी जनसंख्या पाई जाती है। सुकमा सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है। और इसके अलावा नॉर्थ में जो कोरिया और सूरजपुर, अंबिकापुर और बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ और कोरबा ट्राइबल के लिए बहुत ही जिला है, प्रसिद्ध जिला है। और यहाँ पर ही 42 समूह के जनजातियां पाई जाती है, जिसको हम लोग इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि 2011 के सेंसस के अनुसार जो 42 समूह हैं उनकी जनसंख्या को इस टेबल चार्ट में दिखाया गया है। और अपन देखें कि 70% से अधिक जनसंख्या सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव में मिलता है। 50 से 70% जनसंख्या बालोद, रायगढ़, गरियाबंद, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर में मिलता है। और 30 से 50% बालोद, रायगढ़, गरियाबंद, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर। और निम्न जनसंख्या वाले जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उसमें बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायपुर, राजनांदगांव और महासमुंद है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति वे है जो संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित है भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा। अत्यंत गर्व की बात है कि इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति भी जनजाति वर्ग से है और हमारे प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया भी हैं वो जनजाति वर्ग के हैं। और नो डाउट जो हम लोग आज 80 वर्ष हो गए हमको आज़ाद हुए, और इस 80 वर्ष में हम देखें छत्तीसगढ़ की जो जनजातियों के विकास को, विकास यात्रा को, तो बहुत अधिक विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन ने 2004 में आदिवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण का गठन किया। इसके अलावा सन 2003 में पंडो एवं भुंजिया जो राष्ट्रपति की अनुसूची में नहीं है, परंतु छत्तीसगढ़ शासन ने उसे पहाड़ी कोरबा और बिरहोर की तरह ही विशेष पिछड़ी जनजाति की सूची में रखा है और इनका स्पेशल विकास शासन कर रही है। सन 2023 में भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनाया गया, जिसको आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और इसी वर्ष जो विशेष पिछड़ी जनजाति जिसको PVTGS कहा जाता है, उनके विकास के लिए PMPVTG विकास मिशन की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति जो समूह है जैसे जसपुर और अंबिकापुर, बलरामपुर में पहाड़ी कोरबा और बिरहोर निवास करते हैं। इधर बिलासपुर और जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में बैगा जनजाति और विशेष रूप से कंवरधा, कबीरधाम जिला में निवास करते हैं। गरियाबंद और धमतरी और थोड़ा बहुत महासमुंद में कमार जनजाति के लोग निवास करते हैं। और इधर साउथ में अपन चले जाएं तो अबूझ माड़िया, जिसको नारायणपुर अबूझ माड़ क्षेत्र में निवास करते हैं, इनके विकास में गति आई है। और एक तरह से अपन देखें तो रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत बड़ा शासन के प्रयास से बदलाव आया है। जो आज से 4 दशक पहले रूरल पॉपुलेशन इनका 2 से 3%, अर्बन पॉपुलेशन 2 से 3% होता था, आज 10 से 15% बढ़ा है। ये निश्चित तौर पर शासन की विकास योजनाओं का ही परिणाम है। हम छत्तीसगढ़ का ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखें तो आज सभी ट्राइबल एरिया में जो हाईवे और रेल लाइन का विस्तार हुआ है और इस तरह से, और इससे निश्चित तौर पर विकास चारों तरफ दिख रहा है। और जैसे हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति है उनमें आज भी कृषि में पूर्व प्रौद्योगिकी का चलन दिखता है। उनका साक्षरता दर काफी निम्न है, 40% से भी कम है। और जबकि हमारा स्टेट का
एवरेज है 70%, और ट्राइबल जो पीपुल है उनका स्टेट एवरेज है 60%, और जो स्पेशल ट्राइबल ग्रुप्स है उनका एवरेज है 40%। एक तरह से बहुत अंतर है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम इस विषय में, मैं जो आप छत्तीसगढ़ के ट्राइबल पीपुल पर जो काम किया हूँ, स्पेशली जो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं डैम के रिजर्वायर के माध्यम से, उस पर मेरा काम है। इसके अलावा मेरे 2-4 विद्यार्थी इस पर रिसर्च का काम किए हैं, और उसमें जो हमको ये सारे विकास के बावजूद आज भी जो मेजर प्रॉब्लम इनके बीच में, आज चूंकि इंटरनेशनल ट्राइबल डे है, और बहुत अच्छे अवसर पर ऑनलाइन पोर्टल पर हमारे चैतन्य महाविद्यालय पामगढ़ इस विशेष आयोजन को ट्राइबल के विकास के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कर रही है, तो वहाँ प्रस्तुत करना मैं आवश्यक समझता हूँ, और मुझे कहा भी गया है ट्राइबल पर बोलने के लिए। तो एक चीज हमको सर्वे के दौरान दिखा हमारे ऑब्जर्वेशन में, कि कास्ट सर्टिफिकेट इशू है इनके पास आज भी 80 साल के आज़ादी के बाद। और कास्ट सर्टिफिकेट इशू 3 प्रकार से है। एक तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत समय लगता है, एक प्रॉब्लम। दूसरी समस्या ये है कि जो गैर आदिवासी है वो भी कास्ट सर्विस सर्टिफिकेट बनवा करके सर्विस और अन्य लाभ ले रहे हैं। अभी हाल पर ही 4 दिन पहले दैनिक भास्कर अखबार में उनकी जानकारी आई थी कि गरियाबंद जिले में 150 लोग डुप्लीकेट कास्ट सर्टिफिकेट बना करके ट्राइबल के नाम पर उसके रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए नौकरी प्राप्त किए हुए हैं, जिनको सरकार उसके लिए उन पर कार्रवाई कर रही है। ये एक चुनौती है। ऐसे ही विशेष तौर पर जो हमारे ट्राइब्स है, विशेष पिछड़ी जनजातियां, जिसमें पहाड़ी कोरवा, बैगा और कमार, बिरहोर और आपके अबुझमाड़ियां हैं, पीवीटीजी, इनके यहाँ ऐसा देखने के लिए रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के दौरान मिलता है कि इनके पास कोई कागजी रिकॉर्ड नहीं है, और रिकॉर्ड नहीं होने के कारण से आज के इस जटिल प्रशासनिक व्यवस्था में वो उनके कई फैमिलीज हैं, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स लोगों के पास है, जिसका सॉल्यूशन हम सबको मिल करके ढूंढना चाहिए। दूसरी बात फैमिली प्लानिंग इशू है, और सन 1977 में हमारे देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए फैमिली प्लानिंग लागू किया गया। आगे बढ़ाएंगे, स्लाइड बढ़ाते जाएं आगे प्लीज। और आगे करिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और नेक्स्ट, और आगे, नेक्स्ट। हाँ, इसी में रखिए। हाँ, बस यहीं रोक दें सर, पीछे, आगे, नेक्स्ट। हाँ, तो फैमिली प्लानिंग में का बड़ा एक प्रभाव पड़ा, जो 1950 से लेकर 1980 में भारत की जनसंख्या 3 गुनी बढ़ गई थी उसको कंट्रोल करने में। और हुआ क्या कि 2081 के सेंसस में पाया गया कि जो छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं 5, उनकी जनसंख्या घट गई थी 71 से 81 के बीच में। तो इनका फैमिली प्लानिंग प्रतिबंधित किया गया, और आज 80 से 81 से अपन 2000 और 2000 से आज 2026 में आज भी इनका फैमिली प्लानिंग प्रतिबंधित है। तो इस प्रतिबंध को हमने ऑब्जर्वेशन किया कि इनकी जनसंख्या अब 30 से 35% पर दशक बढ़ रही है, इसको हटाया जाना चाहिए। एक स्लाइड आगे करेंगे सर। ये आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे, जो फर्स्ट पिक्चर है, मैं जसपुर के चांदा पाट गया था, ये मनोरा ब्लॉक में है। तो वहाँ मैं एक पहाड़ी कोरवा परिवार से मिला, मंगलू नाम के।
उनके 2 बच्चे थे और उन 2 बच्चों की बेटों की शादी हो गई थी और उनके 37 बच्चे। मैं देख करके आश्चर्यचकित हो गया और ये पिक्चर के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे उनकी वाइफ्स हैं ये और बच्चे रखे हुए हैं, ये दिख रहा है। 37 बच्चे हैं, तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्यों भाई इतना अधिक बच्चे आपने पैदा कर लिया, आपको तो बहुत अधिक परेशानी होती होगी पालन पोषण करने में, आपने परिवार नियोजन क्यों नहीं कराया? तो उन्होंने बताया कि सरकार, हमारा डॉक्टर साहब लोग, हम जाते हैं अस्पताल में तो परिवार नियोजन नहीं करते और इसके कारण से हम लोगों का परिवार नियोजन नहीं हो पाता है। तो ये एक बड़ा, मैं इस तरह के कई और एग्जाम्पल हैं जो अपन छत्तीसगढ़ में हमारे पास है कि जनसंख्या में जो विशेष ट्राइबल ग्रुप हैं, पीवी तेजी की बढ़ रही है। अब जो परिवार नियोजन का प्रतिबंध है, उसको हटाया जाना चाहिए। ये एक चैलेंज अपने पास है। आज जब वर्ल्ड ट्राइबल डे मना रहे हैं, तो मैं आपके इंटरनेशनल सेमिनार के माध्यम से इस बात को रखना चाहूँगा। तीसरी समस्या कि जितने भी छत्तीसगढ़ में बड़े-बड़े बाँध और छोटे-छोटे बाँध बनाए गए हैं, वो सब ट्राइबल एरिया में बनाए गए हैं। मैं कुछ बाँधों का यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगा और स्पेशली बांगो डैम पर मेरा 2 रिसर्च स्कॉलर ने पीएचडी किया है और मैंने खुद यूजीसी का माइनर प्रोजेक्ट पर काम किया है। लगभग 10-12 साल हम लोग काम किए। बांगो के अलावा गंगरेल है और सीकासार है और भी बहुत सारे डैम हैं। इसमें स्पेशली मैंने देखा कि 59 गांव उससे डिस्प्लेस हुए और उस समय की बात है 95 की। तब तक की रिहेबिलिटेशन लॉ नहीं बन पाया था, कानून। रिहेबिलिटेशन कानून इंडिया में 2013 में बना है। उसके पहले ही गवर्नमेंट के जो ऑर्डिनेंस थे, उसके आधार पर उनका रिहेबिलिटेशन किया जाता था। वहाँ पर मैंने देखा कि जो इनका पुनर्वास किया गया है 59 गांव के लोगों का बांगो जलाशय के आसपास, उसमें भूगोल विषय की उपेक्षा की गई। अब भूगोल विषय की उपेक्षा सारे इंजीनियर ही बनाए उस डैम को कि पहले वो लैंड इकोसिस्टम था वहाँ और जब जलाशय बना तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में कन्वर्ट हुआ वो। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम से जो वहाँ का ज्योग्राफी डेवलप हुआ और एक्वाटिक इको सिस्टम के कारण जो जलाशय बना, लगभग 212 स्क्वायर किलोमीटर में वो जलाशय फैला हुआ है। उसके चारों ओर 59 गांव के विस्थापितों को बसा दिया गया और उस हमारे अध्ययन के अनुसार 77% लोग वहां नहीं रहते आज। वो लोग, चूंकि उनको जमीन नहीं दिया गया और उनकी बेसिक जो हैबिट है उसके अनुरूप उसको सेटलमेंट नहीं मिला, इसलिए फिर से वो विस्थापित होकर जंगल की तरफ गए और जंगल को काटे। इसके अलावा उनके बहुत से ऐसे 10-15 गांव हैं जो अपने ब्लॉक खंड, विकास खंड मुख्यालय, अस्पताल और एजुकेशन सेंटर पहुंचने के लिए प्रतिदिन जल मार्ग से आवागमन करते हैं। तो रही बात व्यक्ति की, तो वो दिन में तो आवागमन कर लेते हैं, लेकिन रात में उनको बहुत अधिक परेशानी होती है। कई बार ऐसा मौका व्यक्ति के जीवन में आता है कि बीमार पड़ जाते हैं। गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराना होता है, बच्चे बीमार। यदि वो सड़क मार्ग से अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या डेवलपमेंट ब्लॉक हेडक्वार्टर पहुंचना चाहें तो 150 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और यदि वो जल मार्ग से जाते हैं तो वो लगभग 30-40 किलोमीटर पड़ता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज और इशू है कि एक डिस्प्लेसमेंट के कारण से उनका जो आवागमन का एक चैलेंज है आने जाने का, उसको
हल किया जाना चाहिए। और इसमें छोटी मोटी जनसंख्या, ऐसा गंगरेल में भी देखने के लिए मिला है, ऐसा सीकासार में भी देखने के लिए मिला है, और भी डैम में इस तरह के गांव जो हैं 3-4 तरफ से जल से घिरे हुए हैं, उन लोगों का डेथ रेट काफी अधिक है और यस सर, एजुकेशन का लेवल बहुत बिलो है, डेवलपमेंट भी। इसके अलावा जो एमएसपी सरकार का है उसका वो फायदा उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जहां पर रिहेबिलिटेट किया गया है वहां पर उनके पास रिकॉर्डेड जमीन नहीं है। और एमएसपी का फायदा, धान जो आज 3100 रुपया कुंटल में सरकार खरीदती है, वो बेच नहीं पा रहे हैं। फिर जल मार्ग होने के कारण भारी वस्तुओं को वो नाव से इधर से उधर, जहां पर उनका कोऑपरेटिव सेक्टर सेंटर है, वहां नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये बड़ी उनके उसमें दिक्कत आती है। ये एक बड़ा चैलेंज है। उसको निवेदन है इस सेमिनार, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि इस समस्या का हल किया जाए। अभी हाल पर ही मैंने एक रिसर्च पेपर के माध्यम से, जो बगबुड़ा इलाका है, आप लोग शायद गए होंगे, गोल्डन आइलैंड, बुका, हाँ, वहां पर 15-20 गांव का मैंने सर्वे किया। वो गांव के लोग बहुत परेशान हैं आवागमन को लेकर के। इसी तरह से एक हमारे ऑब्जर्वेशन में न्यूक्लियर फैमिली इशू है, और खास करके संयुक्त परिवार को बढ़िया परिवार भारतीय ट्रेडिशन में, धर्म में और पुराणों में कहा जाता है। वर्तमान समय में भी इसकी काफी चिंतन किया जा रहा है कि संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। ये नहीं टूटना चाहिए, जुड़ के रहना चाहिए। इसमें दादा, पिता, माता और पोता, नाती सब एक साथ रहते हैं। एक्सपीरियंस और कई तरह के जो समरसता है, खुशी है, इसका सब लाभ प्राप्त होता है। लेकिन ये जितने भी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, पीबीटीजी, इनमें न्यूक्लियर फैमिली का चलन है। इनके यहाँ जब भी लड़का 18 साल, 16 साल, 20 साल का होता है, उसकी शादी हो जाती है, और शादी होने के तत्काल बाद वो अपने पिता से अलग घर बना करके रहने लगता है। मैंने एक अनुमान लगाया है कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी पिछड़ी जनजातियां हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां, लगभग 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, और छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार 7 है। अगर इनके यहाँ 500 नौजवानों की शादी होती होगी, तो जैसे ही ये नौजवान शादी होती है, अपने पिता के घर को छोड़ करके जंगल को काटते हैं और वहाँ अपना नया अधिवास बनाते हैं, घर, और इसके अलावा अपने लिए बारी और छोटा सा खेत बनाते हैं। तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि इस न्यूक्लियर फैमिली ट्रेडिशन या उनके सिस्टम के कारण से प्रतिवर्ष 500 एकड़ जंगल कट जाता है। इस पर चिंतन और रिसर्च होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये एक इशू है। हम लगभग 500 एकड़ जंगल आज नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि जुलाई का जो महीना है, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के वृक्षारोपण का अभियान, एनएसएस में मैं रहा हूँ, एनएसएस के माध्यम से और सरकारी योजनाओं के माध्यम से सघन रूप से चलता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हर साल हम छत्तीसगढ़ में 500 एकड़ जंगल बढ़ा लेते होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये अज्ञानता के कारण से कहें या शिक्षा के कारण से कहें कि लगभग 500 एकड़ जंगल उस न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के कारण से छत्तीसगढ़ का कट जाता है। अल्कोहलिज्म एक इशू है छत्तीसगढ़ में। अब ये इशू बहुत बड़ा गंभीर इशू है। ट्राइबल एरिया में देखने के लिए, उत्तर में हांडिया पीने के लिए मिलता है। हमारा पिक्चर दिखाएंगे सर, पहला नंबर का पिक्चर, फर्स्ट प्लीज पिक्चर, कंक्लूड करेंगे सर, बहुत सारे स्पीकर हैं सर। फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट स्लाइड दिखाइए ना पिक्चर का। ये देख रहे होंगे हांडी, इसमें बूढ़ी माता, ये बूढ़ी माता हांडिया पी रही हैं। और ये दूसरे नीचे से दूसरा बाएं साइड में जो पिक्चर है, इसमें शादी से लौट रही है पहाड़ी कोरवा महिलाएं। उनके यहाँ शादी में लौटने पर हांडिया भेंट किया जाता है, और हमारे प्लेन एरिया में कपड़ा और मिठाई और लड्डू भेंट किया जाता है। ठीक है, मैंने ये हांडिया लेकर के शादी से लौट रही हैं। हांडिया एक प्रकार का शराब है,
और ये देख रहे होंगे फर्स्ट पिक्चर मैं एक पहाड़ी कोरवा परिवार में बच्चा पैदा हुआ था और उसका छठी मना रहे थे, छठवां दिन का कार्यक्रम। उसमें आसपास के लोग हाड़ियां लेकर के आए थे। दूसरे तरफ हम बस्तर में जाएं तो सल्फी का चलन है। और ये देखिए उनका ट्रेडिशन तो है, आदिकाल से वो लोग मद्यपान करते आ रहे हैं, उनकी परंपरा में है, उनकी सोसाइटी में है। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, पहले वो लोग पैदल चलते थे शराब पी करके, आज उनके पास मोबाइल हो गया है, मोटरसाइकिल हो गया है, साइकिल और ट्रैक्टर हो गया है। और जब शराब पी के मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर चलाते हैं तो शराब की नशे में गाड़ी तो जाके पेड़ों में या गड्ढों में टकरा जाती है और उसमें एक्सीडेंट से बहुत सारे मौत होती है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। हाँ गुड़िया जी कुछ कह रहे थे। सर सर थोड़ा जल्दी कंक्लूड करेंगे सर, हाँ बहुत ही ओके अच्छा ओके रहा ओके है ओके। हमारे स्पीकर। हाँ 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 ठीक है। इसके अलावा सेटलमेंट इशू है कि वो बहुत बड़ा इशू है कि इनकी जो बसाहट है वो बिखरी हुई अवस्था में मिलती है। और बिखरी हुई अवस्था में मिलने के कारण से आपको पता होगा, अभी 2 दिन पहले अखबार में आया था कि बस्तर के 90 गांव हैं जहां आज तक के झंडा नहीं फहराया गया है। सरकार ने उसको आइडेंटिफाई किया है। और सेटलमेंट के कारण से जो 112 और 108 गाड़ी चलती है सरकार की स्वास्थ्य योजना के लिए, वो गाड़ी आज उनके घरों तक नहीं पहुंच पाती है और उसका फायदा नहीं। ये उनका ही प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की समस्या नहीं है। उनके जो ज्योग्राफी है वहाँ की, उसके अनुरूप जो सुविधा को देख करके वो बसे हुए। तो ये सारी बातें हैं। मेरे को डॉक्टर गुड़िया ने कहा है, मुझे मौका दिया, पामगढ़ कॉलेज ने ऑर्गेनाइजर लोग मुझे बोलने का अवसर दिए, मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, नमस्कार आप सभी। डॉक्टर चंद्राकर बहुत धन्यवाद इस सुंदर प्रस्तुति के लिए, बहुत सराहनीय काम। और बहुत सारी कहानियां जो हम सब नहीं जानते हैं, काइंडली गिव इट ए शेप इन द फॉर्म ऑफ ए बुक सो दैट इट कैन बी डॉक्यूमेंटेड। और आपके जो भी रिसर्च, जो आपके शोध से जो भी आपके रिकमेंडेशन है, वो कृपया हमको आप प्रेषित करें ताकि हमारी समिति जो है उसको इंक्लूड कर सके। बहुत दिस इज धन्यवाद। माई दिस इज माई बुक सर। ट्राइबल पर एक बुक भी मेरी अभी 2 साल पहले मैंने प्रकाशित कराया था, स्पेशल ट्राइब्स पर, और इस काफी मैं पॉपुलर बोलना बुक है। चाहूंगा थैंक सर यू, ने लगभग नमस्कार। 12 बुक लिख चुके हैं। सर, आई Thank you, sir. Dr. Chandrakar ji, I invite you to be in the recommendation committee to suggest certain recommendations. So please थैंक यू सर, do. मैं बिल्कुल आऊंगा। अब आप 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 बिल्कुल आप आप विशेष। भेज दीजिएगा। यू कैन शेयर विद डॉक्टर गुड़िया ओके जी। ओके ओके। स्पेशली थैंक यू मैं देना चाहूंगा हाँ आदरणीय गुप्ता सर को और हाँ हाँ डॉक्टर हाँ, गुड़िया को, ओलवन जो मेरे टोयू प्रिय सर विद्यार्थी हाँ। रहे हैं, मंच दिए मुझे। थैंक यू, रेडी। नमस्कार सर। इससे पहले थैंक यू। फरीला चलशा। कंटिन्यू कीजिए रत्नाकर मैडम, कंटिन्यू प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए, और बहुत सारी आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी। बहुत बहुत थैंक यू सर। अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड, this conference truly bridges international borders. Our next speaker joined us all the way from Indonesia. Let us welcome Fadila Selsa, founder of World Voice Indonesia and an esteemed member of Social Science and Management Welfare Association. The platform is all yours, sir. Please, sir, welcome. डॉक्टर दिव्या सर, या दिव्या सर को, डॉक्टर दिव्या या प्रिंस देन मेरेची, एनीवन प्रेजेंट? रत्नाकर सर नेक्स्ट नाम लेते जाएंगे। आई एम रेडी सिटी। ओके ओके ओके। रत्नाकर सर, Okay, sir. सिटी सर रेडी, इनवाइट। Sorry, sir. I didn't get it, sir. Okay. At present, ready, welcome Alruntio Sefiu Tayo from Nigeria. It's a great pleasure, our special guest
from Nigeria, also International Social Science and Management Welfare Association. I would like to invite Auden to Yosef Yutayo. Over to you, sir. Uh, Good day, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Can I share my PPT, my PowerPoint? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just give me a few minutes so that I can share my PPT. Uh, Good day, good morning, good afternoon, everyone. My name is Engineer Sheffield Taiwo Olontoyin from Nigeria. I'm here to present my topic on this noble conference, digital financial inclusion and fintech solutions for tribal entrepreneurship. So let me proceed from the introductions of my presentation. The digital financial inclusions. I'm coming. I'm trying to open my PPT and it's not. Okay, it's coming up. Okay, I don't know what happened. Okay. Thank you. So, introduction. Let me start the introduction aspects. With financial inclusions, digital financial inclusions refers to the uses of digital technologies to provide avoidable. Is my PPT visible? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Very nice. Can I see Yes. it? Okay. Okay. Oh, sorry. This is not the topic I want to present. This is not the topic. Let me close it. This is not the topic. The financial inclusion refers to the uses of digital technologies to provide avoidable, secure, accessible financial services. Accessible financial services to underserved population. Underserved population. Fintech, one by fintech, financial technology. Fintech, financial technology. These fintech apply innovative technology such as AI, blockchain, cloud computing, big data, and mobile platform to improve financial services. Cyber entrepreneurs often face barriers include Sir, sorry to interrupt, but sir, the presentation is not visible in your screen, sir. I'm trying to do my financial. I'm trying Yes, sir. to Okay, sir. my this up and then so that I'm coming. So the mobile platform to improve financial services, a tribal. I'm coming. Let me try to open the PPT so that we're able to see my presentation. So common barrier including limited banking access. Limited banking access. I'm coming. Okay. Limited banking access. Is it visible? Is it visible? No, sir. Actually, Kindly the slide is landslide. slightly just Same. inclined to the side of the screen, sir. It is not visible in the center of the screen, sir. Okay. Let me. Is it Okay. visible like Yes, sir. this? Yes, sir. It is visible right now. Perfect. Yes, sir. Okay. So the financial let me try to recap of what I've said earlier on. So when we are talking about a digital financial inclusions and fintech, when by fintech, financial technology solution for tribal entrepreneurship. So digital financial inclusion refers to the uses of digital technologies
to provide affordable, secure, and accessible financial services to underserved population. So when you are talking about the financial technology, which is fintech, is applied to innovative, applies innovative technology such as artificial intelligence, which is AI, blockchain technology, cloud computing, big data technology, and then mobile platform to improve financial services. Tribal entrepreneurs often face barriers include limited banking access, poor infrastructures, and low digital literacy. So, what are the objectives of this thing? Explain digital financial inclusion. Discuss. I'm going to discuss financial tech and what are the challenges. I'm going to identify what are the challenges, what are the exploit solutions, that is possible solution, and recommend the policy. So, let me proceed for my presentation. So, uh, the objective. What are the objectives? So the objective, trying to explain, I will explain the digital financials inclusion. I'm going to define the fintech innovation. I'm going to identify what are the challenges facing tribal entrepreneur. So I'm going to list what are the fintech solutions, provide recommendation for it. So let me start from the financial digital financial inclusions. So when you are talking about digital financial inclusion, include mobile banking. We are all using mobile banking, digital payments, mobile money, digital savings, digital lending, which is if you want to lend money, digital insurance, and the agent banking. So all these are the benefits include poverty. You reduce the poverty reduction. It's reduce poverty reduction, entrepreneurship. It's in what's it called? Provide entrepreneurship for graduate, employment opportunity for graduate is also help to economic growth. So let me start from fintech and technology. Fintech, financial technology. So artificial intelligence, blockchain technology, mobile money, cloud computing, big data analytics, and the digital wallet, QR code, QR payment, QR payment. So what are the challenges? What are the challenges? What are the challenges that are associated with all this? Limited financial, limited finance, poor internet. Poor internet is one of it. Low digital literacy, inadequate infrastructures, cybersecurity risk, regulatory barriers, and trust issues. These are the challenges that are associated with fintech technology. So let's look at the solution. What are the solutions? Since you have the challenges, you must have the solutions to it. So a mobile banking, digital payment, digital microfinance, crowdfunding, AI-based credit scoring, blockchain for transparency, and digital identity system. So these are the possible solutions to the challenges. So let's look at what are the benefits. What are the benefits of fintech? One, improve financial access. It's improve financial access, business growth, make our business to growth, woman empowerment, job creation, increase productivities, better savings, and sustainable development. Sustainable development. So let's proceed. Let me proceed to other aspects of what are the recommendations. What are the recommendations? So it expand connectivities. This fintech is expand connectivities. It improve digital literacy and strengthen cybersecurity. It strengthen the cybersecurity. Developed inclusive policy. Develop inclusive policy. Encourage public and private partnerships. It encourage public and private partnership, and also provide a tailored financial productivities products. So in conclusion, when you are talking about digital financial inclusion, and fintech transform transform tribal entrepreneurship by improving access to finance,
supporting innovation, and fostering inclusive economic development. So thank you and God bless you for this wonderful conference. These are the end of my presentation. Thank you. If there's any question, observation, you let me know. Thank you and God bless you. Thank you, sir. Thank for the opportunity giving me to present this presentation, this August conference. Thank you and God bless you, sir. I'm grateful. Thank you so much, Engineer Tayo, for sharing your unique perspective on technical education and sustainable growth framework. So now proceeding towards, I would like to request Narendranath Bhuria sir to please say the vote We of are thanks. very happy. We are very happy today. Our special guest, Dr. Rupendra Kari, Honorable Deputy Secretary to the Governor Chhattisgarh, India, also advisory board member, International Social Science and Management Welfare Association. We are very lucky today. Our special guest, Dr. Rupendra Kari sir. Over to you, sir. Sir, microphone on कर देंगे. Mic. Okay, sir. Okay. Audible. Thank you, respected chairperson, distinguished scholars, visitors, academicians, and all respected participants. It is a great privilege and pleasure for me to present my anthropological reflection on the important theme. So, as a keynote lecture, I am presenting cultural resilience of Chhattisgarh, an anthropological perspective on indigenous heritage, knowledge system, and social transformation. This topic is not merely about the preservation of culture, rather, it is an attempt to understand how indigenous communities maintain their identity, knowledge system, and social values while adapting themselves to a rapidly changing world. Anthropological lectures as the culture is never static. Every change with time. How do Sir, mic off हो गया. Sir, please unmute. unfortunately Continue, sir. okay. Audible now? Yes, sir. Audible Yes, now? sir. Yes, sir. Yes, sir. Continue. Sir. How do indigenous communities present their cultural identity, collective knowledge, and social identity while expressing process of transformation? These questions form the foundation of the concept of cultural resilience. Concept of cultural resilience. Cultural resilience refer to the capacity of a community to maintain its fundamental identity, social institutions, and knowledge traditions while adopting the changing social, economic, and political circumstances. It is important to understand that cultural resilience does not mean isolation from modernity. Rather, it represents the ability of communities to engage with education, technology,
democratic institutions, and new economic opportunities too, while maintaining meaningful connections with their cultural roots. The indigenous communities of Chhattisgarh, particularly Bastar region, provide an important example of this process. Now, Bastar, a cultural and anthropological landscape. Bastar is not merely a geographical region, it is a living cultural landscape shaped by its people, forests, rivers, biodiversity, and social institutions. Communities such as Gund, Muria, Madia, Dhurva, Halwa, Bhatra, Parja, and many more other have developed distinctive cultural tradition over generations. For the communities, forests are not simply economic resources. Forests are an integral part of their life, culture, belief system, belief systems, and livelihood and collective memories. Their tradition, ecological knowledge developed through generation of expressions has become highly relevant in contemporary discussion on sustainable development and environment conservation. Now, indigenous knowledge system and intellectual heritage. One of the central arguments of the research paper is that indigenous knowledge should not be viewed merely as a tradition, but as an important intellectual heritage of humanity. Often, the indigenous communities are understood only them of poverty, backwardness, and developmental challenges. Such a perspective overlook their knowledge, creativity, and contribution to societies. Indigenous knowledge system includes knowledge of medical plants, agriculture practices, forest management system, biodiversity conservation, oral literatures, arts and crafts, and social ethical frameworks. This knowledge is not confidence to written documents. It is transmitted through everyday practices, family systems, elder festivals, and collective experience from one generation to another. Therefore, protecting indigenous culture is not merely about preventing its past, it is about safeguarding valuable knowledge resources for their present and future. Now, tribal development beyond economic indicators. An anthropological perspective suggests the tribal development cannot be understood only through economic development. True development must include cultural respect, social participation, protection of identity, ecological balance, community rights, and a dignified life. Development process that exclude community participation cannot achieve sustainable outcomes. Therefore, indigenous communities should not be viewed merely as beneficiaries of development programs. They should be recognized as active participants and knowledge partners in the development process.
Now, indigenous governance and community participation. Traditional tribal institutions provide important examples of participatory governance, collective decision making, mutual cooperation, social responsibility, and community consensus have historically been important features of indigenous social system. Modern democratic governance can become stronger when it respectfully incorporates this local experience and knowledge system. The objective should not be to replace traditional institutions, but to establish meaningful dialogues between constitutional governance and indigenous social practices. Now I'm talking about social transformation in Bastar. Today, tribal communities of Bastar are experiencing significant social transformation due to education, technology, communication, employment opportunities, markets, and democratic participation. However, transformation not allows the interpreted and cultural decline. The strength of culture lies in its ability to adopt. Uh, tribal youth tribal youth pursuing their higher education using digital technology or adopting new livelihood opportunities does not necessarily lose cultural identity. Rather, it may represent an exemption of cultural capability and social participation. True cultural realism lies in the ability of communities of accept change while maintaining their identity and values. Now, policy recommendations. Based on anthropological understanding, the following policy suggestions may be considered. First, indigenous knowledge systems should be documented through particularly approaches involving local communities. Second, tribal development planning should ensure active participation of local communities from planning to implementation. Third, educational system in tribal region should provide appropriate space for local languages, histories, and cultural knowledge. Fourth, livelihood programs should create a balance between traditional skill and modern opportunities. Fifth and last, indigenous communities should remain at the center of cultural heritage preservation. Now, conclusion. In conclusion, the cultural resilience of Chhattisgarh provides an important message that culture is not an obstacle to development, rather, it can become the foundation of sustainable and inclusive development. The indigenous communities of Bastar and overall Chhattisgarh teach us that their knowledge provides pathway for ecological balance. Their social institutions demonstrate collective responsibility, and their cultural traditions provide identity and continuity in the rapidly changing world today. There is a need to understand development not merely as a process of transformation, but as a process of
partners. A development approach that respect indigenous culture, knowledge system, and dignity. Because cultural resilience is not only about preserving traditions, it is represented the capacity of communities of creativity, adapt, transformation, and contribute meaningfully to human civilization in changing things. Thank you. Thank you, sir, for your valuable talk. Today, special World Tribal Day 2026. And a warm welcome and respectful greetings to everyone on this occasion. So especially thanks to you. This conference is not merely an academic gathering, it is an opportunity to listen, understand, and discuss the rethink the future tribal communities through the perspectives of development, dignity, and culture, knowledge, and sustainability. A very nice talk. We are very appreciative, sir. And next, Thank you. Dr. Guriel, sir. Dr. Guriel, just let me have a word with Dr. Rupenji. Dr. Rupen, thank you very much for your blessings and the good wishes for the conference. And you have given a very beautiful input for the conference, and very grassroots level thoughts are there. And we request you to please be a part of our recommendation committee so that we can. Thank you. My pleasure. This was all my root level fieldwork based paper, and I am happy and glad to present with you all. So obviously, I will be part. Okay, okay. Thank you very much. So please send a brief abstract of it, and Please continue. Thank you. and before sending the recommendation, finally we will again request you to review it, please. Yeah, So, sure. so thank you very much. So kind of you for joining us, and blessings. My Please pleasure. do come to our institution sometimes whenever possible. My Namaste. pleasure. Jai Thank Hind. you. Thank you, Principal Sir. Dr. Divya K, Assistant Professor, Tribal Study, Central Tribal University of Andhra Pradesh, India, Vice President, also International Social Science and Management Welfare Association. Are you present, ma'am? Yes, yes, sir. Yes, sir. Very good morning. We are Namaste. very lucky. We are very lucky, and today's honoring indigenous midwives, the certificate in life and well-being. And this Yes, theme sir. remind us they are tribal people, and also not only the process knowledge system that have been developed and preserved across generation. And their work connect health and family, community, culture, and spirituality, there the environment. And ladies and gentlemen, we are happy to say you today's international conference on tribal development and challenges, opportunity, and sustainable development. Today, our special guest, Dr. Divya K, Assistant Professor, Tribal Studies, Central Tribal University, Andhra Pradesh. Also, there are the Vice President. She is at present now, till now, Vice President of International Social Science and Management Welfare Association. I would like to invite ma'am. Over to you, ma'am. Yeah, thank you so much, sir. It is indeed a proud to be connect with you all because I can feel that from the initial stages of this association is totally dedicated and passionate members are there, highly committed to contribute and to document the tribal knowledge. Being an academicians, I'm sharing my thoughts and reflections from tribal studies point of view, the sustainable educational aspect, and how the social science academia can maintain and sustain and strengthen the tribal education, and how does it can be incorporated with the other social science subject. From my point of view, the core argument is that the subject related to tribe, it should not be restricted within anthropology or within tribal studies. Rather, it should be core aspect. It should be connected with the other social science subject, including management.
So when we look into the diversity of tribes in Indian context, as everybody knows that more than 705 diverse tribal communities are there, as well as the diversity in their culture. How does this kind of tribal values and philosophy can be incorporated with the educational institutions' vision and mission? Uh, when we look into the vision and mission and the core objectives of many of the institutions, it may be roughly mentioned about some basic common kind of aspect. But this in tribal values and philosophy can be incorporated with the institutional ethnic practices, and where we can incorporate many tribal values and many tribal cultures. For example, if we take upon how many schools and education institutions are promoting, encouraging, remembering, and observing the World Indigenous Day or a National Pride Day. So this kind of days are remarkable, but we need to count and make an accountability. How many institutions are able to remember it and remark it and document it? So as an institution, I am also part of this association. We would conduct a kind of academic survey. How many institutions are promoting this kind of educational activities? Why? Because students are major power group in India. Many of you might have been recognized this aspect, the power group I am mentioning, looking into the different kind of situations has been everybody has been undergone. So how does the new generations are remembering and having a concern towards tribal development, tribal education, tribal health, tribal women's empowerment? So how does the new academia NEP 2020 kind of aspects are focusing about the tribal students enrollment? How much we are worried about the dropout rate of tribes in different areas. So these aspects required more and more kind of concerns. And coming to the social science and academia, many of our subject is having a very beautiful fieldwork practice. So how many institutions are doing fieldwork in tribal area? How many institutions are able to make tribal art as part of a one of the performance in their institutions? See, I know that many schools are conducting Zumba dance, which has been developed in some of the other countries. Yes, we cooperate with any kind of countries, but when there is a native art form, why can't we make a Warli design as a kind of floral design in our own educational institutions? Why can't we make a Dimsa dance performance in our own educational institution? So our association has to promote this kind of sustainable, peaceful, cooperative kind of tribal friendly cultures and values has to be promoted as part of our institutions, and that message should reach into the mindset of students. Yes, research and project kind of aspect. It is quite important that you know there are many social and international research opportunities are coming. Funding services are coming. How many of us are able to make a kind of PVTG or related kind of project and research? How many student project we are connecting with the tribal oriented or tribal centric or tribal student centric? So, as an educationist, I would like to say that major number of populations are connected with the educational institution, or their age group are connected with the educational institution. So n number of activities and support and services we have to promote. There is a biggest gap existing in our society and academia. This is my major findings, and concluding part is that the biggest gap is existing in our academia, that we are not able to connect this tribal knowledge documentation. What kind of festivals are happening? Which month their harvesting festival is happening? In our national calendars doesn't have any information related to that. Who are the native leaders who contributed for our independence movement? We know only some mainstream or some members from the Delhi or Bengal kind of area. But in Andhra Pradesh or in our areas, who are the native leaders?
tribal leaders. So this kind of documentation we are missing, and tribal knowledge, ethnobiodiversity, and their ecological services. Everything we need to document. Over a period, this all going to vanish or disappear even from their memory. So we have a very, very limited time to document and recollect from their memories. So this is the alarming time. We need to urgently, connect with the tribal community, work with them, document it, and we need to give this kind of philosophy of tribal life into the next generation. With this, I am concluding. I am very proud to be part of this particular association, and every year, every month, a lot of seminars and academic research activities are happening, publications are happening. This is really a model for every kind of tribal centric organizations. Most of my lectures I used to mention that, and thank you, especially Bridgersley and all the team members. Wonderfully it is going on, and happy to listen many of my co-panel members thoughts and ideas, and national and international members. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you for your briefings and for your valuable talks. And another, I would like to invite our principal, sir, Dr. V.K. Gupta, sir. Dr. Divya, thank you very much. Excellent. Thank you, Because Dr. Vinod, sir. educational institutions have great responsibility Exactly. to contribute to documentation and the information dissemination. And Yes, sir. Yes, sir. because information is going to transform everything. So you have Yes, given sir. a very viable thought. Please give us a summary of it so that we Yes, can, sir. Sure. and we would like to invite you for this draft committee. Madam. Thank you so much, sir. Thank Yes, you. definitely So I will kind. send it soon. So kind. Yes, sir. Namaste. Thank you. Thank you, sir. Namaste. Thank you. Thank you, ma'am. Another speaker, I invite present, sir, Fadillah Selsa from Indonesia. If you present, please reply me. And also Dr. Prince Dan Mebachi from Nigeria. Are you present, sir? Please reply me. And if you present, please reply. Dr. Amit Chandra, sir. Dr. Amit Chandra, sir. So this session very interesting. First of all, Dr. P.L. Chandrakar, sir, Associate Professor at Ravi Shankar Shukla University, Raipur, India. His remarkable words about tribal development in our state, Chhattisgarh. And another, Dr. Divya K, Assistant Professor, Tribal Study, Central Tribal University from Andhra Pradesh, Vice President, also International Social Science and Management Association, Welfare Association, and another engineer, Orentio Sefiu Tayo from Nigeria. Thank you, sir, for your valuable talks. And Honorable Deputy Secretary of the Governor, Chhattisgarh, Dr. Rubendra Kavi, sir. Namaskar, sir. Thank you for your valuable talk. And and next we'll start the technical session. Dr. Chandramouli, are you present? Yes, sir. So participants, listen to all. Their reference number 136 to 170. And I would like to invite first introduction and their today international conference on tribal development, and especially today World Tribal Day. So it is India has rich and diverse tribal heritage. Tribal communities have contributed enormously to our country's cultural diversity, ecological knowledge, traditional medicine, agriculture, handicraft, art, music, literature, and environmental conservation. And one of remarkable in our state, Chhattisgarh, not only there, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, and all over the world, different tribes. And there are the tribal communities have
demonstrate the deep relationship with forest, river, and land and biodiversity. So I would like to invite and starting points in this technical session, in the chairperson in this session, Dr. Chandramouli from Amarkantak Travel University from Amarkantak, Madhya Pradesh, and also co-chairperson in this session, Dr. Ratan Majumdar, Associate Professor Geography, Jawaharlal Nehru Mahavidyalaya, Port Blair, Andaman. And welcome to all, and also Reporter Dr. Sablin Tiwari, Assistant Professor Computer Science, Chaitanya Science and Arts College, and moderator Ma'am Bhavna Ratnakar, Assistant Professor English, Chaitanya Science and Arts College, Pamgarh, Chhattisgarh. And once again, I would like to invite Chairperson Dr. Chandramouli. Please say some things to start this session. Chandramouli sir, at present now Associate Professor and Head, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, and especially he is young and energetic in our resource person. So especially I would like to invite Chandramouli sir. Then start Ratnakar madam one by one, and schedule participant carefully mute your microphone. We announce there are the 136 reference number to 170. Okay, Chandramouli sir, please start. Okay. Thank you. Good afternoon to all of you. Firstly, I want to give my sincere thanks to Principal of the Chaitanya Science and Art College, Pamgarh, organizing team, and Dr. Naren Guria sir for providing an opportunity to say something and discussion with all of you in the tribal development in two-day international conference on tribal development challenges, opportunities, and sustainable development. Thank you, sir, for providing me the opportunity to say something and discuss with all of you on tribal development and allied aspects of the tribes. Firstly, I welcome to co-chairman Dr. Ratan Majumdar, moderator Dr. Bhavna Madam, and reporter Dr. Ms. Swapnil Tiwari to join us for the conducting of the technical session in this international conference. So I request to all of you, please conduct the start the technical session. Firstly, I want to say something or directly start. Guria sir. First, welcome Dr. Nicoleta Madam from Romania, and then now skill. Welcome, ma'am. Your session and the proper time in 3 p.m. Indian time. And at present now there are the technical session. I request you please join with us and during technical session. Also in this session, Chandramouli sir, our special guest Dr. Nicoleta from Romania at present till now join. Yes. Welcome, madam. First of all, I would like invite 136 reference number Sautik Kumar Das Mahapatra. Are you present? If you present, please reply. Next, Dr. R.K. Patel, Dr. Sukriti Ghosh, Dr. Amit Patidar, Gitanjali Marandi, Dr. Reena, Priyanka Chobe, Annu Prajapati from Uttar Pradesh. Are you present? Tanay bhi, are you present? Any participant, their reference number 135 to 170. If you present, please reply me. Hello, sir. So this is Raj. Presentation. Okay. Kusum Chandrakar. Hello, sir. Start your presentation and say please reply your reference number. Hello, sir. Hello, sir. Hello. ये डॉक्टर खगेन कुमार सोनी 164 present, sir. Okay, start your presentation. 149, sir. Okay, wait, easy. 164 first. Okay, start your presentation.
164, Dr. Khagis Kumar Soni, Janjati Vikas, Chinoti Avsar and Satat Vikas. Assistant Professor, Commerce, DP Bibra College, Bilaspur, Chhattisgarh, affiliated to Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur, Chhattisgarh from India. Over to you, sir. Dr. Khagis Kumar Soni ji. थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं इस आयोजक समिति को, जो चैतन्य महाविद्यालय पामगढ़ के हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मुझे अवसर प्रदान किया कि अपनी बात रखने के लिए। मेरा विषय है जनजाति विकास, चुनौती, अवसर एवं सतत विकास। हमको पता है कि भारत जो है विश्व के उन देशों में से एक है जहां जनजाति समुदाय की सांस्कृतिक विविधता अत्यंत समृद्ध और विशिष्ट है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को विशेष संरक्षण एवं विकास का अधिकार प्रदान किया गया है ताकि वे सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से सशक्त बन सके। जनजाति समुदाय प्राचीन काल से ही प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन यापन करते आए हैं। उनके जीवन का आधार जंगल, जल एवं भूमि रहे हैं। इन समुदाय ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन तथा पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने जनजाति विकास के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम प्रारंभ किए। संविधान के अनुच्छेद 46, 5वीं एवं 6वीं अनुसूची तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान का प्रयास किया गया। इसके बावजूद जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, रोजगार, आधारभूत संरचना तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी आज भी व्यापक रूप से देखी जाती है। मेरा शोध का उद्देश्य जो है, पहला राजनीतिक विकास की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना, दूसरा प्रमुख चुनौती एवं उपलब्ध अवसरों का अध्ययन कराना तथा तीसरा है सतत विकास के संदर्भ में प्रभावी रणनीति एवं सुझाव देना है। ये मेरा शोध का उद्देश्य है। जनजाति विकास की अवधारणा की बात अपन करें तो जनजाति विकास से आशय ऐसी विकास प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से जनजाति समुदाय के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा एवं सांस्कृतिक संरक्षण में समग्र सुधार किया जा सके। यह केवल आय वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव विकास, सामाजिक समानता, आत्मनिर्भरता तथा प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा भी इसका अभिन्न अंग है। इसकी अवधारणा के प्रमुख विषय के रूप में मैंने प्रस्तुत किया है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, कृषि, शैक्षणिक विकास, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, तकनीकी शिक्षा तथा डिजिटल शिक्षा का विस्तार है। सांस्कृतिक संरक्षण में चूंकि जनजातीय भाषा, लोक कला, परंपराओं एवं सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण करना है। सहभागितापूर्ण विकास, विकास योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में स्थानीय जनजाति के समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। जनजाति विकास के अवसर में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जनजाति विकास हेतु अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जन धन विकास केंद्र योजना, छात्रवृत्ति योजना तथा कौशल विकास कार्यक्रम जनजाति समुदाय के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विकास एवं सतत विकास में अपन ध्यान दें तो सतत विकास का अर्थ ऐसा विकास से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन एवं आवश्यकताओं से समझौता न करें। जनजाति समुदाय प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने के कारण सतत विकास की अवधारणा के सबसे निकट माने जाते हैं। इसलिए जनजाति विकास को सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है।
जिसमें पर्यावरण संरक्षण में जनजाति समुदाय की भूमिका, सतत आजीविका का विकास, सामाजिक समावेशन एवं समानता, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्थानीय भागीदारी एवं सुशासन। अब मैं प्रमुख रूप से, चूंकि इस सेशन में चंद्राकर सर ने ये बताया कि कुछ आदिवासी स्थानों में उनकी जनसंख्या और उनके कुपोषण का बहुत ही देखा जाता है। मैंने भी कोरबा से देवपहरी जाने के रास्ते में एक गौड़ संस्थाओं द्वारा, समुदाय द्वारा एक बस्ती निर्माण किया गया है, जहां मैंने एक बार जा करके वहां देखा, जहां की स्थिति देख करके मैं भी थोड़ा सा हैरान हो गया कि वहां इतने सारे बच्चे उनके साथ में हैं जो कि कुपोषित हैं, महिलाएं भी कुपोषित हैं। ये सबसे ज़्यादा चुनौतियां आज हमारे लिए दिख रहा है। जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता है। अनेक गांव आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से दूर स्थित है, जिसके कारण समय पे उपचार नहीं मिल पा रहा है। कुपोषण, मलेरिया, एनीमिया, तपेदिक तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर जैसी समस्याएं अपेक्षाकृत अधिक हैं। पारंपरिक उपचार पद्धतियों एवं अत्यधिक निर्भरता तथा स्वास्थ्य जागरूकता की कमी की स्थिति से प्रभावित करती हैं। भारत में जनजाति समुदाय के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं, फिर भी अनेक समस्याएं आज भी बनी हुई हैं, जैसे शिक्षा संबंधी चुनौतियां, जनजाति क्षेत्रों में विद्यालय की कमी, शिक्षकों का अभाव, गरीबी तथा भाषा संबंधी कठिनाइयों के कारण शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत निम्न है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य सेवाओं के सीमित उपलब्धता, कुपोषण, स्वच्छ पेयजल की कमी एवं संक्रामण रोग जनजाति समाज के प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं। आर्थिक चुनौतियां, अधिकांश जनजाति परिवार कृषि, वनोपज तथा मजदूरी पर निर्भर है। आधुनिक तकनीकी बाजार तक पहुंच और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उनकी आय सीमित रहती है। विस्थान एवं भूमि अधिकार, बड़े बड़े बांध, खनन परियोजना और औद्योगिकी के कारण अनेक जाति परिवार अपने पारंपरिक निवास स्थान को छोड़ना पड़े हैं। उचित पुनर्वास और भूमि अधिकार की सुरक्षा आज भी एक बड़ी चुनौती है। सांस्कृतिक संरक्षण, वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के प्रभाव से जनजाति भाषाएं, लोक कला, परंपराएं और सांस्कृतिक पहचान धीरे धीरे प्रभावित हो रही हैं। इनका संरक्षण सतत विकास के लिए आवश्यक है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत में जनजाति समुदाय देश की सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा सतत विकास का अमूल्य धरोहर है। स्वतंत्रता के पश्चात जनजाति के विकास के लिए अनेक प्रावधान, सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम संचालित किए गए, जिनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसके बावजूद आज अनेक जनजाति समुदाय गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, स्वास्थ्य समुदाय का अभाव एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। जनजाति विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक ज्ञान, भाषा, रीति रिवाज एवं प्राकृतिक जीवन शैली की संरक्षण भी समान रूप से आवश्यक है। विकास की ऐसी नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे जनजाति समुदाय स्वयं निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बने तथा उनकी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार की जा सके। सतत विकास के संदर्भ में जनजाति समाज का पारंपरिक ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण में इनकी जीवन शैली विश्व के प्रेरणा स्रोत है। यदि आधुनिक ज्ञान एवं तकनीक की पारंपरिक ज्ञान के साथ समन्वित किया जा सके, अतः यह आवश्यक है कि सरकार, स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान तथा स्वयं जनजाति समुदाय मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, डिजिटल शक्तिकरण, रोजगार, महिला सशक्तिकरण तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में दिशा में समन्वित प्रयास करने से ही जनजाति समुदाय का समग्र, समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित होगा और भारत के समग्र विकास के लक्ष्य को साकार किया जा सकेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक्चुअली गवर्नमेंट के ऑल पॉलिसीज तो है, स्कीम तो है, कहीं ना कहीं वो स्कीम जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता। तो एक अवेयरनेस बहुत बड़ा जरूरी है। पंचायत स्तर पर या ब्लॉक लेवल पे गवर्नमेंट पूरा व्यवस्था रखा है, हर एक स्कीम
हर एक पॉलिसी प्रेजेंट नाम छत्तीसगढ़ में बहुत डेवलप भी हो रही है ट्राइबल एरिया पे। तो कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना होगा कि हम कैसे एज ए प्रॉपर मैनेज कर सके। प्रॉब्लम तो हमारे चारों तरफ देखते हैं, लेकिन सॉल्यूशन प्लानिंग पर आगे बढ़ना होगा। आज के दिन इनोवेशन इंस्टीट्यूशन, इनोवेशन काउंसिल इसमें काम कर रहा है, न्यू टेक्निक्स आइडिया डेवलप हो रही है। नाइस प्रेजेंटेशन सर, थैंक यू। मैं नेक्स्ट प्रेजेंटर डॉक्टर कुसुम चंद्रकर, रूरल डेवलपमेंट एंड ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, एंड एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट नवीन कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। जी जी, ओके। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर कुसुम चंद्राकर, सहायक मैडम प्राध्यापक। प्लीज वीडियो कैमरा को ऑन रखेंगे और हो सके तो पावर पॉइंट भी दिखा सकते हैं। 5 मिनट का टाइम है, वीडियो कैमरा प्लीज ऑन करेंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, ऐसा लगे कि ये सेशन हम एक साथ बैठ के हो रहे हैं, इसलिए वीडियो कैमरा। वेलकम डॉक्टर शीला सेदर मैडम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ इंडिया, and please start Dr. Kusum madam, and also welcome Dr. Nicoleta for Romania. जी सर। Your
challenges, opportunities, and policy perspectives. Concept and importance. Tribal entrepreneurship involves establishing and managing enterprises using indigenous knowledge, traditional skills, and locally available resources. It combines economic activity with cultural values, environmental conservation, and community welfare. Common areas include handicrafts, handloom, agriculture, non-timber forest products, food processing, and livestock and ecotourism. It can generate employment and income, reduce poverty, diversify livelihoods, preserve culture, knowledge, and strengthen social empowerment. Importance and socio-economic benefits for this research paper. Tribal entrepreneurship can create local employment in remote areas, reduces seasonal migration, and add value to locally available resources. It can improve household income and living standards while preserving traditional knowledge and skill. Commercialization through modern marketing can increase the economic value of tribal products. Women's participation can strengthen household income, gender equality, and decision making. Entrepreneurship also support financial inclusion, innovation, digital literacy, and social participation and rural economic development. Government schemes and institutional support. The paper highlights several government initiatives, TriFed, support procurement, value addition, branding and marketing of tribal products. Vandhan Vikas Kendras providing training, processing facilities and market linkages for minor forest producers. Pradhan Mantri Mudra Yojana provide financial support to micro and small enterprises, while Stand Up India facilitates bank credit for new business ventures among scheduled tribes entrepreneurs. NRLM strengthens self-help groups through capacity building, financial inclusion, and enterprise development. The paper also notes support from the Ministry of Tribal Affairs and NSTFDC through training, concessional, finance, and marketing assistance. Opportunities for tribal entrepreneurs. Major opportunities include handicrafts, handloom, agriculture, food processing, bamboo products, non-timber forest products, and ecotourism. Traditional skill and natural resources can be developed into sustainable enterprises. Government scheme can provide finance, skill and market support, digital marketing, e-commerce, and consumer demand for organic and eco-friendly products can further expand market opportunities. Major challenges before the tribal entrepreneurs is this. The major challenges are inadequate access to formal credit and financial services, poor transportations, electricity, internet, and storage facilities, low education and limited entrepreneurship and technical skill, geographical isolation, lack of awareness of government programs, weak institutional support, and limited market information. Marketing problems include dependence on intermediaries, low bargaining power, lack of branding, quality certification, packaging, and value addition. Digital exhaustion and limited access to e-commerce also restrict business expansion. Conclusion for this paper. The paper concludes that entrepreneurship development among tribal communities is a vital pathway for inclusive economic growth, sustainable livelihoods, and socio-economic empowerment. Indigenous knowledge, traditional skill, and natural resources can become viable enterprises when supported by appropriate institutions and policies. Stronger implementation of government scheme, capacity building, technological adoption,
financial inclusion, and marketing support is required. Coordinated action by government agencies, financial institutions, educational organizations, and local communities can strengthen tribal enterprises, preserve cultural heritage, generate employment, and support inclusive and sustainable development in India. Thank you, sir. Any question, participants? Have you any question? Sir, I have a question. Question sir. rather, a quest is there. Just wanted to ask that how, what measures should be taken for entrepreneurship development for indigenous people? Please send us some of your recommendations. What are the limitations at present and what you suggest? Personally, because you have very nice. Yes, sir. Hello? Am I audible, sir? आप हमको ईमेल में भेज सकते हैं। जी सर, आप मुझे ईमेल में भी भेज सकते हैं। हेलो सर। यस सर। हाँ, मैं समझा नहीं सर, आप क्या भाई? मैं ये कह रहा था कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। मैं चाहता हूं कि आपके सुझाव जो है कुछ हम लोग अपने रिकमेंडेशंस में इंक्लूड कर सकें, तो कुछ अपने सुझावों का एक छोटा सा प्रारूप हमको भेज सकेंगे क्या? ठीक है सर। सुझाव ये है सर कि जो गवर्नमेंट से पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसके लिए जो उनके ट्राइबल में जो फॉरेस्ट डेवलप कम्युनिटीज है, फॉरेस्ट के आधार पर जो उद्योग चल सकते हैं, उसका स्किल उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। वो इसलिए उसको जैसे ज्यादा वो बिजनेस कर सके, कोई उद्योग अपना स्थापन कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और जो अपने गवर्नमेंट की स्कीम है वो तो उन्हें मिल रहे, पर वो स्कीम से उन्हें ज्यादातर लाभ नहीं हो रहा है। तो भी उन जो ट्रेडिशनल उनका जो स्किल है, वो स्किल का जो डेवलप वो अच्छा है। खास करके जो वनौषधि है, वो वनौषधि की उनको ज्यादा ये रहे, उसको मालूमात रहती है, तो वनौषधि का ज्यादा से ज्यादा फायदा अपन कैसे ले सकते हैं, इसके लिए मैंने सुझाव रखे हैं, पेपर में मैंने दिए हैं। ये शॉर्ट समरी तो इसमें कोई आया नहीं सर जी, क्योंकि जो लिमिटेशंस हैं वही अवरोध बन जाते हैं। तो अगर आपके अच्छे सुझाव होंगे और उनका, क्योंकि हर स्कीम की अपनी लिमिटेशन है, कहीं ना कहीं 100% तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। दैट इज वाई प्रॉब्लम। तो हम लोग ना, मतलब जहाँ पे रुक रहा है उन बिंदुओं को अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। ठीक है सर। हाँ, बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जी सर। ठीक है सर। थैंक यू। टाइम को ध्यान में रखते हुए सर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट पुष्पलता भगत from research scholar, Department of Education, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, GGU, Central University, Bilaspur. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा में जीवन कौशल सामाजिक समर्थन द्वारा शैक्षिक उपलब्धि संवर्धन का अध्ययन। तो पुष्पलता मैडम, आर यू रेडी? जी सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पुष्पलता भगत है। मैं रिसर्च स्कॉलर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ये मेरा पेपर जो है शोध पत्र, यह कॉन्सेप्चुअल पेपर है। इसमें सर्वप्रथम मैं प्रस्तावना देना चाहती हूँ। तो प्रस्तावना के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आदिवासी शिक्षा का परिप्रेक्ष्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2020 में मैडम वीडियो कैमरा ऑन करके बोलना है। ओके सर, ओके सर।
Okay. जी सर। Continue, please. Start करें. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2020 में स्वीकृति प्रदान की गई, वर्ष 1986 की शिक्षा नीति के स्थान पर लागू की गई एक व्यापक नीतिगत दस्तावेज है। यह नीति शिक्षा को समावेशी, समतामूलक एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के साथ साथ भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज में परिवर्तित करने की परिकल्पना प्रस्तुत करती है। नीति में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों की श्रेणी में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है तथा उनके लिए लक्षित हस्तक्षेप, विशेष शिक्षा क्षेत्र, बहुभाषिक शिक्षण एवं मातृभाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षा जैसे प्रावधानों की अनुशंसा की गई है। नीति यह स्वीकार करती है कि आदिवासी क्षेत्रों में भाषाई असंगति, विद्यालयों की न्यून उपलब्धता तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक शिक्षा तक पहुंच एवं उसकी निरंतरता में बाधक रहे हैं। इस दृष्टि से नीति में कक्षा 5 तक तथा यथासंभव कक्षा 8 तक मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में शिक्षण के प्रावधान, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के सुदृढ़ीकरण तथा सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने जैसे उपाय सम्मिलित किए गए हैं। इसके पश्चात है आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा, वर्तमान स्थिति एवं प्रमुख चुनौतियां। वर्तमान समय में सरकारी योजनाओं एवं विशेष प्रावधानों के बावजूद आदिवासी विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति राष्ट्रीय औसत की तुलना में अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर बनी हुई है। नामांकन दर में क्रमिक सुधार हुआ है, परंतु माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यालय त्याग की दर अभी भी चिंताजनक है। इसके प्रमुख कारणों में विद्यालय की भौगोलिक दूरी, परिवहन एवं अवसंरचना की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति अथवा अपर्याप्त प्रशिक्षण तथा शिक्षण माध्यम एवं मातृभाषा के बीच का अंतराल सम्मिलित है। अनेक आदिवासी विद्यार्थी ऐसी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने हेतु बाध्य होते हैं जो उनकी गृह भाषा से भिन्न होती है, जिससे प्रारंभिक अधिगम में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विपन्नता के कारण बाल श्रम, प्रवासन तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों में सहभागिता विद्यार्थियों को विद्यालय से दूर करती है। इसके पश्चात मैं जीवन कौशल की अवधारणा एवं शैक्षिक महत्व को प्रस्तुत करना चाहूंगी। जीवन कौशल से आशय उन मनोसामाजिक क्षमताओं से है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन की मांगों एवं चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने योग्य बनाती है। इनमें आत्म जागरूकता, सहानुभूति, संप्रेषण कौशल, अंतर्वैयक्तिक संबंध निर्वहन, समालोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, संवेगों का प्रबंधन तथा तनाव प्रबंधन जैसे घटक संबंधित हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन कौशल केवल पाठ्येतर गतिविधि नहीं अपितु समग्र विकास का अनिवार्य अंग माने जाते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थी की शैक्षणिक सफलता, मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक अनुकूलन तीनों को प्रभावित करती है। जीवन कौशल विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं आत्मनियमन की भावना विकसित करते हैं, जिससे वे कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन के प्रति निरंतरता बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त ये कौशल विद्यार्थियों को पारस्परिक सहयोग, टीम वर्क, संघर्ष समाधान की क्षमता प्रदान करते हैं, जो कक्ष के वातावरण एवं सहपाठी संबंधों को सकारात्मक बनाते हैं। आदिवासी विद्यार्थियों के संदर्भ में जीवन कौशल की भूमिका। आदिवासी विद्यार्थियों के लिए जीवन कौशल का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें प्रायः सांस्कृतिक संक्रमण, भाषाई असंगति एवं सामाजिक भेदभावी जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में समस्या समाधान एवं अनुकूलन क्षमता जैसे जीवन कौशल विद्यार्थियों को नवीन विद्यालयी परिवेश, भिन्न भाषा माध्यम तथा शहरी एवं अर्ध शहरी सामाजिक संरचना के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करते हैं। इसके पश्चात सामाजिक समर्थन की अवधारणा एवं उसके प्रमुख आयाम।
को प्रस्तुत करना चाहूंगी। सामाजिक समर्थन से तात्पर्य उन भावनात्मक, सूचनात्मक एवं भौतिक साधनों से है जो व्यक्ति को उसके सामाजिक संबंधों जैसे परिवार, मित्र, विद्यालय एवं समुदाय से प्राप्त होते हैं और जो उन्हें तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। सामान्यतः सामाजिक समर्थन के 3 प्रमुख आयाम माने जाते हैं। भावनात्मक समर्थन, जिसमें सहानुभूति, देखभाल एवं प्रोत्साहन सम्मिलित है। सूचनात्मक समर्थन, जिसमें मार्गदर्शन, सलाह, आवश्यक जानकारी प्रदान करना सम्मिलित है, तथा साधनात्मक अथवा भौतिक समर्थन, जिसमें प्रत्यक्ष सहायता जैसे शिक्षण सामग्री, आर्थिक सहयोग अथवा समय की उपलब्धता सम्मिलित है। विद्यार्थियों के संदर्भ में यह समर्थन मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है: परिवार, शिक्षक, विद्यालय तंत्र, सहपाठी समूह एवं व्यापक समूह। शोध साहित्य में यह सर्वमान्य है कि पर्याप्त सामाजिक समर्थन विद्यार्थियों में सुरक्षा की भावना, आत्म-मूल्य, विद्यालय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को सुदृढ़ करता है। इसके विपरीत सामाजिक समर्थन के अभाव में विद्यार्थी अलगाव, चिंता, अभिप्रेरणा की कमी का अनुभव कर सकते हैं। आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा में सामाजिक समर्थन की भूमिका। आदिवासी विद्यार्थियों के लिए सामाजिक समर्थन का महत्व विशेष रूप से इसलिए अधिक है क्योंकि वे प्रायः परिवार से दूर आवासीय विद्यालयों अथवा छात्रावासों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें परिचित सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से पृथक होना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों, छात्रावासों कर्मियों द्वारा प्रदत्त भावनात्मक समर्थन विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं अपनत्व की भावना को सुदृढ़ करता है। सहपाठी समूह से प्राप्त समर्थन नवीन परिवेश में सामाजिक समायोजन को सरल बनाता है, जबकि इस परिवार का प्रोत्साहन यद्यपि प्रायः सीमित संसाधनों के कारण सीमित रूप में उपलब्ध होता है, विद्यार्थी की शिक्षा के प्रति निरंतरता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बना रहता है। इसके पश्चात है जीवन कौशल एवं शैक्षिक उपलब्धि का संबंध। जीवन कौशल एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध को अनेक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में रेखांकित किया गया है। समस्या समाधान एवं समालोचनात्मक चिंतन कौशल विद्यार्थियों को जटिल अकादमिक अवधारणाओं को समझने तथा उन्हें व्यवहारिक परिस्थितियों को लागू करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे उनकी संप्रत्यय आधारित समझ सुदृढ़ होती है। इसके पश्चात है सामाजिक समर्थन एवं शैक्षिक उपलब्धि का संबंध। सामाजिक समर्थन एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध को व्याख्यायित करने वाले सैद्धांतिक प्रारूपों में यह स्वीकार किया गया है कि पर्याप्त सामाजिक समर्थन विद्यार्थी की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा एवं आत्म प्रत्यय को सुदृढ़ करके अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अकादमिक निष्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। परिवार से प्राप्त प्रोत्साहन विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक मूल्य बोध विकसित करता है, जबकि शिक्षकों का सहयोगात्मक व्यवहार कक्षा कक्ष में सहभागिता तथा अधिगम के प्रति उत्साह को बढ़ाता है। सहपाठी समर्थन विद्यार्थियों में सामूहिक अध्ययन, विचार विनिमय तथा पारस्परिक सहायता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है, जो अकादमिक निष्पादन में सुधार लाने में सहायक होता है। जीवन कौशल सामाजिक समर्थन एवं शैक्षिक उपलब्धि का अंतर संबंध। जीवन कौशल एवं सामाजिक समर्थन को पृथक पृथक कारकों के रूप में देखने के स्थान पर इन्हें एक दूसरे के पूरक एवं परस्पर सुदृढ़ करने वाले तत्वों के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है। जहां सामाजिक समर्थन विद्यार्थियों को एक सुरक्षित एवं प्रोत्साहनकारी परिवेश प्रदान करता है, वहीं जीवन कौशल विद्यार्थियों को उस परिवेश का प्रभावी उपयोग करने तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सक्रिय बनने रहने की आंतरिक क्षमता प्रदान करता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी आदिवासी विद्यार्थी को शिक्षकों एवं सहपाठियों से सुदृढ़ सामाजिक समर्थन प्राप्त है, परंतु उसमें संवेगात्मक प्रबंधन अथवा समस्या समाधान करने जैसे जीवन कौशल का अभाव है, तो वह उपलब्ध समर्थन का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएगा। इसके विपरीत उच्च जीवन कौशल के बावजूद सामाजिक समर्थन के अभाव में विद्यार्थी को अपेक्षित प्रोत्साहन एवं संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।
अतः दोनों तत्वों की संयुक्त उपस्थिति ही शैक्षिक उपलब्धि के संवर्धन हेतु सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध होती है। यह अंतर संबंध एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में भी कार्य करता है। सुदृढ़ सामाजिक समर्थन जीवन कौशल के विकास को प्रोत्साहित करता है तथा विकसित जीवन कौशल विद्यार्थी को सामाजिक संबंधों को अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रखने योग्य बनाते हैं, जिससे समर्थन का दायरा और सुदृढ़ हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जीवन कौशल एवं सामाजिक समर्थन संबंधी प्रावधान इस प्रकार है। पहला है, पाठ्यचर्या को समग्र एवं बहुभाषिक बनाने हेतु 21वीं सदी की दक्षताओं जैसे समालोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक संप्रेषण एवं सहयोग को अनिवार्य अंग रूप में सम्मिलित करना। दूसरा है, प्रत्येक स्तर पर मूल्य शिक्षा, नैतिक तर्क, भावनात्मक कल्याण से संबंधित विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में एकीकृत करना। तीसरा है, परामर्श मार्गदर्शन सेवाओं को विद्यालयी तंत्र का नियमित हिस्सा बनाने की अनुशंसा, जिससे विद्यार्थियों को मनोसामाजिक सहयोग प्राप्त हो सके। चौथा है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा शास्त्र एवं सामाजिक भावनात्मक अधिगम से अधिक मॉड्यूल सम्मिलित करना, ताकि शिक्षक विद्यार्थियों को प्रभावी सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकें। विद्यालय परिसरों को सुरक्षित, समावेशी, समता आधारित बनाने पर बल, जिससे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों को विद्यार्थियों को अपनेपन की अनुभूति हो। सामुदायिक एवं अभिभावक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ताकि विद्यालय एवं परिवार के मध्य सतत संवाद तथा समर्थन तंत्र विकसित हो सके। इन प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि जीवन कौशल एवं सामाजिक समर्थन को परस्पर संबंध रणनीतियों के रूप में प्रस्तुत करती है, जो विशेष रूप से वंचित एवं हाशिए पर स्थित समुदायों की शैक्षिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य अत्यंत स्पष्ट हो जाते हैं कि आदिवासी विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को संवर्धित करने के लिए जीवन कौशल, सामाजिक समर्थन दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण एवं परस्पर पूरक तत्व हैं। जहां एक और जीवन कौशल विद्यार्थी की आंतरिक क्षमता, संज्ञानात्मक लचीलेपन, आत्म जागृति को बाह्य चुनौतियों से निपटने की अनुकूलनशीलता सुदृढ़ करती है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक समर्थन उसे एक सुरक्षित, सहानुभूति और प्रेरणादायी बाह्य परिवेश प्रदान करती है, जो उसके समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। धन्यवाद। थैंक यू। मैम नमस्कार, मेरा नाम मधुसूदन चौबे है। कल मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया था रिसर्च पेपर, 116 नंबर पर है। क्या मुझे आज मौका मिलेगा? आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अभी जिसका सीरियल नंबर है उसके बाद आप करिएगा। यस सर, आई विल वेट फॉर माय टर्न। जिनका सीक्वेंस में बता दिया गया तो उनके कर लेने के बाद आप कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, आई शैल वेट फॉर दैट। सर चलो मौलिक सर, लास्ट रिसर्च पेपर पे कोई कमेंट आपका सर? जी मैम, लास्ट जो भी जिनका पुष्पलता जी का जो वो प्रेजेंटेशन है, पेपर प्रेजेंटेशन, आपका कोई सवाल या फिर कुछ सर आगे बढ़े? मैं इनसे पूछना चाहता था कि आपने बहुत अच्छा इसको प्रेजेंट किया, लेकिन क्या स्किल डेवलपमेंट की बात आप कर रही हैं? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो नई शिक्षा नीति के द्वारा जो स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, उसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो इंटर्नशिप सिस्टम है, दूसरा स्वयं पोर्टल सिस्टम है, जहाँ तो बच्चा जो है स्किल एजुकेशन गेन कर सकता है। क्या आज के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो इंटर्नशिप सिस्टम्स है हमारे इंडिया में या किसी भी स्टेट्स में, जो है वह कितना रिलायबल है उसके स्किल को रिच करने में? उसके आधार पर वह क्या कोई एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकता है, या उसके एजुकेशन के साथ स्किल डेवलप हो सकती है? इस पे आपका क्या विचार है? तो सोचिएगा मेरे समझ से। जी सर। सर एक बार और रिपीट कर सकते हैं लास्ट लाइन? जैसे कि आपका स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, कला कौशल विकसित करने की बात की जाती है नई एजुकेशन पॉलिसी में, तो इसमें जो इंटर्नशिप है और स्वयं पोर्टल के द्वारा जो अलग अलग कोर्सेज जो डेवलप किए गए हैं,
तो क्या रियलिटी में जो इंटर्नशिप है उससे बच्चे को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे हमारे पास 2 ईयर एटलीस्ट निकल चुके हैं, तो 2 सेमेस्टर या 2 ईयर्स निकल चुके हैं, क्या बच्चे उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इस पे थोड़ा सा आप अपने रिसर्च आर्टिकल्स में जरूर इन्वॉल्व करिएगा, कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछ करके या उनसे इंटरव्यू लेकर के या उनका एक्सपीरियंस लेकर के जो है, क्योंकि रियलिटी तभी प्रूफ होगी जब उससे बेनिफिट होगा बच्चों का या सोसाइटी का बेनिफिट होगा। जी सर, मैं आपके बात को मैं ध्यान में रख करके मैं आगे काम करूंगी, क्योंकि इस पे मेरा काम अभी चल ही रहा है। तो नहीं अभी तो कंटिन्यू करेंगे, आप आगे सोचिएगा इस पे। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जी नेक्स्ट। यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नेक्स्ट है 163 number, Albertina Topo, methodological approaches to preserving Munda culture heritage, a comparative study of Birsa Munda Museum and State Museum, Ranchi, Jharkhand. ये है रिसर्च स्कॉलर मिथोलॉजिकल इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट अमरकंटक एमपी। आप स्टार्ट करेंगे। Thank you, ma'am. Am I audible? यस यू आर ऑडिबल, स्टार्ट करेंगे। Yes, yes. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Albertina Topno, a research scholar from a Department of Museology, Indira Gandhi Tribal National University, Amarkantak. I am presenting my research paper, and the title is Museological Approaches to Preserving Munda Cultural Heritage, a comparative study of Birsa Munda Museum and State Museum, Ranchi, Jharkhand. Let's begin with the introduction. So the museums are not just some spaces where historical objects are collected and displayed. Today, they play an important role in preserving, interpreting, and promoting cultural heritage. This becomes very important in the context of indigenous communities, where cultural heritage includes not only material objects but also festivals, rituals, oral traditions, music, dance, traditional knowledge, and everyday sustainable practices. There are 32 tribes in Jharkhand, and Munda is one of the major tribes among them. Munda tribe has a rich cultural heritage, but many aspects of this heritage are experiencing change due to modernization and changing lifestyles. Therefore, museums can play an important role in documenting, preserving, interpreting, and communicating this heritage to present and future generation. With this background, my study focuses on two important museums in Ranchi, Jharkhand. First is Birsa Munda Museum, Ranchi, and second is State Museum, Ranchi. And this examines how Munda cultural heritage is represented and preserved through their mesolological practices. The objectives of this study are to examine the representation of Munda cultural heritage, to compare the museological approaches adopted by the two museums, to identify challenges in preserving both tangible and intangible heritage, to suggest measures for improving museum practices. This study follows a qualitative comparative research design. Primary data were collected from field observations and gallery documentations, unstructured interviews with museum staffs and some selected visitors. And the secondary data were collected from books, journals, museum publications, etc. So the observations are here. Birsa Munda Museum. The Birsa Munda Museum
presents the history, culture, and freedom struggle of tribal communities of Jharkhand. This museum is especially dedicated to tribal freedom fighters. The museum uses thematic galleries, life-size dioramas, photographs, paintings, artifacts, and digital interpretation. It creates an engaging visitor experience and highlights the life and contribution of Birsa Munda. And the second museum, State Museum Ranchi, this museum preserves mainly archaeological, historical, and ethnographic collections. Its ethnographic gallery contains traditional costumes, ornaments, musical instruments, agricultural tools, ritual objects, and household artifacts representing different tribal communities, including the Munda tribe. Compared with Birsa Munda Museum, its displays are more traditional and object-centered. When we compare both of these museums, the comparative analysis indicates that both museums contribute significantly to preserving Munda cultural heritage. However, the Birsa Munda Museum adopts more modern and interactive museological approach, and the State Museum Ranchi has rich ethnographic collections but relies mainly on conventional exhibition methods. Both museums effectively preserve tangible heritage. However, great attention is needed for documenting intangible cultural heritage, such as oral traditions, indigenous knowledge, dance, songs, and rituals, and traditional ecological practices as well. So the major findings are both museums preserve Munda cultural heritage effectively. Documentation of intangible cultural heritage remains limited. Community participation in museum activities need strengthening. Digital interpretation can improve visitor engagement. Museums should adopt more participatory museological practices. Some recommendations based on the study, I recommend to greater participation of the Munda community in museum activities and digital documentation of indigenous knowledge systems, audiovisual interpretation and QR code based information, community workshops, storytelling sessions and live cultural demonstrations, collaborations between museums, universities and local communities. And let's go to the conclusion part. In conclusion, museums are not only repositories of objects, but also institutions that preserve cultural identity and collective memory. To safeguard Munda cultural heritage effectively, museums should move beyond object-centered exhibitions to community-centered and participatory museology. This approach will strengthen cultural sustainability and ensure that indigenous knowledge is preserved for future generations. That's all. Thank you. Okay, Latina ji, for your Ji, nice sir. presentation. I think I want to know one thing. Yes, sir. India has a lots of the intangible knowledge. Yes, sir. But what is the reason why government should not be taken any action or any plan for the conservation of that particular intangible resources for the future generation? सर मैं हिंदी में जवाब देना चाहूंगी. Can you give any plan in which government have tried to preserve that particular indigenous knowledge for the future generation? सर रिसेंट में सरकार के द्वारा और कुछ प्राइवेट अथॉरिटी के द्वारा ट्राई किया जा रहा है, जैसे कि मुंडा ट्राइब का लैंग्वेज है,
उसको प्रिजर्व करने का कोशिश किया जा रहा है। और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी ट्राई किया जा रहा है कि जैसे उनका डांस है, गाना है, इन सबको अच्छे से प्रिजर्व किया जाए ताकि फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचे। हालांकि ये अभी बहुत स्लो चल रहा है, इसको और मेरा ज्यादा। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन, क्या इसको हम कहीं किसी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से या किसी वीडियोग्राफी के माध्यम से या किसी फिल्म के माध्यम से हम उसको डॉक्यूमेंटेड करें तो इसमें पीपल्स का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दिखेगा? तो कहीं न कहीं हमारे रिचुअल में, हमारे हैबिट में, हमारे म्यूजिक नॉलेज में जो है बहुत कोऑपरेट करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो करेंट जनरेशन है, वह इस तरह के जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उससे दूर जा रही है। तो ये सब हमारे पार्ट ऑफ कल्चर है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन है। हर पर्टिकुलर ह्यूमन ग्रुप्स का अपना एक नॉलेज सिस्टम था, एक लाइफ सिस्टम था, वह चाहे इकोनॉमिकल सिस्टम कह सकते हैं, चाहे कल्चरल सिस्टम्स कह सकते हैं। तो एक म्यूजियम स्टूडेंट होने नाते या म्यूजियम पे आप रिसर्च कर रही हैं, तो इसको आप कैसे, क्योंकि आज हम जो है विजुअल चीजों को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं नॉलेज गेन करने के लिए, हम म्यूजियम में जाकर के देखना पसंद नहीं करते। हम जो है तुरंत ऑडियो वीडियो के माध्यम से जो हमको तुरंत विजुअल होता है उस नॉलेज को हम प्रेफर कर रहे हैं, हमारी जनरेशन प्रेफर कर रही है। तो इस पे हमारा मतलब है कि मेरा इंटरेस्ट है कि इस पे भी गवर्नमेंट को या पर्टिकुलर एज रिसर्चर जो है आप इस पे हाईलाइट करने का काम कर सकती हैं। थैंक यू ओवरऑल, थैंक यू। Thank you, sir. Professor Chandra. Dr. Nicoleta from Romania, still now joined in this session time. Just interrupt as special eminent speaker at present, Professor Economics Stephen Murray University, Romania, and in this session chairperson also Dr. Chandramoli sir. Yes. And in this eminent speaker present Dr. Nicoleta ma'am from Romania, and he is very energetic and international also as a economics lecturers, and there are several sessions in our India as a resource person, and also several publications remarkable in your research. So we are very happy to say all our participants today, eminent speaker Dr. Nicoleta from Romania. Over to you, ma'am. Please start your presentation. Okay. Thank you very much. I'll try to share my presentation, but I think some professors before had some other questions or remarks on the other presentation. If they want to give their remarks, I can wait a minute since I share my presentation. Just a brief, Professor Chandra, yeah. You have rightly said the information should be communicated to government in more communicative way, intensive way, so that it is taken into consideration. It is such an important information. Thank you, sir. Okay, I'll try to share my presentation so we can, I hope it works. You can let me know if you can see it. Does it work? Can you see it? Circular economy as a climate adaptation strategy. Yes. Perfect. Yes, it is and visible. here is a comparative study of the Tla-Ami Nation, indigenous community of Canada, and Khasi community, the indigenous Khasi tribe of India. Why this research matter? Firstly, because the climate change threatens ecosystems and the livelihoods and the food systems and cultural continuity. And when we speak about indigenous communities, traditional communities, those communities often depend directly on forests, on fisheries, on water, on forests, on biodiversity. So speaking about the circular economy, here we shift attention from extraction use waste toward regeneration, reuse, and local value creation. And this is what the traditional communities are doing. So traditional ecological knowledge can provide locally adapted approaches to resource stewardship. When analyzing those two communities, we go through this research gap that shows that circular economy and indigenous knowledge are often studied separately, rather than as a combined climate adaptation framework. So the paper does not claim that traditional practices are automatically circular economy. Instead, it analyzes documented practices corresponded not to just the theoretical
parts of the circular economy, but to practices that correspond to circular principles and whether they support climate resilience. So our aim and objectives for this research for this research, first aim is to assess how community-based resources stewardship can support climate adaptation through these circular economy principles. So first objective is to identify climate vulnerabilities in both cases. The second one, to map documented traditional community practices against circular economy principles in this context. To compare governance, resource management, and economic opportunities, and also to derive policy lessons for community-led climate resilience. So the main questions is, how can traditional community resource stewardship strengthen these climate resilience through the circular economy principles? As an analytical framework here, we speak about, as I mentioned, key traditional ecological knowledge, community governance, circular economy practices, and through those traditional communities, the climate adaptation. Regeneration and conservation of natural resources, that's very important for all over the world. Reduce waste and resource losses, local livelihoods and value creation, food, water, and ecosystem resilience, and keeping them clean and reuse them, and intergenerational transmission of knowledge. And here we speak about the sustainable economy and its importance for the future. And this circular economy that is benefited from the traditional communities actually can help us to develop a system that is going to work for the future generations. So the case study is Tla Amin Nation, the indigenous community of British Columbia. This is a self-governing First Nations whose territory is around the Powell River region of coastal BC, where I just came from yesterday. The final agreement provides constitutionally protected self-government and decision-making powers concerning land resources and culture. So they collaborate with the local government to have their territories used for their traditional practices. Treaty arrangements here include rights and management roles relating to their fisheries, plants, and wildlife. The 2024 Forest Resource Plan covers a lot of over 200,000 hectares and emphasizes conservation networks, stream protection, wild growth management, and the biodiversity. And also, these institutions' role is to provide a strong basis for examining indigenous-led resource stewardship as a climate adaptation. So Tla Amin has those pathways to circular economy. We speak here about sustainable forest management, maintaining ecological productivity and long-term resource value. Very important because we are, with this community, we are around the Pacific Ocean fisheries stewardship, linking harvesting rights with conservation requirements and ecosystem health. And this was first time when I was on the Pacific Ocean and I had the chance to also fish. And we had the right to have just one fish, to keep just one fish from the ocean in order to protect this ecosystem. Then plant gathering and food systems, local resource use with cultural and substantial value, habitat and biodiversity protection, and community governance, as I mentioned before. When going to Khasi communities in Meghalaya in India, this is indigenous tribal community that is concentrated around Northeast India. They have long-standing customer institutions for managing forests and community resources. As I read, they also have women in charge. They are the bosses in this community. They have also the sacred groves. Kalau Kintag, Lau Kintag are protected forest areas associated with customary beliefs and rules. Documented benefits include biodiversity conservation, protection of plant species, and watershed functions. And the current atmosphere includes land use change, resource extraction, climate variability, and erosion of customary institutions. And the discussion now, as I read online on the website of Northeast Khasi community of India, is a discussion of how to protect the environment
of having the waste management better organized, and how to help the traditional communities to understand its importance, or how us as modern communities can learn from them. So the pathways for the circular economy for the Khasi community, we have the sacred forests, community forestry, agroecological and local food practices, bamboo and forest-based livelihood, renewable biological resources converted into local products, and later I'll show you the bridge that really impressed me, living wood bridges and other natural-based practices. And as comparative analysis, as dimensions are included ecosystems, key resources, governance, conservation, circular pathways, and key challenges for the both communities. For Tla Amin Nation in Canada, we have coastal forest, marine, Khasi community in India, mountains, subtropical forest. We speak about fish. For Tla Amin Nation, we speak about plants and water and forest for the Khasi communities. Treaty-based self-government, customary community institutions for the other one. Tla Amin, forest planning, fisheries management, Khasi communities, customary rules, sacred groves, connection with the traditions. Both of them have the regeneration and sustainable harvesting for Canada, restricted extraction for India, climate ecosystems pressure and resource management, and in the case of Canada, in the case of India, climate variability and land use resource pressures. So about this comparison, this is a draft. I'm sure that today I can receive some advice from you concerning the Khasi community in India. Maybe I can find more details about this interesting tribe. Circularity is expressed to stewardship, regeneration, conservation, and long-term resource continuity, not just through recycling. And both cases connect ecological health with cultural continuity, with livelihoods, with how can we learn from traditional models. And here also, as proposed indigenous circular climate resilience framework, we speak about the knowledge from traditional ecological knowledge, local observation, governance, community rules and rights, and also the respect towards the environment, circularity, circular economy, regeneration, and local values, and very important also the adaptation for ecosystems and the livelihood resilience. What can be done to help these two traditional communities to continue their traditional lifestyle? Firstly, is to recognize indigenous and their customary knowledge as a source of climate adaptation capacity, not just as a cultural heritage. Also, to give funds to these indigenous communities and to strengthen community authority over lands, forests, fisheries, and biodiversity if it's legally appropriate. So there are no sides that will take advantage of those areas, but there are both sides that will benefit from their development. And also build knowledge exchange networks between indigenous communities internationally, of course, while respecting their areas. And here I have some pictures. This is Tla Amin Nation in Powell River in Canada, and you can find more details on this website. It's their website. And this is a traditional dance they have here. Nun Kum is the name of the dance. And under here is smoked salmon, is smoked fish. And this is Khasi tribe in India with their beautiful traditional clothes. And as I mentioned, I want to show you the bridge. This bamboo bridge is impressive. I haven't seen it yet, but if I'll ever visit there, I think this will be the first spot that I would like to visit. It's just amazing. I hope to see bridges like this all over the world. It's impressive. And it helps us reflect of how important is to respect the nature. As a conclusion, the comparison suggests that community-based stewardship can be interpreted through circular economy principles when it emphasizes regeneration, resource continuity, and local values. Tla Amin demonstrates the importance of indigenous governments, treaty rights, and formal resource planning. Khasi conservation traditions demonstrate the ecological value of customary rules and sacred forest institutions. And as thank you, in Tla Amin language will be Cheche Hati or Iimut, and in Khasi language will be Kublai or Kublai Shibun. Thank you very much.
Dear participants, any question? Principal sir, Dr. B.P. Gupta sir. Thank you, Dr. Nicole. Very interesting concept, circular economy. I thank you and congratulate you that you visited some tribal communities in India. There are more than 740 or so communities in India, and especially in Chhattisgarh, from which in which our college is situated. We have around 43 communities, tribal communities. Very interesting area. It comes to around more than 31% of the national tribal population in India. We will be very pleased if you interest to study the circular economy perspective in these communities. You are most welcome, and we will take care of you. And we can have some MOU like that thing with you, and we can work together. That will be the. Thank you very much. Yes, yes. So I'm looking forward to actually see in practice. I was very impressed, like, because I just came back. I just arrived back to Europe from Canada, and I saw this Tlamin communities area, and I actually went fishing as well on the ocean, and I kind of felt the vibe, but I haven't been yet to India. So I'm sure that India is like a continent. You know, you have yes, tons yes, of languages and of communities, and I'm yes, sure yes. we can learn a lot. Thank you, On madam. I would like to Professor Garima Theory, our chairman, madam, Guru Ghasidas Central University, Professor Forest and Wildlife, for say something, ma'am. Over to you, ma'am. Garima, ma'am. Thank you so much, Dr. Saab, and respected principal sir, and all the dignitaries, and Madam Nicole, uh, who has just delivered his nice lecture, and all the participants of this conference. I'm noticing that Dr. Sheila Sridhar is there. Namaskar, madam, and all the eminent. नमस्ते मैम. आज एक बहुत इम्पोर्टेंट कोइंसिडेंस है कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल है, and we are discussing about the tribes, and we are discussing about the indigenous people. Actually, for the past few years, I am noticing that indigenous people they don't need any kind of help from our side. We need their knowledge. We need their ideas. So it is very important that we have to collect their ideas. Documentation is the most important thing presently. और हमारा जो ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था, इसमें आप सब जुड़े, और इसमें जो आइडियाज एक्सचेंज हुए हैं, ग्लोबल लेवल पे जो आइडियाज एक्सचेंज हुए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर making this world a better place, it is very important to share and exchange the knowledge. And this is the platform where we are sharing our knowledge. And in future also, we will be again, we are very soon, we are planning for such type of conference. And I think Dr. Saab, Dr. Guria, who is organizing Yes, ma'am. secretary of this conference, मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी फिर से, क्योंकि आज जो शुरुआत हो रही है, ये एक सिर्फ एक इनिशियल स्टेप है, और जिस पे हमको और आगे काम करने की ज़रूरत है. तो इतने सारे आइडियाज़ जो इतने एमिनेंट जो प्रोफेसर्स थे और रिसर्चर्स थे, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किए, इनको हमको डॉक्यूमेंट करने के साथ साथ आगे भी हम इस नॉलेज से क्या बेटर एक्सप्लोर कर सकते हैं. एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बहुत, क्योंकि मैंने काम किया है कटघोरा एरिया पे, जो ट्राइब्स हैं, उन इंडिजिनस ट्राइबल विमेंस पे आई हैव वर्क. तो मैंने ये देखा कि उनके जो स्पेशली उनका जो लाइफ स्टाइल है, हेल्थ है, हाइजीन है, तो उस पे उनका जो नॉलेज है
ये आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हो सकता है। तो उस पे उनके नॉलेज को हम किस तरह से मॉडर्न साइंस के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इस पे आगे काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस होती है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको उनके लाइफ़स्टाइल से सीखना है कि कैसे नेचर से कनेक्ट होकर आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। कैसे ग्लोबल लेवल पे हम इस जैसे एक सिंपल सा प्रैक्टिस होता है कि दे आर डूइंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग, उनका जो वाटर कंजर्वेशन टेक्नीक है, उनका जो फूड प्रिजर्वेशन टेक्नीक है, ये सारे जो है, ये आज के टाइम पे बहुत ही रिलेवेंट हैं और इस पे आगे काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे विश्वास है कि चैतन्य साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज का ये प्रयास आगे भी इसी तरह से आप सबके आशीर्वाद से चलता रहेगा। और मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को अपनी बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ इतने सफल आयोजन के लिए। स्पेशली हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर वी.के. गुप्ता सर, organizing secretary of conference Dr. Guria, Dr. Amit Chandra, and the whole team. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you very much. I think this is a moment to open up international dialogue, international collaborations, because the problems are universal. So let us work together for this common cause. Thank you. Nicoletta madam, please feedback our today's international conference. Nicoletta madam, are you audible? Hello. Okay, yes, I can hear you. Sorry, I had my Madam, microphone give me on. a feedback, some important issues and challenges also, and give me feedback about today international conference on tribal day, tribal development. I think this initiative is it's welcome, and as other professors mentioned, it is actually a worldwide important event, and it should you should do it again with more young people also to participate as they came today. I was impressed to see that they were very organized with their research papers, and this is what we need. We need the future generation to also join us, and also an open dialogue with these communities is very important, because what they can bring for us is an example of how to take care of the environment. Is not just them learning from us, is actually us learning from them when it is about circular economy and the environment. And those tribes are actually our ancestors. We all come from the connections with the nature. We are not born in big blocks and in the biggest cities. You know, when I try to compare those indigenous communities, the one from Canada and the tribe from India, I actually looked in New Delhi to see if I find any tribes around. I didn't really find. I was like, okay, yeah, New Delhi is such a big city. I don't know. It's probably one of the biggest cities in the world. And then I was like, okay, I have to go to more remote areas. And when I asked people, like my Indian friends, what they know about this tribe, for example, the Khasi tribe, they said, oh, I know it's a little bit, it's more like an isolated community. And many of them have to leave their community in order to study or to benefit from the modern life. And I was thinking, why will not us go to their community and actually learn how to stay in that community and preserve this lifestyle? So for me, it was a really great opportunity. I'd like to thank you for this opportunity. I know I have a lot to learn, and I'm sure I'll be able to learn more from our experts that participate to this conference. Thank you very much. Thank you. Thank you. Please come to Thank you, sir. Chhattisgarh. Yes, Thank you, madam. on behalf of the organizing committee, I would also like to invite you to our place, Pamgarh, Chhattisgarh, India. Thank you very Please come much. once. Let's hope so. Therefore, our approach must move from development for tribal communities to development with tribal communities, and their participation must be meaningful, and their voice must be heard, their knowledge must be respected, and their right, culture, and identity must remain central to development plan. So it is beautiful, nice talk, madam. Thank you, Dr. Nicoletta, madam. So I over to chairperson in this session, Dr. Chandramouli from Amarkantak Central University, Amarkantak, Madhya Pradesh, sir.
conclude this session. And dear participant, their next reference number will be discussed on technical session 2. Sir, conclude this session, technical session 1. Chandramoli sir, over to you. Okay, sir. Thank you. Excuse me, sir. Madhusudan is waiting. Dr. Madhusudan. He was supposed to speak yesterday. Madhusudan. Yes, sir. Madhusudan. Can we invite him, sir? If you permit. Madhusudan. Dr. Madhusudan, if you are Dr. Madhusudan. He could not present yesterday. Dr. Madhusudan, if you are there, you are the presentation. Okay. Okay. We would like to hear from you. Thank you. Sir, please I think continue. Sumanta Yadav is also waiting. Dr. Guria, can we invite Sumanta Yadav ji? प्रेजेंट नहीं है सर, शायद होंगे तो जरूर रिप्लाई देते हैं। मौली सर आप कंक्लूड कीजिए सेशन को, नेक्स्ट चेयरपर्सन को चेयरपर्सन वेट कर रहे हैं, सेशन शुरू होगी। एनीवन इज लेफ्ट, जिन लोग इस सेशन में प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, नेक्स्ट सेशन में अभी शुरू होने वाला है, आप लोग प्रेजेंटेशन देंगे। सर ऐसी कोई बात नहीं है, संडे हम लोग वेट कर रहे हैं, आप आराम से करिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई हम भी सुन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं टाइम बहुत फॉलो करता हूँ, तो मैं लगता है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने पार्टिसिपेंट प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे हम रात तक सुनेंगे। आप जरूर रेफरेंस नंबर टाइप कर देंगे, टेक्निकल सेशन चलते रहेगा। चंद्रमौली सर प्लीज कंक्लूड दिस सेशन। ओके सर, इस सेशन में लगभग 8 लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया अपना, और सभी ने ट्राइबल डेवलपमेंट, ट्राइबल एजुकेशन या ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल ट्रेडिशन नॉलेज पे अपने अपने व्यू रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम थियोरेटिकल पार्ट को तो डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पार्ट जो रियल थिंग्स है उसको हम मिस कर देते हैं। जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल कमिटीज है इन द डेवलपमेंट सेंस में देखें तो कहीं ना कहीं आज भी उनका पार्टिसिपेशन बहुत लो लेवल पे दिख रहा है। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो इम्प्लीमेंटेड हैं, लोकल एरिया में भी हैं, अलग अलग पोर्शंस में वर्क कर रही हैं, बट दे आर नॉट properly working for the development of the tribal society because of the real sense, real meaning and real stakeholders are not getting that particulars of the benefits. कहीं न कहीं हम लोग जो है जो वर्क कर रहे हैं वो थियोरेटिकली तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन रियल जो डेवलपमेंट पॉलिसी के माध्यम से होना चाहिए, स्कूल्स अवेलेबल हैं, हेल्थ सेंटर्स अवेलेबल हैं, entrepreneurship works programs are available there, self-help groups are also available in that particular area, but they are not properly working for that particular area in which they are available. कहीं न कहीं इस पे हमारे डॉक्टर्स नहीं है, हमारे टीचर्स नहीं है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स के लिए जो प्रॉपर प्लान्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे मैं फेस करता हूँ, हमारे बच्चे आते हैं एडमिशन के टाइम पे, एक कंप्लेन करते सर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, वेबसाइट से हमको नहीं पता चला, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से उनको नहीं पता चला। तो कहीं न कहीं हमारे जो एजुकेटेड सोसाइटी है या जो अवेयर सोसाइटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वह स्कीम्स, वह प्रोग्राम्स, वह बेनिफिट उस पर्टिकुलर सोसाइटी तक पहुंच सके। जैसे हम बार बार कहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स हैं। अभी CUT का एग्जाम हुआ, बहुत सारे ट्राइबल स्टूडेंट जो है वो फिल अप नहीं कर पाए फॉर्म, या उनको वह एडवर्टीजमेंट के बारे में पता ही नहीं चलता। कहीं न कहीं जो है या गवर्नमेंट की बहुत सारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, या जो भी उनके हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स हैं उसके बारे में हम उनको बताने का काम नहीं कर पा रहे हैं। रियल वे में रिसर्च तो कर रहे हैं, लेकिन रियल रिसर्च जो होना चाहिए फील्ड में जो है ऑब्जर्वेशन के साथ जो है कहीं न कहीं पब्लिकेशंस में उसको इनबिल्ड करें, या जो डिस्कशन डिबेट में उसको इनबिल्ड करने की रिक्वायरमेंट है। हम एकेडमिशियंस की, हम स्टूडेंट्स की, हम रिसर्च स्कॉलर्स की, और जो पॉलिसी मेकर्स के साथ जो इम्प्लीमेंटेटर्स हैं, एक जो मीडियम लेवल पे जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पॉलिसी या प्रोग्राम को, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वह स्कीम को लोकल लेवल तक पहुंचाएं, लोकल लेवल तक उसका बेनिफिट पहुंचाने में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करें। ये जो लैक हम लोगों को दिख रहा है, कहीं कहीं ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है। हम मानते हैं कि रिमोट एरिया में ट्राइबल सोसाइटी रहती है,
लेकिन आज बहुत सारी चीजें उनके यहाँ तक पहुंच गई हैं, रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, या उनके पास जो है कम्युनिकेशन फैसिलिटी पहुंच रही है, लेकिन कहीं कहीं वो प्रॉपर वेबसाइट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन टाइमली वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल सिस्टम है, जो इकोनॉमिक अर्निंग सिस्टम है, वो सीजनल वेरिएशन बेस्ड है, और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उस समय जो है, जिसे हम देखते हैं कि जब महुआ कलेक्शन का टाइम आता है या जो पैडी कल्टीवेशन का समय आता है, तो इस समय बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो लोग इन्वॉल्व हैं या कहीं न कहीं इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको भी इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो एनटीएफपीज हैं, जो पॉपुलेशंस हैं, उनके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए जो है, जैसे मैडम ने बताया कि जो हमारा टेक्सटाइल इकोलॉजिकल नॉलेज सिस्टम्स है, ये कैसे बेनिफिट हमको प्रोवाइड कर सकता है। जो उनका नॉलेज है उसको एज ए कल्चर ना देखें, एज ए उनके स्पिरिचुअल ना देखें, बल्कि कैसे उसको मोनेटाइज किया जा सकता है, कैसे उसको जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे उसको पॉपुलराइज किया जा सकता है, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी इकोनॉमिकल लेवल पे और सोशल लेवल पे भी बढ़ सके। इसीलिए गवर्नमेंट ने वन नेशन वन प्रोडक्ट या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या वन विलेज वन प्रोडक्ट की बात कर रही है। क्यों कर रही है? इसीलिए कर रही है कि जिससे जो है उनको रियल डिग्निटी मिल सके, रियल बेनिफिट्स प्रोवाइड हो सके, रियल पॉपुलैरिटी मिल सके। तो कहीं न कहीं हम सभी को इस पे जो है थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वह डिजिटल वेस्ट के साथ साथ जो है रियल बेस्ड रिसर्च को हाईलाइट करें अपने आर्टिकल्स में, अपने डिस्कशन में, अपने डिबेट्स में। जो है ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, या हमारा जो है व्यू हमारा यही कहता है कि कहीं न कहीं हम इसको इन्वॉल्व करें, जिससे हमको उनको रियल बेनिफिट देने में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सके हम। तो आई थिंक सर मेरा ऑब्जर्वेशन इतना है इस पर्टिकुलर सेशन में। जिसने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सभी को मेरी तरफ से थैंक्स। आप सभी ने अपने अपने व्यू से जो है अपने अपने तरीके से उसको डिसाइड करने की कोशिश की और उसको एक्सप्लेन किया, जिससे हम लोगों को कुछ आइडिया, कुछ व्यू और कुछ रिसर्च के जो गैप्स दिख रहे थे, उस चीजों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir, for your valuable suggestion and fruitful suggestion. And next, it is very important today, World Tribal Day 2026. So we are very happy to ask that Dr. Chandramodi as a chairperson in today's international conference from our country, Madhya Pradesh. Thank you very much for your valuable time. And I would like to invite, and also there are the chairperson, also Dr. Sheila Sridhar Madam, DV Girls PG Autonomous College, Raipur, Chhattisgarh, India. Also there chairperson Dr. Savam Singh, Jina University, Almora, Uttarakhand. And also there Akash Kashyap sir, this session moderator and reporter also. And आप पार्टिसिपेंट को मैं फिर से बताना चाहूंगा, जो टेक्निकल सेशन 1 में प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए हैं, 135 से लेके 170 या 170 के बाद लास्ट जितने सारे रेफरेंस नंबर है, लास्ट टेक्निकल सेशन आप बताना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, प्लीज चैट बॉक्स पे अपना रेफरेंस नंबर लिखे। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये हम ऑनलाइन मोड में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है, ताकि हम स्मूथली हम हर एक सेशन को चला सके। अपना रेफरेंस नंबर आप अगर बताना चाहते हैं तो अपना रेफरेंस नंबर चैट बॉक्स में जरूर लिखे। चंद्रमोहन सर कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, मैंने कहा कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं, दिख रहे हैं, तो उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। जी जी जी, एकदम बिल्कुल, हम फीडबैक भी लेंगे। अगर अभी हम लोग फीडबैक देना चाहते हैं चैट बॉक्स में जुड़े जाइए, क्योंकि चैट बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अदर बातें करते हैं तो दूसरे को डिस्टर्ब होते हैं। तो पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट है, चैट बॉक्स में जरूर लिखे आपका सीरियल नंबर या अपना टाइटल, आपका डिटेल नेम, हम जरूर आपको इनवाइट कर लेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। थैंक यू। सो आई स्टार्ट दिस टेक्निकल सेशन। This technical session chairperson Dr. Sheila Sridhar Madam, DV Girls PG Autonomous College, Raipur, Chhattisgarh, and also Deepak sir, Associate Professor, Savam Singh, Jina University, Almora, Uttarakhand. Madam, namaskar. With your permission, can I start this session? Yes, बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय ना गंवाते हुए जल्दी से जल्दी करना ही बेहतर है। Invite reference number 100 कौन थे? Next participant 165. Are you ready? 165 or 168? Rajsekhar sir. Yes sir, Rajsekhar 168. 168. Okay. चालू कीजिए। Okay. Good afternoon everybody.
Today I will be present. My name is Rajshekhar. I am from uh, CSRD, School of Social Sciences from Jawaharlal Nehru University. Today I will be presenting on medical pluralism and health seeking behavior. So this will be about the traditional to modern healthcare transition among the tribal communities in India. I'll be presenting a national literature synthesis with illustrations and evidences from Odisha. So when we go on to define tribes, there are different frameworks that we can find like constitutional, administrative, anthropological, and international definitions. The constitution as such does not define the tribes in our country. The Article 3, 366 only co-references it to Article 342, where tribes have been notified only by presidential orders. Uh, as per the administrative definition, the local committee has given 5-point criteria to identify tribes, which are tribes are identified with primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, signage of contact, and general backwardness. And when it comes to anthropological definition, many scholars have given their different definitions, but a common synthesis can be derived out of it, with tribes having common territory and language, endogamy, customary laws, and shared ethnic identity. The ILO defines the tribes as uh, it emphasizes on the self-identification of the tribes alongside descent from populations predating conquest or colonizations. So we need a discussion of tribal healthcare as such. So first of all, we need to understand that the tribals are not a monolith. India itself has around 700 different tribes, and they have different risk profiles. They have different genetic profiles. Some are more prone to diseases like sickle cell. Some have different forest livelihood structures, and they have a compounded social determinants like isolation, lower literacy, and historically also they have been understudied. Uh, so just as recent as 2000 only, we can see that a expert committee report on tribal health landmark has been published by the government. So there are measurable disparities in health outcomes when we compare the tribals to the general population. The NFHS National Family Health Survey 5 report uh, identifies that there is a significant differences in stunting, underweighing, and anemia among women when we compare tribes to the general population of the country. Even in terms of infant mortality, the national averages is 32, where tribes, with respect to scheduled tribes, the average moves to 44. In the life expectancy of at the national level is 67, whereas for tribes it is 63. So what the literature supports is there is an epidemiological transition that is going on underway when it comes to the tribes, which has already been uh, seen among the general population since the last 2 decades. And even when this transition is going on, the communicable and communicable diseases are still present between the tribes and also among the PVTGs. And there is a growing rise of chronic and degenerative diseases among the tribes like hypertension, diabetes. There are uh, multiple literary references to support this, and also the NFHS 5 report finds that there is the levels of hypertension among the scheduled tribes of Chhattisgarh is comparable to the general population as well. So what is triggering this transition? So there is a rapid rise of urbanization and rising livelihood incomes
there is a nutritional transition and increase in consumption of processed foods and loss of forest access and farming changes. There is a increase in migration patterns and market integration when it comes to the tribals. So when we talk about the tribal population of the country, we can see that there are over 700 tribal communities in the country with over 104 million population of tribes. And over globally also it has been seen that 42 to 49% of the population, not just in developing or underdeveloped countries, but also in developed countries, are reliant on traditional or complementary medications. So now when we talk about Odisha in particular, there are 62 distinct tribal communities in Odisha, and TBTGs are 13, the highest number in any state. It is 22% of the share of the total population of the state. So there are very different studies that states that the factors like education and cultural practices and um, uh, accessibility and and customary beliefs and laws are the determining factors of the acceptance of modern healthcare practices. So what I want to state through this presentation is that the uh, transition, or so to say, the acceptance of the modern medication among the tribes is not a one-way street, but it is a negotiated and sequential process where there are a combination of predisposing, enabling, and need-based factors that have to be met, and also that this could be demonstrated by the Anderson's behavior model. So when we see that when there is a onset of illness among the tribes, it is more often than not seen that uh, people move to the traditional healers first, and then after the escalation of diseases, there is a movement towards biomedicine, and there is often seen that there is also codependency among the tribes towards both the traditional healer and biomedicine. And between the tribes also it has been seen there there are variations in the acceptance of medications. For example, in the tribes of Odisha, uh, of Munda, Oraon, and Ho communities, the acceptance rates differs based on the explanatory models or the causation understanding of the causation of disease among the tribes. Among the Santhal tribes of Odisha, Jharkhand, and Bengal, it is seen that there is a generational shift towards modern medicine that is mediated by educational, like access to education and awareness. Eh, Between generations also it is seen that there is a greater acceptance of modern medicine and uh, within the younger generation when compared to the older generation. The Anderson's model provides a lens through which we can understand this. It divides all the factors that affect the health-seeking behavior into predisposing, enabling, and need-based factors. Among the predisposing factors are the cultural identities, their idea of the causation of belief of diseases, and the enabling factors include the factors like which enable the tribal communities or any people in general to access the healthcare services like the terrain, the seasonal accesses, health insurance policies, and the frontline workers. The need-based factors are the factors which compel a group to access the facilities like the non-communicable diseases that are particularly specific, like genetic conditions of a community, for which are for which we can give examples of the sickle cell in case of ST communities of Odisha.
So if we take the specific case of Ayush, it has been seen that a recent study by Dandasena says that only 31% of the people have been been able to uptake health and wellness centers despite their presence. So this shows that only enabling access without addressing the predisposing factors like developing trust among the community will not help in the people's acceptability of Ayush centers. So with respect to uh, uh, like exceptional factors like in cases like isolated groups or uh, COVID-19 vaccine hesitancy, it is also seen that in case of isolated groups like low contact groups in Andaman, their isolation it makes them uh, uh, increasingly vulnerable because of the low immune low immunity due to lack of contact with the mainland population. This needs this shows the need for of the identification of the need-based factors as shown in the Anderson's model. With respect to the COVID-19 vaccine hesitancy, we can see that there is a lack of development of trust between the community and the administration that leads to the avoidance of the COVID-19 vaccination. So when it comes to policy, we can see that since 2005 there has been active efforts from the government to inculcate or incorporate tribal communities in the uh, healthcare of the country. The National Rural Healthcare Mission uh, first started the Ayush mainstreaming and placed it alongside the PHCs of the country. And after that, in 2014, an active immunization drive-through mission in Indradhanush was started that targeted tribal majority districts in the country. And in 2018, Ayushman Bharat was the world's largest infrastructure insurance scheme that and alongside it, a tribal healthcare report that focused on tribal health titled Bridging the Gap was reported. And as recent as 2023, sickle cell anemia elimination missions have been started that screens and manages sickle cell in the tribal dominated districts. So policy uh, implications of these healthcare initiatives uh, is that the IUs and PHC integration is not a new concept, but evaluation of that integration is necessary for its effective implementation. Alongside it, there is a need for dual engagement. The traditional healthcare that the tribals follow has to be incorporated with the healthcare provided in PHCs, and it is necessary to give it legitimacy through statutory means. And there is a need for investment in trust building between the community and the healthcare workers. So, in conclusion, tribal communities do not abandon their traditional medicinal practices when they adopt modern medicine. They negotiate between both according to the beliefs, access, and needs of the community. Thank you. Thank you so much, Rajshekhar sir. First of all, I will introduce myself. Uh, Good afternoon, everyone, respected dignitaries, scholars, and participants. A warm welcome to technical session 2 of International Conference on Multidisciplinary Research on Tribal Development. And my name is Akash Kashyap, Assistant Professor in Forestry and Wildlife, Chaitanya Autonomous College, Palmgad. So it was a very good presentation given by the Rajshekhar sir. I'll ask co-chairman and chairman sir, do you have any Q&A? Then you can ask from him. No, I don't have any questions. You carry on for the next speaker. Okay, participants, uh,
Reference number 165, Neha Pandey. Are you ready? Okay, we'll move forward to reference number 174, Rimpa Mulla. Yes, sir. Are you? Yes, sir. 155. Okay, okay. After Rimpa ma'am, we'll go for Neha ma'am. Okay ma'am, you can carry on. Sir, actually, this is my Tanya is presenting on behalf of me. We are the co-authors. Okay, okay ma'am. After Rimpa ma'am, we can proceed for you. So actually, on the screen, this is my presentation. Okay, you are sharing the screen? Yes, sir. Okay. As Tanya. Okay, Rimpa ma'am, can we hold it? And Okay, after this, we can go for? okay, sir. After Neha ma'am, I will continue. Thank you. Okay, Thank you, thank ma'am. you so much. It's a collaborated effort, है ना? Yes, yes, sir. Just show. Start कीजिए. Just start, ma'am. Neha ma'am, any technical issue is there or what? Oh, now it's visible. Good afternoon, everyone. Am I audible, sir? Yes, yes, yes. you are audible. Sorry for the interruption and delay. I am Riya Das, Research Scholar, Department of Geography, IGN2, Amarkantak. Today I am here to present my topic, leveraging geospatial technologies and artificial intelligence for sustainable tribal development in India, a systematic literature review. In the introduction, India is home to one of the largest tribal population in world with approximately 705 scheduled tribes and constituting about 8.6% of the country's total population. The rapid advancement of artificial intelligence, geographical information system and remote sensing has transformed development planning by enabling accurate spatial analysis, predictive modeling and evidence-based decision making. Despite these technological advancements, existing research remains fragmented, with most studies focusing on isolated application of AI, GIS, and remote sensing rather than examining their integrated role in tribal development, or we can say sustainable tribal development. In view of this research gap, the present study conducts a systematic literature review following the PRISMA 2020 guideline to synthesize the existing literature on the application of AI, GIS, and remote sensing in tribal development in India. Here is my research objective and my research question. How have artificial and intelligence, GIS, and remote sensing been applied to support sustainable tribal development in India, and what research gaps and future direction emerge from the existing literature? To fulfill or address my research question, here is two primary objectives. Number one, to systematically review the existing literature on application of artificial intelligence, geographical information system and remote sensing in tribal development in India. And second one is to develop a future research agenda and propose a conceptual framework that recognizes both technological capabilities and indigenous knowledge in sustainable tribal development. And starting with my methodology, which first point is research design. As we already say that we use systematic literature review approach. So for this systematic literature review, second point we start with search strategy for literature.
The search strategy employed combination of keywords related to major concept, tribal or indigenous community, AI and geospatial technologies, development and sustainability. The Boolean operations such as and or we use combine search terms. The key term include tribal development, tribal communities, indigenous communities, artificial intelligence, machine learning, GIS, and remote sensing, geospatial technology, sustainable development, and sustainable tribal development. The complete search and screening process was documented according to PRISMA 2020 framework, with the number of records identified, duplicates removed, records screened, and full article accessed, and finally include reported through the PRISMA flow diagram. And this is the eligibility criteria. Here we explain which literature we include and which literature we exclude. This is the criteria. And this is a study selection or screening process where we use different kinds of database, and within that we exclude some of the literature which is not our uses, on the basis of title, abstract, our theme, and different key terminologies. And lastly we get 28 literature review which we can use for our further systematic literature review. This is the data extraction method where we used only the research paper or literature, those fulfill our objective and research questions. And this is the synthesis or result of these different literature reviews, and we can carry forward the different theme, our result. First, artificial intelligence for tribal development. Here we can say in tribal development raises concern regarding data sovereignty, privacy, algorithm bias, cultural representation, and community ownership of indigenous knowledge. Therefore, AI tribal development should follow a community-centered, participatory, cultural sensitivity, and ethical governed approach, ensuring that tribal communities retain meaningful control over their data, knowledge, and cultural resources. Second theme, GIS and remote sensing application in tribal development. Geographical information system and remote sensing have emerged as important tools for spatial planning, natural resource management, infrastructural development, and monitoring of socioeconomic conditions in tribal regions. In India, the application of GIS and remote sensing in tribal areas have been demonstrated in Chintapalli block of Andhra Pradesh, where these technologies were used to prepare land use, drainage, hydrogeomorphological, and water resource development planning. In this context of tribal development, the integration of GIS and remote sensing, GPS, and socioeconomic data can facilitate evidence-based, spatially targeted development planning. Local and indigenous knowledge, community participation, and field-level validation to ensure that spatial planning reflects the actual need of tribal communities. Thus, the GIS and remote sensing can serve a powerful geospatial framework for achieving sustainable, location-specific, and inclusive tribal development. Third one is indigenous knowledge and cultural preservation. Among tribal communities in India, such knowledge encompasses a traditional medicine, biodiversity conservation, agricultural, forest management, food system, handicraft, oral tradition, folklore, rituals, and indigenous knowledge languages. In the Pachmari Biosphere Reserve of Madhya Pradesh, for instance, tribal communities possesses extensive knowledge of local plant, medical resources, and natural resources management, demonstrating the contribution of traditional knowledge to biodiversity conservation and sustainable resource uses. Last one is forest governance and livelihood and sustainable development. The integration of artificial intelligence, geographical information system, and remote sensing, we can strengthen forest governance by enabling real-time monitoring of forest cover, land use change, biodiversity, forest मैडम degradation. टाइम लिमिटेड है और प्रेजेंटेशन में ना थोड़ा सा पॉइंट वाइज होना चाहिए, टेक्स्ट है, थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है, जल्दी पोस्ट कीजिए. Okay, sir, then we can go to our findings. Here is the findings. जैसे कि मेरा था कि पॉइंट कि हम फ्यूचर कुछ प्रोस्पेक्ट बता सकते हैं कि जैसे इंडिजिनियस नॉलेज है उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं और फ्यूचर एजेंडा क्या हो सकता है फ्यूचर के लिए, किस तरह से हम एआई, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस को यूज करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं जो हमारी इंडिजिनियस नॉलेज को प्रिजर्व करे. जैसे वी कैन से द टू वे नॉलेज एक्सचेंज, जिसमें हम क्या बता सकते हैं
कि not only include or preserve their knowledge, we can use that for society, and society जो modern technologies है उसको भी हम उसकी तरफ और ऐसे appreciate करें ताकि जो tribal peoples है उसको उनके तक पहुंचे, और जो normal जो अभी टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको वो समझे, उनकी तरफ वो, और मतलब टू वे इंटरेक्शन वो हम उसको कर सकते हैं इस तरह की। सेकेंड, प्रायोरिटी एरियाज फॉर फ्यूचर रिसर्च में हम 3 डिफरेंट प्रायोरिटी को बता सकते हैं। फर्स्ट, इंटीग्रेटेड जियो एआई फॉर ट्राइबल प्लानिंग should combine GIS, remote sensing and AI for forest monitoring, land use planning, agroforestry and climate risk assessment. Second was community based geospatial monitoring, and third was indigenous knowledge geo AI integration, that tribal geo AI resilience observatory, a potential future research direction. Policy and implementation, that we should go for bottom up approach, that the policy and can be implemented in broader way. And here is conclusion. Thank you, sir. हाँ, इसमें आप ये बताइए, अभी पूछ सकते हैं सर? यस सर, यस सर। हाँ, इसमें आप ये बताइए कि कोई एक एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं कि हम इनका इनके जो भी इनके प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रिजर्व करना, क्या रखना, तो आप 1-2 प्रैक्टिस तो बताइए कि कौन सा प्रैक्टिस आपने आइडेंटिफाई किया। यस सर, क्योंकि मेन हमको प्रैक्टिकल होना है, थ्योरी से ज्यादा। यस सर, कौन यस सी सर। एक आध जो प्राइम इम्पोर्टेंट आपको लगा, वो 1-2, जैसे चिंतापाड़ी में हुआ वहां आंध्र प्रदेश में आप बता रहे हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताइए कौन सी वो 2 बातें प्रमुख लगी जो हम यहाँ एआई, रिमोट सेंसिंग, ये तो सब टूल्स हो गए, इसके माध्यम से कैसे हम अपने विरासत की ज्ञान को बचाएंगे। जैसे यस यस, जैसे उनकी जो मेडिसिनल नॉलेज है, वो जो नेचुरल वो मेडिसिनल नॉलेज बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उसको अगर हम ऐसे ऑनलाइन एआई के थ्रू या जो हमारे रिमोट सेंसिंग जीआईएस के थ्रू वो जियो स्पेशियल वे पे, जैसे पर्टिकुलर लोकेशन बेस्ड, जैसे ज्योग्राफी में हम करते हैं पर्टिकुलर लोकेशन बेस्ड उसको सिंबलाइज करके, देन उसको पर्टिकुलर उस एरिया में, जैसे एमपी का हो गया तो पर्टिकुलर उस एरिया में इंडिविजुअल डिफरेंट सेक्टर में किस हिसाब से कौन सी मेडिसिनल प्लांट ज्यादा है, तो उसको हम एरिया वाइज भी डिनोट कर सकते हैं। देन उसका जो यूजेस है उनको उनके वो प्रॉपर वेबसाइट अगर हम उस पे करें कि उसका यस ओके, इज देयर एनी, क्या हुआ मैम? Shall I continue? लेटर में तो आगे अपने पैसे में उठ खेल रहा है। आभा मैम, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। Okay, thank you so much, Ria ma'am. Anybody is having any more query about this? रिया, हेलो जी। हाँ रिया मैडम, एक वो है जीआईएस में जीआईए टैग, तुम्हारी आवाज यस यस सर, आप जानते हैं जीआई टैग के बारे में? जीआई टैग में सर, जैसे रिमोट सेंसिंग जीआईएस में हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, उसके बारे में नो सर, वो तो अलग मैटर हो गया, जीआई टैग अलग हो गया। जीआई टैग इज डिफरेंट सर, जीआई टैग को यहाँ मत लाइए, यहाँ पे फिर डिलीट हो जाएगा। हाँ, आप अपने थीसिस, आप जो रिसर्च से कर रहे रिलेटेड हैं है वो ना, आप जीआई, अगर मैंने टर्मिनोलॉजी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है सर, जीआई टैग ऐसे फ्लो में अगर बता दिया, बट मैं बात करना जो चाह रही थी वो जीआईएस रिमोट सेंसिंग में जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जो बात है मैं उसको रखना चाह रही थी। ओके, मतलब मैं एक सजेशन आपको दे सकता हूं कि Yes, आप sir. जैसे जीआईएस, जैसे मैम ने अभी आपको बताया ना, सिलाधर मैम ने, कि ये टूल है जीआईएस एंड ना, आई थिंक जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, ये टूल है कि हमारे को हेल्प करती हैं किसी भी रिसर्च और उसको करने के लिए एक तरह से। Yes, yes, yes. लेकिन अगर आपका, जैसे मैं ये देख रहा हूँ आपने जो उसमें दिखाया, तो प्रैक्टिकल जो अप्रोचेज हैं, है ना, जैसे कि कोई चीज अगर हम देखते हैं ट्राइबल्स में कि जो जनजातियां हैं उनकी कुछ मेडिसिन्स हैं, तो उनको जीआई टैग करने का आप इसमें और इन्वॉल्व कर सकते हैं। जीआई टैग मतलब कि सरकार में वो जो उत्पाद है जी जी आप ठीक बता रहे हैं, पर वो यहाँ का एकदम करेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में वो आगे आ जाएंगे, वो आ जाना चाहिए, तो और ज्यादा कहीं आपका रिसर्च और होगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं एक बोलना चाहूंगा मैडम, प्रेजेंटेशन में ना मेरा सजेशन है, इन फ्यूचर में आप जब बड़े सेमिनार प्रेजेंटेशन देंगे
वो टेक्सचुअल मैटर कम हो, पॉइंट टू पॉइंट हो पीपीटी, ये बहुत इफेक्टिव रहता है। पूरे टेक्स्ट रहेगा, ऑडियंस थोड़ा बोर होंगे। ओके, Okay, डोंट okay. माइंड मैडम, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। Thank you, sir, for your kind suggestion. Okay, shall we proceed to our next participant? नेक्स्ट करते जाओ आकाश सर। हाँ, नेक्स्ट हाँ हाँ, नेक्स्ट करते जाइए। Reference number 174, Rimpa Mula ma'am. Are you there? Yes, sir. I am there. I am here. Now I like to present my PPT. Yes, sir. आकाश सर चैट बॉक्स देखते रहना, शायद 158 छूटे हैं क्या, अब नोट कर लीजिएगा। Yes, sir. Sir, is my PPT visible? Yes, yes, visible. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. Respected chairperson, guest, respected professors, teachers, and fellow participants. I am Rimpa Mula, a PhD research scholar of Population Studies Department, Odisha, from Fakirmohan University, Odisha. It is my pleasure to present research entitled Maternal Health Status and Challenges Among Tribal Women in Jhargram District, West Bengal. Evidence from a community-based from a community-based survey. Maternal health is an important indicator of the overall health and well-being of women and communities. Tribal women, particularly those living in geographically remote and economically disadvantaged area, may face several barriers to accessing the maternal health care services. Through my study, I have to try to assess the maternal health status of tribal women in Jhargram district. Here is some introductory points like maternal health is a key indicator. Maternal health is a key indicator of the women's well-being. The tribal socioeconomic inequality and the socioeconomic inequality, limited education, and geographical isolation influences the maternal health outcome. Essentially, maternal health service included the early childbirth, antenatal care, institutional delivery, skilled birth attendant, postnatal care, and family planning. The objectives of my studies are the objectives of my study to assess the maternal health status of tribal women, examine the utilization of maternal health care service, identify the major maternal health challenges, and also explore the factors influencing the maternal health care utilization. The study area the study area. The present study area is the Jhargram district located in the western part of West Bengal. It is the part of the lateritic and forested zone. The district has a predominantly rural and tribal population. Near about 29% of tribal population of total population in this district according to 2011 census information. Major tribes here the major tribes are Santal, Munda, Lodha, Shabar. Women constitute nearly half of the tribal population. Half of the tribal population of the and play the central role in household survival strategies, database, and methodology. The current study mainly depends on the primary survey data, sample size 480, tribal women aged between 15 to 50. Data collected from 8 blocks in Jhargram district, 16 villages selected 2 villages as per block. Tools use structural questionnaire, field observation, simple statistical method like percentage descriptive statistics are used to analyze the data. Data analysis. In this, as I previously said, the main factors of the maternal health indicate the early marriage and antenatal and postnatal care utilization. Here, if we look the antenatal care utilization, then it is see that
The distribution suggests that antenatal care utilization was moderate, although the improvements are needed to comprehensive antenatal coverage. These all data are collected by me at primary field survey uh, during the 2025. And the next, the place of childbirth, where the maternal care is taken. This is the most important thing as a new coming, as a newly got mother. The place of childbirth here, if we see the institutional delivery was very high, near about 92.6, indicating the good utilization of hospital based on maternity service. Here, hospital means the primary health care, not the multi-specialty or hospital. This is mainly included the primary health center. Home delivery accounted only 5.9%, reflecting the progress of safe and delivery practices. Next, the postnatal care. Here, if we see antenatal care is far better than postnatal care. After delivery, women neglect the to care on her health. Here, postnatal care, the results suggest that postnatal care coverage remains uneven and requires the strengthening. Next, a second, sorry. Family planning adoption. This is the most important part of the part of a maternal health care. If we see to the Jharkhand district, the low adoption rate indicate the need of improved reproductive health education, counseling, and access the contraceptive services. Menstrual hygiene is one of the most important part which is included to the maternal health. The predominance of cloth use suggested the economic constraint limited of access the sanitary products and traditional practices continue the influence the menstrual hygiene behavior in the study area. Next, as I say, the first childbirth, the age is a very uh, uh, very important matter which affect the matter after delivery in women's health. Here, more than half, 56.5% of tribal women experience their first childbirth before age 20 years, indicating the early motherhood continues to be an important maternal health challenges in the Jharkhand district. Major maternal health challenges among the tribal women: limited access to healthcare, early motherhood, poor nutrition, low healthcare awareness, and also the low education level, etc. Uh, their major findings: early motherhood, 56.5% respondents experiences their first childbirth before the 20 years of age. Institutional delivery, 92.6 reported giving the birth in a hospital, indicating high utilization of institutional delivery services. Menstrual hygiene, 66.5% used cloth during the menstruation, while only 21.7% exclusively used the sanitary pad. Family planning, only 22.9% reported adopting family planning methods, indicating the substantial unmet need to family planning services. Here some recommendation and conclusion of my total survey. Strengthening the ANC means the antenatal care and postnatal care, ensure regular and quality maternal health care services, particularly in remote tribal area. Delay early motherhood, promote girls' education, awareness regarding age at marriage and adolescent health programs, improve the nutrition and hygiene, strengthen the maternal nutrition programs, and the provide affordable menstrual hygiene products, expand family planning services, increase the counseling and contraceptive availability, and the community-based awareness through ASHA and AN workers. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Our chairperson and co-chairperson.
Do you all have any query? Then you can ask. It's a very practical type of paper and really it's a good one. No question from this side. Okay. Now with the reference number 157, Mrs. Bhavna Devan. Are you there? Yes, sir. सुन पा रहे हैं? Ji, you're audible. You can just start your presentation. आकाश सर, रेफरेंस नंबर 171 से 204 जितने लोग होंगे उनके चैट बॉक्स में थोड़ा सा फॉलो अप कर लेंगे. Yes, sir. सर स्क्रीन शो हो रहा है? Yes, it is visible now. आप सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम श्रीमती भावना दीवान है. सहायक प्राध्यापक भूगोल बाबू पंडितराव के दास शासकीय महाविद्यालय सिलौटी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ. मैं आज शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ. उसका शीर्षक है नगरीय विकास खंड में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं. छत्तीसगढ़ राज्य का धमतरी जिला आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है. इस जिले का नगरीय विकास खंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां गोड़, हल्बा, भतरा और कमार जनजातियां निवास करती है. शोध पत्र का उद्देश्य है नगरीय विकास खंड की आदिवासी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य स्थिति का अध्ययन करना. प्रस्तुत शोध अध्ययन प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है. अनुसूचित जनजाति समुदाय के महिलाओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आंकड़े व सूचनाएं प्राप्त की गई है और अध्ययन में 4 गांवों की 120 अनुसूचित जनजाति की महिलाएं शामिल हैं. अध्ययन से पता चलता है कि महिलाएं कृषि, वन उत्पाद संग्रह तथा घरेलू कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी अभी भी पर्याप्त प्रमुख समस्या है. भारत में आदिवासी समाज अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है. छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या लगभग 33% है. नगरीय विकासखंड वनाच्छादित और पहाड़ी क्षेत्र है, जहां अधिकांश लोग कृषि और वन संसाधनों पर निर्भर है. भारत के आदिवासी समुदायों में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. वे परिवार, कृषि और सामाजिक जीवन की प्रमुख आधारशिला मानी जाती है. विशेष रूप से नगरीय विकासखंड में आदिवासी महिलाएं कृषि कार्य, वनोपज संग्रह और घरेलू गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाती है. हमारे अध्ययन का उद्देश्य है नगरीय विकासखंड की आदिवासी महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन, आर्थिक गतिविधियों में उनकी भूमिका का विश्लेषण, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति का अध्ययन, प्रमुख समस्याओं की पहचान और महिला सशक्तिकरण के उपाय सुझाना. अध्ययन क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. नगरीय विकासखंड धमतरी जिले के दक्षिणी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां जिले के अन्य विकासखंड की तुलना में कुछ भिन्न है, जिसके कारण कृषि उपयोग तथा आर्थिक गतिविधियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है. अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं के रूप में हम देख सकते हैं, ये जो नगरीय विकासखंड है, यहाँ की स्थलाकृति मुख्यतः पहाड़ी और पठारी है. जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है. मुख्यतः लाल और लैटेराइट मृदा पाई जाती है. साल, सागौन, बांस और अन्य मिश्रित प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है. धान, मक्का, कोदो, कुटकी, दलहन प्रकार की प्रमुख फसलें ली जाती है और कृषि के अलावा वनोपज संग्रह, पशुपालन और लघु वनोत्पाद यहाँ का मुख्य रोजगार साधन है. प्रमुख जनजातियां एवं चयनित गांव हैं. यहाँ मुख्यतः जनजातियां हैं गोड़, हल्बा, कमार और भतरा. माकड़दोना, करहिया, बोरई और हिंचापुर गांव को अध्ययन क्षेत्र में चयनित किया गया है. प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत के रूप में हम 120 महिलाओं का साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सर्वे किया गया है यहाँ पे, और द्वितीयक आंकड़ों के रूप में जनगणना रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज और शोध पत्रिकाओं को शामिल किया गया है. सामाजिक स्थिति के विश्लेषण में हम देखते हैं यहाँ विवाहित महिलाएं 72% है, अविवाहित महिलाएं 18% और विधवा महिलाएं जो है वो 10% है. इस तरह हम देखते हैं कि अध्ययन से ये पता चलता है कि अधिकांश महिलाएं विवाह के बाद घरेलू और कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. शैक्षणिक स्थिति यहाँ निरक्षर 38% महिलाएं हैं, प्राथमिक 34%, माध्यमिक 10% और 20% और उच्च शिक्षा एवं अन्य में शामिल है 8%. नगरीय जैसे सुदूर वनांचल क्षेत्र में शिक्षा का स्तर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कम है और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में
बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक गतिविधियों में 120 महिलाओं में कुल 55% जो महिलाएं हैं वो कृषि कार्य में शामिल हैं, 25% जो महिलाएं शामिल हैं वो वनोत्पाद संग्रह में हैं। मजदूरी एवं लघु व्यवसाय के रूप में 20% महिलाएं यहाँ कार्यरत हैं। प्रमुख वनोत्पाद में महुआ, तेंदुपत्ता, साल, बीज शामिल है। महुआ और तेंदुपत्ता संग्रहण स्थानीय निवासियों के आय का प्रमुख साधन है। नगरीय विकास खंड में सर्वेक्षित महिलाएं कृषि, वनोत्पाद एवं वनोपज संग्रहण पर निर्भर है। स्वास्थ्य समस्या को अगर हम देखते हैं तो सर्वेक्षित अनुसूचित जो जनजाति महिलाएं हैं उनमें कुपोषण और एनीमिया का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया है। यहाँ महिलाओं में खून की कमी व कुपोषण की प्रमुख समस्या स्वास्थ्य समस्या के रूप में है। शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, आर्थिक संसाधनों की कमी, परिवहन सुविधा की कमी व रोजगार के सीमित अवसर यहाँ की और अन्य प्रमुख समस्याओं में आती है। महिला सशक्तिकरण की संभावनाओं के रूप में देखा गया, यहाँ स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा, कौशल प्रशिक्षण, महिला शिक्षा अभियान एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम पे अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो यहाँ की महिलाएं और आगे आ सकती हैं और अपना आय अच्छा कर सकती हैं। निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कि नगरीय विकास खंड की आदिवासी महिलाएं सामाजिक और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। वह कृषि, वन उत्पाद संग्रह और पारिवारिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती है। हालांकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सीमित अवसर उनके विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि सरकारी योजनाओं और सामाजिक प्रयासों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए तो इन महिलाओं का सामाजिक आर्थिक विकास संभव है। थैंक यू। जी, thank you so much, ma'am. आपने ये Anybody is जो having any queries? हाँ आपने जो किया इसमें क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आया और आपने डेटा कैसे लिया? मैम ये जो नगरी वाला क्षेत्र है वो बहुत सुदूर वनांचल क्षेत्र है। यहाँ तो आने जाने में ही एक दिक्कत हुआ। जो गांव में यहाँ करहिया और जो हिंजापुर गांव है वो बहुत अंदर है और यहाँ जो महिलाओं का जो मैं सर्वे करने के लिए गई थी वहाँ महिलाएं मतलब अधिकतर महिलाएं जो है वो अच्छे से मतलब क्या बोलना चाहिए संवाद का जो माध्यम था या हाँ, उनकी बात नहीं मतलब करती हैं, मैं जो जवाब नहीं देती हैं। जी क्वेश्चन जैसे मैं करती थी तो उनको समझने में ही थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था तो ये समस्या तो आई मैम मुझे डाटा क्योंकि कलेक्शन के लिए। मुझे ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकल वाला पता है उस एरिया का, इसीलिए मैंने कहा पूछा। जी थोड़ा सा चलिए दिक्कत कोई हो बात रहा है। Now our next presenter. Anybody is having any query? Okay. Now we'll proceed. Reference number 116, Dr. Madhusudhan Chaube. Yes, sir. I'm going to present my research papers. Sure, sir. You can proceed. Give me some seconds, sir. Yes, sir. Can I start now, sir? Yes, Can I? definitely. Sure. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Respected chairperson, distinguished scholars, researchers, and dear participants. Good afternoon. It is my privilege to present my research paper titled A Study of Pithora Tribal Art in the Nimad region of Madhya Pradesh. As introduction, I can say India is known for the extraordinary cultural diversity and rich traditions of tribal and folk art. Pithora painting is one of such remarkable arts. This art is associated mainly with the Bhil, Bilala, and Barela community of central India. My study focuses especially on the Nimad region of Madhya Pradesh, comprising 4 districts, Badwani, Khargone. Sir, kindly on your video camera, sir. Yes, sir, but it creates a disturbance, sir, voice disturbance. That is why I have switched off the video camera, sir. I feel inconvenient, sir. So allow me to switch off the video cameras. अभी ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठीक दिख रहा है. Okay, sir. So as I mentioned that my study is based on the 4 districts of
Nimad region of Madhya Pradesh, Badwani, Khargone, Khandwa, and Burhanpur. And the neighboring districts, Alirajpur and Jhabwa, is also famous for the Pithora art. Research problem के रूप में, if I talk about research problem, although Pithora art has received increasing attention from scholars, museums, and cultural institutes, its regional characteristics in the Nimad region have not been adequately studied. That is why it is a research problem for my research paper. Objective of the study, if I talk about, the study has 5 major objectives. First, to examine the historical background of Pithora art. Second, to understand its religious and cultural significance. Third, to analyze its artistic characteristics, symbols, colors, and motifs. Fourth, to examine its regional presence in Badwani, Khargone, Khandwa, and Burhanpur, and also in Alirajpur and Jhabwa districts. And finally, to assess its contemporary relevance and identify measures for its preservation. If I talk about the research methodology which has been adopted by me, my study follows a historical, descriptive, and analytical approach. It is based primarily on secondary sources, including books, research studies, government publications, museum materials. Of course, many paintings I have seen of this art form, and literature related to tribal culture and art. The geographical scope of the study is deliberately limited to the 4 Nimar district, Badwani, Khargone, Khandwa, and Burhanpur, so that I can do my study in deep and minutely. If I talk about historical and cultural background, I must say Pithora painting developed within the tradition, religious and social life of tribal communities. It is generally associated with Baba Pithora, a revered tribal deity. Traditionally, a Pithora painting is created when a family makes and fulfills a religious vow, often associated with health, prosperity, agriculture, livestock, family welfare, or protection from difficulties. Therefore, the creation of a traditional Pithora painting, is itself a ritual process rather than simply an artistic activity. The painting is usually created on an interior wall of the house after the wall has been ritually prepared. Nowadays, many persons are preparing Pithora painting on canvas and other materials. Major artistic feature, if we see of this art form, we find the most prominent visual element of Pithora painting is the horse. We can find the horse in every Pithora painting. Horses are generally understood as symbolic vehicle associated with divine powers and secured moments. Other important elements include the sun and moon, trees, birds, animals, agricultural activities, musicians, dancers, houses, and village life. These elements collectively presents the tribal understanding of the relationship between human being, nature, supernatural forces, and community life. This is really a great thing. I have seen many Pithora paintings, and I have some paintings in my collection also in my college, not at present at my home. The use of vibrant colors, rhythmic composition, representation of motifs and symbolics rather than realistic representation gives Pithora its distinctive visual character. If I talk about cultural significance, so one of the most important findings of the study is that Pithora art performs several functions simultaneously. It is a religious expression, a visual language,
a cultural archive, a form of community participation, and a mechanism of integrational cultural transmission. The paintings preserve memories of tribal life, agricultural practices, ecological surroundings, traditional beliefs, festivals, and social relationships. If I say something about the original perspective, so in Barwani and Khargone, Pithora traditions are particularly significant among Bhil and Bhilala communities. Khandwa and Burhanpur also from important part of the border Nimad cultural landscape, where tribal communities preserve related ritual and artistic traditions. I can say contemporary challenges are there for this art to preserve it. I will like to mention some of the challenges. My study identifies four major challenges. First, modernization and changing housing patterns are reducing traditional wall space. Second, migration and urbanization are awakening integrational transmission. Third, commercialization can separate the paintings from its original ritual context. Pay attention towards this challenge. And fourth, traditional knowledge is largely transmitted orally, making it valuable to gradual loss. In next point, I would like to say something about preservation and future possibilities. The preservation of Pithora requires more than simply preserving paintings in museum. We need to preserve, yes, I'm going to finish in some seconds. We need to preserve the community rituals and cultural contexts associated with the art. I propose four major measures. First, systematic documentation through photography, video, oral history, and digital archives. Second, greater involvement of universities and research institutes in interdisciplinary research. Third, direct economic and institutional support from traditional tribal artists. And fourth, community-led conservation so that tribal communities remain the principal custodians of their own heritage. Conclusion. To conclude, Pithora art is much more than a form of tribal painting. It is living cultural tradition that connects spirituality, nature, agriculture, social relationship, artistic expression, and collective memory. The study demonstrates that the Pithora tradition of the Nimad region, particularly in Badwani, Khargone, Khandwa, and Burhanpur, represents an important dimension of India's intangible cultural heritage. Its preservation should therefore not mean freezing in the past. Rather, our objective should be to protect its cultural identity. I would conclude with one statement. Pithora is not merely painted on the wall, it is painted in the memory, faith, and cultural identity of the community. Thank you very much for listening to me. Thank you so much, sir, for such a good presentation. हाँ, ये तो बहुत अच्छा था, पर वो आपका वहाँ का आर्ट अगर आप दिखाते तो भी बहुत अच्छा लगता हम लोग को। आई एम सॉरी टू टेल यू मैम, मैं कॉलेज से घर आ गया हूँ। मैं कॉलेज में बच्चों से भी बहुत सारी इस तरह की पेंटिंग्स बनवाता हूँ और कम से कम नहीं, मैं मेरे पास समझ गई 50 सर, अगर वो पिथौरा आर्ट। हमको दिखता तो बहुत अच्छा लगता है। जी, मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, पर कोई मैं बात वो मेल कर सकता हूँ या व्हाट्सएप कोई नंबर होगा तो मैं उस पर व्हाट्सएप कर हाँ, सकता हूँ। ये जी क्योंकि जी, आप तो मतलब ये हमको जीआई टैग भी दिला सकता है ये आर्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्ट है मैम, और ये हाँ, इतना सुंदर लगता है जब पेंटिंग के रूप में बनता है। और जैसे जी, वारली आर्ट है महाराष्ट्र का या हाँ, जी, मधुबनी है जी, बिहार जी, बिहार का, हाँ, हाँ, उस तरह से इसके प्रोफेशनल यूज की भी बहुत संभावना है, लेकिन जी, अभी तक ये अछूता है।
जी, और क्योंकि ये इसमें एक ही संभावना है। पेंटिंग जी, क्योंकि इसमें एक ही पेंटिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स होते हैं और हाँ, इतनी नहीं, सरलता से बनती है, इतनी बढ़िया बनती है पेंटिंग। जी, जी। पर मैं था दिन भर कॉलेज में ही था कि मेरा नंबर आ आज आप जाएगा। इन लोगों को भेज दीजिए, इन लोग अपने जी, पब्लिकेशन में ले लेंगे उसको। जी मैम, थैंक यू वेरी और मच, डॉक्टर थैंक यू। दीपक जी ने जैसा बताया था RS एंड GIS को GI तक ले जाने के लिए, तो आप तो पहुंचा ही दिए वहां तक। तो ये सही बात हमारे है, लिए इन सब चीजों को संरक्षित करके धरोहर बनाना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। और अच्छा था। एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि ये जो इस तरह की कॉन्फ्रेंस और सेमिनार इस प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत होती है, वो वास्तव में बहुत ही अच्छी होती हैं और वो वास्तव में होती हैं, मतलब फॉर्मल नहीं होती हैं। सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े जाते हैं, बहुत अच्छे से समीक्षा की जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू। Dr. Madhusudan, जी सर। kindly जी। share your number so that if anybody is interested for collaboration, they can do it, sir. Yes, sir. Yes, sir. 91. Should I speak my number, sir? Okay, okay. I will 91 31 31 63 63 72 72 39. 39 Yes, sir. 9131637239. Yes, sir. Okay, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Regards, Thank sir. you so much. Thank you. Namaste. Can we proceed to our next presenter, respected dignitaries? Okay. Now with the reference number 180, Dr. Deepak Dattaram Goshavi. Are you there, sir? Yes, sir. Is it audible, sir? Yes, it is audible, sir. You can start, sir. Sir, my screen is visible. Is it visible, sir? Screen? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, everyone. My presentation focuses on how entrepreneurship can become a sustainable pathway for improving the livelihoods of tribal communities in India while preserving their culture and promoting inclusive economic development. This framework highlights government initiatives, successful case studies, key challenges, and policy recommendations for achieving the vision of 2047 goal. India's tribal landscape. India has more than 700 scheduled tribes comprising near 9% of the population. Chhattisgarh is one of the highest tribal populations. Entrepreneurship offers an opportunity to reduce poverty, create self-reliance, and preserve traditional knowledge while generating sustainable livelihood beyond agriculture. Major
और संस्कृति की समाज में वास्तविक झलक है, जिसको हम आज के समय में भी कई जगह हम इसको देख सकते हैं, इसको हमें प्रमोट कर सकते हैं। जनजातीय कला की विशेषताएं, प्राकृतिकता, प्रकृति से प्रेरणा लेकर के जनजातीय कला चलती है। प्रतीकात्मकता, धार्मिक और सामाजिक प्रतीकों का उपयोग करती है। सामूहिकता, व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि इसमें सामूहिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। जो भी पेंटिंग्स वगैरह बनती हैं उसमें सामूहिक चीजें, वृक्षों से भी, प्रकृति से भी और मानव के अपने जो परिवेश है उसको भी सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। सांस्कृतिक जुड़ाव परंपराओं का एक प्रतिबिंब है। आज के समय में जनजातीय कला की वैश्विक स्तर पर पहचान बनी है। कला में बाजार में, प्रदर्शनियों में और जो ललित कला एकेडमी और राज्य ललित कला एकेडमी और बिनाले, द्विनाले, मतलब तिनाले जो त्रिवार्षिकी प्रदर्शनी होती है, इंटरनेशनल प्रदर्शनी होती है, उसके माध्यम से भी इन कलाओं का विदेशों तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इनके चित्रों को प्रदर्शित किया गया है, इनकी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया है। और बिहार में तो जो मधुबनी आर्ट है वो वस्त्रों पर भी की जा रही है। वस्त्रों के माध्यम से डिफरेंट टाइप के जो मॉडर्न वस्त्र चल रहे हैं उस पे भी फोक आर्ट, फोक मोटिव्स को काफी पसंद किया जा रहा है, जिसके कारण उनकी जो आर्थिक इनकम है वो भी बढ़ रही है और उनका जो एक हुनर है अपनी कला को प्रेजेंट करने का, अपने अभिव्यक्ति को, अपने अंतर्मन की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने का जो उनका एक सृजनशीलता है वह भी प्रदर्शित हो रही है और उसको एक आयाम मिल रहा है। प्रोफेसर भगवती प्रकाश काम्बोज देहरादून के एक प्रतिष्ठित और कलाकार रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, चिंतक रहे हैं। उन्होंने भारतीय एवं यूरोपीय कला पर विशेष अध्ययन किया और पुस्तकें प्रकाशित की। उन्होंने उत्तरांचल कला परिषद की स्थापना की और कला को प्रमोट करने के लिए, वहां पे चित्रों की प्रदर्शनी को विस्तार देने के लिए, जो स्थानीय कलाकार है उसको एक गति सीधी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अथक प्रयास किए हैं। गढ़वाल की जो वॉल पेंटिंग्स हैं उन्होंने उस पर एक शोध लिखा है और उसको उन्होंने इसमें वहाँ की जो कला है, वॉल पेंटिंग्स हैं, उनको उजागर किया है, जिनको जो केवल घरों में ही बंद रह गई थी वे कलाएं, उनको समाज के सामने परिलक्षित किया है। प्रोफेसर काम्बोज ने आधुनिकता का समन्वय किया है परंपरागत कलाओं से। इस प्रकार जनजातीय कला भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इसका संरक्षण और इसका विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको विकसित करने और संरक्षित करने, संजोने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। प्रोफेसर भगवती प्रकाश काम्बोज ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। इन प्रयासों से स्पष्ट होता है कि यही सही मार्गदर्शन और सार्थक मिले प्रयास से और सरकारी की जो योजनाएं हैं उनको वहां तक पहुंचाकर जो हमारी पारंपरिक कला है, जो हमारी लोक कला है, उसको हम संरक्षित रखते हुए वैश्विक स्तर तक इसकी पहचान बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल चेयरपर्सन को हम बताना चाहेंगे, मैडम। जी सर। कैन आई स्पीक ए वर्ड? Yes, definitely. Sure. Madam, in our institution, we have started with Varli art, and the students have started Chaitanya Srijan artwork. And we invite you to visit our college, and we will gift you some Varli art. मुझे तो बहुत देखने का मन है सर आपके कॉलेज को। नरेंद्र ने, गुरिया सर ने हमेशा बताया है। You're most welcome. And we were in the art exhibition at Janjgir, and we got a very nice response. And students are doing artwork on sustainable fiber cloth. So that is the experiment they are doing. And सर सारा श्रेय जो है पूरी आपकी टीम को, आपको, आपके नेतृत्व को जाता है। नहीं, और आपके सभी सदस्यों को। मैडम, आपका मार्गदर्शन, और हम लोग इसमें और भी कुछ फ्यूजन वर्क करना चाहेंगे। कुलदीप जी, हम लोग आपको जोड़ेंगे
or let us train some artists for the fusion artwork. For example, we have worldly, we have also or from the Dogra art. लेकिन अब ज्यादा समय नहीं मिल पाया, लेकिन हम लोग और भी कुछ करना चाहते हैं. Let us do some fusion work and let us have some collaboration. And गुड़िया जी आपके संपर्क में रहेंगे and we will do something. हमारे एक गुरु हैं डॉक्टर राम सब सिंह जी सहारनपुर से. उन्होंने फोक आर्ट पे मतलब इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं और जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं. और बहुत सुंदर जो है मतलब सांझी आकाश सर टेक्निकल सेशन से खत्म हो गए क्या? तो हम लोग जो है उनको आमंत्रित करेंगे एक कार्यशाला के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा. आप पधारेंगे, अपन कोलैबोरेट कर लेंगे. थैंक यू सर. गुड़िया जी यू कैन कंटिन्यू. सॉरी. Akash, please continue. Okay. Now proceed to our next presenter with reference number 185, Binata Mahato. Are you there, ma'am? Binata Mahato, ma'am, are you there? नेक्स्ट अनाउंस करते जाओ आकाश सर. Okay. Now proceed to our next presenter with reference number 166, Lekha Sahu. Ma'am, are you there? Binata Mahato is there. Binata Mahato is there. Lekha Sahu. Okay. Okay. थैंक यू सो मच सर. मेरा नाम लेखा साहू है. मैं शोध छात्रा हूँ गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से. मेरा जो टॉपिक है वो है राजनांदगांव नगर की मलिन बस्तियों में निवासरत अनुसूचित जनजाति परिवारों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता एवं चुनौती, एक भौगोलिक अध्ययन. राजनांदगांव नगर की मलिन बस्तियों में निवासरत अनुसूचित जनजाति परिवारों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी स्थिति, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के साथ साथ बस्तियों की स्थानिक अवस्थिति, आधारभूत नागरिक सुविधाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से भी प्रभावित होती है. प्रस्तुत शोध पत्र में इन परिवारों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता तथा उनके समक्ष विद्यमान प्रमुख स्वास्थ्य पोषण संबंधी चुनौतियों का अध्ययन किया गया है. प्रस्तावना. स्वास्थ्य एवं पोषण किसी भी समाज की मानव क्षमता एवं जीवन गुणवत्ता के. मैडम आप संक्षिप्त में बताइए कि आपके इसका सारांश क्या है, क्योंकि अभी ध्यान रखना है. ओके मैम, थैंक यू. आपने क्या फाइंडिंग की, क्या मिला, क्या आपकी शोध प्रविधि थी? जी मैम, मैं शोध का उद्देश्य बता देती हूँ, उसके बाद चुनौतियाँ. जी मैम. मेरे शोध का उद्देश्य है राजनांदगांव की मलिन बस्तियों में निवासरत अनुसूचित जनजाति परिवारों में स्वास्थ्य जागरूकता के स्तर का अध्ययन करना. दूसरा, अनुसूचित जनजाति परिवारों की पोषण संबंधी स्थिति और उनके भोजन व्यवहार का विश्लेषण करना. तीसरा है अनुसूचित जनजाति परिवारों के समक्ष विद्यमान प्रमुख स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी चुनौतियों की पहचान करना. जी, इनकी जो चुनौतियां हैं वो इस प्रकार हैं. पहला, निम्न स्वास्थ्य जागरूकता. इनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोग निवारण एवं पोषण संबंधी पर्याप्त जानकारी का अभाव है. इसके कारण इनका जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है. दूसरा, आर्थिक स्थिति इनकी निम्न है क्योंकि इनकी जो आय है वो निम्न होने के कारण ये पौष्टिक आहार लेने में असमर्थ होते हैं. असंतुलित आहार ग्रहण करने के कारण इनमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, जिसके कारण जो है कुपोषण की समस्या बनी रहती है. और पेयजल, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ पेयजल की कमी, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं का अभाव होने के कारण संक्रमण और बहुत सारी समस्याओं से ये घिरे हुए होते हैं. स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, स्वास्थ्य संस्थाओं की दूरी, आवागमन की कठिनाई तथा आर्थिक बाधाएं समय पर उपचार एवं स्वास्थ्य परामर्श में बाधक बनती हैं. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के सीमित उपयोग से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. इनके लिए सुझाव है मलिन बस्तियों की स्थानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य इकाइयों एवं स्वास्थ्य सेवाओं को की पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए. दूसरा है जनजाति परिवारों में
स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता बढ़ाने हेतु स्थानिक परिस्थितियों के अनुरूप नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं शासकीय पोषण योजनाओं की पहुंच मलिन बस्तियों तक प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुरक्षित पेयजल, शौचालय, स्वच्छता जैसी आधारभूत सुविधाओं को के सुधार में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निम्न आय एवं रोजगार पर निर्भर परिवारों के लिए रोजगार, विकास कौशल एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैडम, वन क्वेश्चन माय साइड। हेलो लेखा सर, हेलो। यस सर। हाँ मैम, आपने ये बताया ना कि पोषण तत्व की कमी, तो मैं थोड़ा सा मेरी एक क्वेरी है इसमें कि आपने क्या मेथोलॉजी इसमें अपनाई कि उनका पोषण में कमी है? कोई मेथड अपनाया आपने इनको जानने के लिए? जी सर, मैं शोध छात्रा हूँ, यही मतलब मलिन बस्ती में ही जो रिसर्च है मेरा टॉपिक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि लोग जो है जैसे हम दाल है, हरी सब्जियों का उपयोग करते हैं जिससे हमको पोषण मिलता है, तो उन सबको मतलब खाने में जो है वो असमर्थ है, बहुत कम ही वो दाल का उपयोग करते हैं, सोयाबीन है, अंडे हैं जिससे उनको पोषण मिलता है, तो वो सबको खाने में थोड़ा सा कमी करते हैं जिससे उनको पोषण उतना नहीं मिल पाता है। नहीं मतलब मैम, आपने कोई इनका क्लिनिकल आशय ये है कि आपने कैलोरी काउंट या कुछ किया है क्या, मेथोडोलॉजी में क्या यूज किया है? क्योंकि उसी से पता चलता है ना कि क्या पोषण का स्तर कितना होना चाहिए एवरेज और उससे कितना नीचे है, कितना है। हैव यू यूज्ड एनी मेथड और नॉट? मैम मेरा भी ये चल रहा है टॉपिक, तो अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आपने इतना होते हुए भी इतना बनाया, अच्छी जी बात मैम। है। हाँ, जी थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट। Now we proceed to our next reference, that is 190 Ved Prakash. जी सर। So you can है continue. कोई अगर बोलना चाहे, है ना, उनको मौका Yes, sir. दीजिएगा। जिसका मान लीजिए कोई रेफरेंस नंबर लास्ट में रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो उनका नाम, डेजिग्नेशन, टाइटल मतलब चैट बॉक्स में लिखें ताकि हम सेशन में। जी, okay sir. Sir, you can continue. जी सर, मैं वेद प्रकाश, शोध छात्र, युवराज दत्त पीजी कॉलेज, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। सर मेरा टॉपिक है सर, माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत थारू जनजाति के विद्यार्थियों के आत्मबोध, शैक्षिक अभिरुचि एवं सृजनात्मकता का अध्ययन जनपद बलरामपुर के संदर्भ में। सर मैं एब्स्ट्रैक्ट सारांश पढ़ दे रहा हूँ सर। प्रस्तुत शोध पत्र जनपद बलरामपुर उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत थारू जनजाति के विद्यार्थियों के आत्मबोध, शैक्षिक अभिरुचि एवं सृजनात्मकता का अध्ययन प्रस्तुत करता है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति एवं सामाजिक परंपराएं हैं। विद्यालयी शिक्षा के औपचारिक परिवेश में इन विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक समायोजन किस प्रकार होता है, यह समझना शैक्षिक नीति निर्माण एवं शिक्षक प्रशिक्षण दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हुए स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर बलरामपुर जनपद के चयनित माध्यमिक विद्यालयों में थारू जनजाति के विद्यार्थियों का प्रतिदर्श लिया जाएगा। आत्मबोध, शैक्षिक अभिरुचि एवं सृजनात्मकता के मापन हेतु मानकीकृत मनोवैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग प्रस्तावित है। यह शोध पत्र विषय की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, समस्या कथन, उद्देश्य, परिकल्पनाएं, शोध विधि तथा आंकड़ा विश्लेषण हेतु प्रस्तावित प्रारूप प्रस्तुत करता है। क्षेत्रीय आंकड़ा संकलन के पश्चात इसे पूर्ण शोध प्रतिवेदन का रूप दिया जा सके। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष तराई क्षेत्र में जनजातीय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा समावेशी शिक्षा नीति के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। भारत विश्व की सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या वाले देशों में से एक है। संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं जनजातीय समुदायों में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एवं लखीमपुर खीरी जनपदों तथा नेपाल की तराई पट्टी में निवास करने वाला एक प्रमुख समुदाय है।
थारू समुदाय की अपनी विशिष्ट भाषा, बोली, वेशभूषा, लोक परंपराएं, कृषि आधारित जीवन शैली एवं सामुदायिक संगठन है, जो इसे मुख्य धारा के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से भिन्न बनाता है। शिक्षा किसी भी समुदाय के सर्वांगीण विकास का सबसे सशक्त माध्यम मानी जाती है, परंतु जनजातीय विद्यार्थियों के लिए विद्यालयी शिक्षा का औपचारिक परिवेश प्रायः भाषिक भिन्नता, सांस्कृतिक असमानता, आर्थिक विपन्नता तथा सामाजिक भेदभाव जैसी अनेक चुनौतियों से घिरा होता है। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी का आत्मबोध अर्थात स्वयं के प्रति उसकी धारणा, उसकी शैक्षिक अभिरुचि अर्थात अध्ययन के प्रति उसका सहज झुकाव तथा उसकी सृजनात्मकता अर्थात नवीन एवं मौलिक चिंतन की क्षमता, ये तीनों मनोवैज्ञानिक संरचनाएं उसके समग्र शैक्षिक विकास को गहराई से प्रभावित करती है। आत्मबोध व्यक्ति की स्वयं के विषय में समग्र धारणा है, जिसमें उसकी शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं शैक्षिक स्वयं छवि सम्मिलित होती है। कार्ल रोजर्स के मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार सकारात्मक आत्मबोध व्यक्ति के सम्मान, आत्मविश्वास एवं मनोवैज्ञानिक समायोजन का आधार होता है। शैक्षिक अभिरुचि विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता एवं अध्ययन के प्रति स्वाभाविक झुकाव को दर्शाती है, जो सीधे तौर पर शैक्षिक उपलब्धि से संबद्ध पाई गई है। सृजनात्मकता जिसे गिलफोर्ड एवं टारेंस जैसे मनोवैज्ञानिकों ने मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन एवं विस्तारीकरण जैसे घटकों के रूप में परिभाषित किया है। विद्यार्थी की समस्या समाधान क्षमता एवं नवाचार शक्ति का द्योतक है। वंचित एवं जनजातीय पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों में इन तीनों मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के विकास का स्तर सामान्य विद्यार्थियों से भिन्न हो सकता है, क्योंकि उनका सामाजिकरण, भाषिक अनुभव तथा विद्यालयी परिवेश के साथ सामंजस्य अपेक्षाकृत भिन्न परिस्थितियों में होता है। अतः यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि बलरामपुर जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत थारू जनजाति के विद्यार्थियों के आत्मबोध, शैक्षिक अभिरुचि एवं सृजनात्मकता का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाए, ताकि उनकी वास्तविक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझते हुए उपयुक्त शैक्षिक हस्तक्षेप विकसित किया जा सके। धन्यवाद सर। Thank you so much, sir. Any queries? नो, अच्छा प्रयास है वेद प्रकाश जी का। हाँ, अच्छा है। Now we proceed to our next presenter with reference number 182, Aradhana Tiwari. Are you there, ma'am? Okay. Now we proceed to our next one with reference number 185. Yes, sir, I'm there. Aradhana Tiwari, ma'am. Okay, you can continue, ma'am. Sir, my slides are visible? No. Sir, my slides are visible? Now it's visible. Yes, sir. Okay. Good evening, respected dignitaries, esteemed judges, and fellow participants. I am Aradhana Tiwari, research scholar, Department of Botany, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. My topic of presentation is sustainable land management in mining affected tribal regions via biochar-based reclamation of coal mine spoil. I am working under the supervision of Dr. Sudhir Kumar Pandey, sir, Associate Professor, Department of Botany, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. So as we all know that mining industry plays an important role in our economy, and it has an important contribution of 2.5% to the GDP, and the three major coal producing states are Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh. The Korba district of Chhattisgarh is renowned as a power capital, and the Gewra open cast mine is the largest open cast mine in Asia. However, these mining activities are associated with different types of environmental challenges. It results into coal mine spoil that is characterized by high rock fragments, high bulk density, low moisture content, unfavorable pH, and poor nutrient condition, in which establishment of vegetation is difficult task. Therefore, Chhattisgarh is continuously witnessing a tribal revolt against mining activity because of its devastating impact on vegetation, vegetation cover, soil, biodiversity, and human health.
So to overcome these challenges, the objective of my research is to explore the application of invasive plant-derived biochar for coal mine spoil reclamation. It involves physico-chemical characterization of coal mine spoil, biochar preparation and its characterization, then the assessment of effectiveness of biochar for reclaiming the coal mine spoil. And before we proceed, let's first understand what actually biochar is. Biochar is a solid material formed by pyrolysis of biomass in an oxygen-limited environment. It is rich in carbon and it acts as a sponge to hold the water, nutrients, and other materials. It contains the functional group that also helps to absorb the contaminants present in the soil. So moving forward to the materials and method, soil samples were collected from the mining affected area from the depth of 20 centimeter, which represent the topsoil layer. Then the samples were characterized for different parameters. This slide shows the sampling site from where the samples were collected. And thus, and the result of physiochemical characterization shows that the soil sample was sandy in nature with a high sand content of 67%. Moisture content, water holding capacity was very low. Bulk density was reported to be 1.56. pH was acidic, and the low value of NPK was reported, nitrogen, phosphorus, and potassium. Similarly, the dehydrogenase activity, which represent the microbial population in soil, was very low, and all this value represent that mine spoil is highly degraded and required a sustainable method for reclamation. So for that purpose, we did production of biochar. Biochar, for this, we harvested the plant material and dried it. Once dried, it was ground into fine powder, and then the material was subjected to pyrolysis inside a muffled furnace at 300, 500, 700 degrees Celsius for a residence time of 30 minutes. This slide summarizes all the major steps involved in the biochar formation, that is the proximate analysis, ultimate analysis, and the surface analysis. And the result of characterization shows that the moisture content in biochar is 2.33, fixed carbon is 18.8, ash content was 50.5, and the result of ultimate analysis shows that the carbon content in a biochar was 24.7, showing that biochar is rich in carbon content. Similarly, the SAM analysis shows the porous structure of biochar that will act as a sponge to hold the water and nutrients. The FTR analysis shows that biochar is rich in different functional groups like alcohol, amine salt, anhydride, conjugated alkene, and halo groups. So, hello, sir, am I audible? Yes, yes, sir. So it has become that a mine spoil is highly degraded and requires a sustainable method. So to evaluate the efficacy of the biochar that we have formed, a pot experiment was performed. Biochar was applied at 3 different treatment doses of 0%, that is control, 1%, 3%, and 5%. And then it was characterized for different parameters. Now that we have discussed the framework of the experiment, let's understand the extent to which biochar contributed to improvement of different parameters. This is the representative plot showing the growth of Albizia procera at different biochar treatment percentage. A result of the experiment, there was significant increase in the moisture content from 6.32 in untreated soil to 8.1 at 5% of biochar treatment. Similarly, there was increase in water holding capacity, and this improvement is a direct result of the porous structure of the biochar. Mine spoil was sandy in nature and cannot hold much water, but biochar with a porous structure works like a sponge to retain the water. Bulk density decreased from 1.56 to 1.48 at 5% treatment because of the loosening of the compact mine spoil. The pH of the mine spoil improved from 5.6 to 6.5,
poor due to the alkaline nature of biochar, and similarly the cation exchange capacity almost get doubled from 4.12 to 9.5 at 5% biochar treatment. As this shows that the improved the nutrient condition of the mine soil. Organic carbon improved from 0.22 to 1.85 because biochar itself is rich in carbon. Similarly, the nitrogen, phosphorus, and potassium content also increase, and the result shows that improved cation exchange capacity. And at last, the dehydrogenase activity rose significantly from 0.12 to 1.3 at 5% treatment of biochar. This indicates that the microbial activity in the mine soil has improved, and overall the biological health of the soil has improved. So overall result clearly demonstrate that 5% application rate of biochar has significant improvement on different soil parameters. Now let's understand its impact on different plant growth parameters. Moving to the plant growth parameters, the graph shows that increase in shoot length, shoot weight, and root weight. This can be attributed to improvement in physical, chemical, and biological properties of the soil. And as the biochar has provided a favorable environment for the plant growth. Moving forward to the future perspective, Chhattisgarh is a mineral-rich state and has a huge potential for energy security. However, I strongly believe that development should never come at the cost of environment. In this context, the finding of this research suggests that the potential of invasive plant for coal mine spoil reclamation, and so this research can pave a path for a sustainable development where economic growth and environmental preservation can go hand in hand. And this is my publication on the same topic. And these are some of other publication. Now I would like to acknowledge my supervisor, Dr. Sudhir Kumar Pandey sir, for his constant guidance and support. Department of Botany, Gurghasidas Vishwavidyalaya, and also to the DST inspired Department of Science and Technology for providing me this prestigious fellowship. Thank you all. Wow, very Thank you nice so much, ma'am. presentation, madam. Very nice, very nice. Madam, please, your name? Hello. Aradhana Tiwari. Hello. Ma'am, am I audible? Your full name Aradhana Tiwari. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Aradhana Tiwari. Okay, okay. Thank you. Very nice presentation. Okay. अच्छा प्रेजेंटेशन है आपका, बहुत बढ़िया है। और आपने बहुत माइनिंग एरियाज में आपने कैसे पोल्यूशन को और इसको कम किया जाए, इस पे आपने अच्छा अध्ययन है आपका। Scientifically justified. Thank you, sir. Okay, thank you. Oh, shall we proceed to our next presenter? Okay. Now with the reference number 199, Rashmi Shukla. Are you there, ma'am? Madam Mahato is also there. Can Yes, yes, sir. Am I audible, sir? Yes, ma'am, you are audible. Am I audible, Yes, sir? Rashmi. Yes, ma'am. Good evening to all respected person, like a chairperson, ma'am, distinguished guests, international guests, fellow researchers, academicians, and all the participants. Myself, Rashmi Shukla, assistant professor in Law and Legal Studies, State University, Indore. It's my privilege to present my thesis paper in a two-day international conference on multidisciplinary research in travel development, challenges, opportunity, and sustainable development.
My research paper title is Tribal Rights, Constitutional Provisions, and Legal Protections. First of all, I have I think I have less time, so I am concluding very in a short while. I'm explaining some constitutional provisions related to tribes and tribal areas and tribal communities. First of all, my research objective is to examine the major constitutional provisions relating to scheduled tribes. Questions is research questions are the what constitutional safeguards are available to scheduled tribes in India, and my methodology adopts doctrinal and ethical methodology. Primary source including the Constitution of India, constitutional amendments, statutes, and judicial decisions. Secondary sources include government reports, reports of National Commission for Scheduled Tribes, academic literature, and policy documents. Also, this is primarily employ qualitative analysis to examine the relationship in between constitutional provisions and practical protection of tribal interests. First of all, I am explaining in brief what are the constitutional provisions related to tribal protection. I am taking as Article 14. Article 14 is related to equality. Equality before law and equal protection of law. That means the substantive equality recognized that disadvantaged communities may require special measures to achieve genuine equality. Next one is Article 15(4) and 16(4) permit special measures for socially and educationally backward classes and reservation in public employment for backward classes inadequately represented in the state service. Next one is Article 46 to direct the state to promote the educational and economic interest to weaker sections, particularly scheduled castes and scheduled tribes, and to protect them for the social injustice and the exploitation. Also, next one is the fifth schedule and sixth schedule of the Constitution, which is related to the individual rights. It also recognizes the importance of community institutions. Many constitutional provisions are there, but specifically most of the effective, like the Article 164 is special provisions for tribal welfare ministry in a specific state. Article 244 administration of schedules at tribal areas. 275 is a grant for promotion of ST welfare and administration of scheduled area. Article 330 is reservation of seats in for ST in Lok Sabha. 332 is reservation for ST in state legislative assembly. Article 335 is a claim of STs in service in courts. Article 338A is National Commission for Scheduled Tribes. Article 339, Union Control and Scheduled Tribe and Welfare. Article 342 is Justification of Scheduled Tribes and 5th and 6th Schedule of. So many provisions are there in the Constitution and so many protections like provided under the Constitution. But as I said that my question is, and as first question is there a Constitution provisions are for the scheduled tribal? Yes, many provisions are included in the Constitution for the tribal area. But next question, second question is that how can Constitution tribal safeguard to be more effective and what are the principal implementation guides? Many Constitution provisions are there, but I think that this is my research that many is there many provisions, but what is the approach of these protection for the tribals? Like I belong to MP, so I'm taking as a MP state for my case study. Like what are the many steps have been taken in the MP state, and what are the new things done in MP? Recent a new initiative tribal community doing in MMP like a PESA implementation. PESA implementation is a major development like a PESA means a Panchayat Extension to Scheduled Area Act 1996, probably strongest provision. Is implemented in MP 2022 and the state has continued to build institution around it. Also, recently reporting indicate that the implementation across 88 tribal blocks framework given Gram Sabha an important role to matter concerning customary practices and local resources and community governance. Also, in July 2025, Government of MP, the Ministry of Panchayat Raj and Indira Gandhi National Tribal University extended to MOU establishment center of excellence of peace. Also, it proposed a work like the documenting tribal customary practices, developing model PESA, Gram Sabhas, preparing training material in tribal languages, documenting best practices, and strengthening knowledge about the PESA implementation.
Also, is a traditional law connected with the traditional knowledge. Tribal education is in December 2025, and Madhya Pradesh announced 3 year push to expand tribal education infrastructure, like expansion of tribal school, smart classroom, laboratories, libraries, Sanjeevani School, Eklavya School, Mata Sabri Girls Education Complexes, boy model residential schools, and facilitating tribal development. This is particularly relevant to my questions like recognizing the tribal potential. Also, art center are developed like 86 tribal development law continue to establish an art center in MP. Also, the preservation of 1800 tribal heritage sites. Like in 2025, Madhya Pradesh government decided to conserve approximately 1800 tribal sites and religious sites. This is very significant because the government moved away from a proposed corridor development model and state of emphasis preserving its existing tribal area places. Next is a good planning for the GI protection. Another interesting development is in the effort to strengthen the economic value of the tribal art, like gold painting from Dindori has received a GI tag, while processing has been reported an additional private product, including G gold cultural product craft. This is exactly type of initiative connects with the tribal culture to intellectual property to market to income and the cultural provision. Tribal women tourism entrepreneurship is also very effectively initiative in MP like 2025, the development of tribal women-run cafeterias as tourism destination including like Kashmiri, Mandu, Kanakishli, Page and Bardhagar. These facilities are intended to operate by women for tribal self-help groups in creating livelihood opportunities by showing tribal culture. This is very good example for the recognized tribal potential and arguments. Like Vandhan and tribal entrepreneurship, Madhya Pradesh has also had substantial participation in Vandhan-based tribal enterprises development and almost 126 Vandhan Vikas Kendras involving approximately 37,860 members in MP. This is important because a minor forest produce can be moved from raw forest to produce value-added products to brand, to market, and to tribal income. This is the fit for my concept like a tribal potential for development. PM Janman, like a particularly vulnerable tribal group, it's a particularly vulnerable tribal group. Madhya Pradesh is also benefiting from the Pradhan Mantri Janjati LYS Adhyayan. This is a program that focuses on the basic facility like housing, giving further education, health, nutrition, roads, telecommunication, electrification, and sustainable livelihood opportunities. Like all over the MP is doing certain, but still many of things I'm giving a positive thing, but still I'm trying to suggest something like this is it's called experiment research gap. Like this is why findings like all many things are in safeguard, constitutional safeguard for example, but real question is how can we these rights move from the constitutional text to actual implementation of the belief and convert to you. Some suggestions are like my point of view, like create a constitutional tribal implementer authority. Like a dedicated institutional mechanism could be monitor implementation of the fifth schedule phase forest act and law protection laws, rehabilitation provisions. Gram Sabha is playing a central role, would be playing a central role. This would implement should be follow the state government to district administration to tribal development blocks to Gram Sabha and the community. The Gram Sabha should become the primary institution for addition. Next, PESA compliance mandatory. This is a major development project in scheduled areas should have a PESA compliance certificate because before implementation authority should demonstrate was the Gram Sabha properly formed, was information is like issued by community, and many more. Central create a tribal creates a rights dashboard. Like this would be excellent practical information. A state level digital dashboard could display district wise, like what forest rights claims, approved or pending, land cases, alienation or restoration. Many more things are would be applicable. Target to progress, delay, and responsible authority. And from my side, just I have a law background, so I want to do a certain legal aid center. Like the rights are meaningless if people cannot enforce them. Every tribal development law should have a tribal legal assistance center, like providing assistance concerning legal disputes, forest rights, displacement compensation, domestic property rights, welfare benefits, and transportation constitutional rights. But many more things are I find out in my research that it would be implement that we can protect that side. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. This is my
थैंक्स मैडम। नेक्स्ट कौन है Yes. देखिए। Okay, now और we proceed to our कितने बच गए अब? Ma'am, last two we are having. Yes. Now we'll proceed to our next presenter, Archana, with reference number 205. Archana Siddhika from Yes, sir. Assam. Yes, sir. Are you there, ma'am? Yes, sir. Yeah. Am I You can audible? continue, ma'am. Yes, yes, ma'am. Yes. You can start it, ma'am. Okay. So good afternoon, everyone. I'm Archana Siddhika, a research scholar from Department of Geography and Resource Management from Mizoram University. And today, is it visible? Yes, ma'am. Visible. And today, I'm going to present my study on living condition and basic amenities among T-tribe household in Upper. So these are my outline. So tea tribes communities are an important part of Assam, and they have been connected with the tea industry for many generations. When we talk about their living conditions, we also need to look at basic things like housing, drinking water, sanitation, electricity, and other household facilities. So through this study, I tried to understand the living conditions of tea tribe households and their access to basic amenities in Upper Assam. So I have two main objectives. First, I wanted to assess the overall living conditions of T-tribe household in Upper Assam. Second, I wanted to examine the availability and accessibility of basic household amenities. For my study, I selected 8 districts of Upper Assam. From each district, I selected one village. So altogether, I covered 8 villages. And from every villages, I surveyed 50 households. So my total sample size is 400 households. So for this study, I use mainly quantitative household survey, and my study is mainly based on primary data, which I collected through the field survey, and I use random sampling for selecting the household. So before discussing the living conditions, I would like to give a short demographic profile of the respondents. Most of the respondents are from the 21 to 40 years age group. Female respondents are higher than male respondents, and in terms of family size, most of the surveyed households have small and medium-sized families. So here we can see the housing condition of the surveyed households. Kacha and semi-pakka and pakka houses are all present, and the difference between these categories is not very large. Another part, another important thing I found is that the tea garden authorities provide housing to many of the surveyed households. So here I tried to look at family size together with the number of rooms available. We can clearly see that room houses are the most common. Medium-sized families are also mainly found in two-room houses. So when family size increases but the number of rooms remain limited, there may be more pressure on the available living space. And coming to water and sanitation, tube wells are the main source of drinking water used by around 63% of household, but only 17% of household use water filters, which is quite low. In case of sanitation, around 52% have kacha sanitation facilities, so basic facilities are available. But when we look quality, there is still need for improvement.
Now, coming to the household amenities, electricity shows a very positive picture. Almost 100% of the surveyed household have access to electricity. However, almost half of the households have arranged their electricity connection themselves, while many others receive them through the government provision. I also found that around 78% of households have a separate kitchen, and so and household. Now coming to the household assets. When I looked at the household assets, mobile phones and bicycles are the most common. Mobile phones are available in more than 90% of households, but and bicycles in 82%. But when we look at more expensive assets like two-wheelers, refrigerators, and computers, the number become much lower. So basic assets are commonly owned, but ownership of more expensive assets is still limited. So coming to the economic condition, permanent employment is common among the respondents, but when we look at household income, most households are earning between 5 to 10,000 per month. Very few households are earning above 10,000. So even though permanent employment is common, household income is still concentrated within this range. Now, education and health status. For education, I found that primary education is the most common level. Around 64% of respondents have primary education, while around 28% are illiterate. When we move to the secondary and tertiary education, the number become much lower. For health, most of the respondents did not report any major illness during my survey, and only 1.5% reported a major illness. So if I look at my all results together, I can see both positive changes and some remaining gaps as well. Electricity access is almost universal, and which is very positive findings. Mobile phones and bicycles are also commonly owned, but at the same time, there are still some issues with housing, sanitation, and drinking water practices. Water filter use is very low, and kacha sanitation is still common. I also found that household income is mainly concentrated between 5 to 10, and higher education is very limited. So this from this result, I can say that some basic facilities have improved, but improvement is not the same in every aspect of their living conditions. So based on my findings, I think there is a need to improve housing, safe drinking water, sanitation facilities, and more attention should also be given to education and livelihood of opportunities. And finally, government and welfare programs should properly reach the households and actually need them. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. You tried best. Now I would like to call upon our last presentation of this session. Um, am I audible? Yes. Yes, sir. Yes, yes, yes. Yes, you are audible. Okay. Now our next presenter is Binata Mehto. Ma'am, are you there? Hello. Yes, sir. Yes, yes, she's there. Yes, sir. You can continue. Hello. You can start. Yes, sir. Ma'am, you can start your presentation. Sir, am I audible? Yes. Yes, ma'am, you're audible. Yes, you are. Good afternoon, respected sir and ma'am. Yes, sir. So Yes, continue, please. due to network connectivity
I cannot. यस यू आर ऑडिबल। नहीं आप जितना बन रहा है उतना बता दीजिए, जितना हो रहा है, आप पूरा मत समराइज कर दीजिए। नट शेल में आपका क्या है पर्पस, हाँ समराइज कर दीजिए। आपने बहुत देर से, आप बहु प्रतीक्षित वो हैं भाई बिन महतो जी, बहुत देर से वेट कर रहे हैं आपका। हाँ समझ गए, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं तो आप प्रेजेंटेशन दे, मतलब वो शो कर दीजिए। बता दीजिए, वी कैन हियर यू। Topic is indigenous practices of forest community for sustainable ecosystem management with reference to Purulia district, West Bengal. Background of the study: indigenous Simply tell the problem and your findings, your suggestion, whatever your proposition is there, please let us know. Please summarize everything. Yes. हाँ मैम, मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। आकाश जी, उनका प्रेजेंटेशन आपके पास भी आया है क्या? आया है तो आप शो कर दीजिए, वो एक ही मतलब है, एटलीस्ट उनकी सहभागिता हो जाएगी जी। अगर आपके पास भी ऐसा सिस्टम है, आया हो तो, क्योंकि इतने कम समय में इतने लोगों को गैदर करना, साधुवाद आपको, आपके महाविद्यालय को, आपके नेतृत्व को। Educational implication the indigenous communities as partner rather than only beneficiaries of conservation programs, document and transmit valuable traditional ecological knowledge with community consent, integrated relevant local knowledge into forest management planning, and strengthen participatory conservation and community-based decision making in our modern education system, and climate resilience practices to promote climate resilient livelihood while protecting ecological resources and improve coordination among communities, government institutions, researchers, and civil societies. Indigenous practices represent an important resource for sustainable ecosystem management. Their value extends beyond forest conservation to livelihood, biodiversity, culture, and climate resilience. A locally grounded approach that combines indigenous knowledge, scientific evidence, and supportive policy can strengthen conservation outcomes. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. चलिए, थैंक यू। Okay. आपने प्रयास किया। आप कहाँ से बात कर रही हैं? असम से? कहाँ से बोल रही हैं? असम। हाँ, इतनी दूर से, पूरा प्रदेश बाढ़ में डूबा हुआ है। आपका इतना कर रहे हैं, प्रयास सराहनीय है आपका। हाँ। आपके डिपार्टमेंट में क्या है, कुछ प्रॉब्लम है रेंज का? हेलो विनीता मैम, डिपार्टमेंट ऑफ सर कुछ पूछ रहे हैं? मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर हूँ। अच्छा, वेस्ट बंगाल। ओके, Shall we proceed, ma'am, for conclusion? Dr. Sheila, madam, would you like to make some remarks about this session? हाँ, इस सेशन में टोटल 13 प्रश्न पत्र, 13 मतलब लोगों ने अपनी सहभागिता दी है, और उसमें से कुछ का तो बहुत ही अच्छा रहा है, खासकर जिन्होंने आर्ट के संबंध में बात किया है, निमाड़ रीजन का, रिम्पा दास का, और जिन्होंने बताया है कि इन्होंने रिमोट सेंसिंग और जीआईएस को कैसे
यूज करते हुए वहां के क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाए। तो दूसरे 2 लोगों ने ज्वाइंट किया था, रिम्पा दास और एक और कोई है, 2 लोगों ने। तो उसमें दूसरी वक्ता ने बहुत अच्छे से उसको जीआई टैग के बारे में दीपक जी ने, डॉक्टर दीपक सागर ने कहा था, तो वो वहां तक बात जो है यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग जीआईएस से जीआई टैग तक पहुंची बात। और बाकी निमाड़ रीजन के भी और एक और व्यक्ति, एक और उन्होंने भी बताया, अजीत कुमार ने, नहीं अजीत कुमार की तो बड़ी बात माननी पड़ेगी भाई कि वो कहाँ है कि वो पैदल पैदल ही बोलते चले जा रहे हैं। मतलब वो चलते चलते उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। याद है एक व्यक्ति चल रहे थे, कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो ये आपने बैठे हुए पैदल चलने सबको जोड़ दिया। इसीलिए आपको बहुत बहुत क्रेडिट जाता है सर, आपके गुप्ता जी आपको, कि आपने सबको जोड़ा। और एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर के एजुकेशन से लेकर के सबको आपने इस पेपर में जोड़ा है। और कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये आपका 2 दिवसीय जो इतने कम समय में नरेंद्र जी ने मुझे बताया था कि कैसे कैसे ये इतने कम समय में अचानक से सब हुआ, और आपने वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेट कर लिया। और इस वर्ष का थीम तो सबको पता होगा क्या है कि बताऊं मैं इसे? जी। इस वर्ष का जो थीम है वो है ऑनरिंग इंडिजिनियस मिडवाइफ्स, सेफगार्डिंग लाइफ एंड वेलबीइंग। मतलब दाइयों का दिवस, जिन्होंने जो बहुत ज्यादा विश्व में स्वास्थ्य और परंपराओं की रक्षा करती हैं, तो उनकी रक्षा करना और मातृत्व शक्ति का वंदन करना। हम सबको मालूम है कि भारत में जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उसमें अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो एस्पिरेशनल विलेजेस या ब्लॉक्स हैं। छत्तीसगढ़ में 10 ऐसे एस्पिरेशनल विलेजेस या ब्लॉक्स हैं जो विकास की एस्पिरेशन में बैठे हुए हैं, यानी जहां आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों बहुत ज्यादा है। अगर हम इनको कम कर सकें, एजुकेशन भरपूर दें और इनको एंटरप्राइजिंग बनाएं, इनको हम कुछ उद्यमिता तक जोड़ें, तो हम निश्चित रूप से हमारा ये विश्व जो ट्राइबल दिवस है ये सही अर्थों में, और आपका कॉन्फ्रेंस सही अर्थों में साबित हो जाएगा कि एक मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. As serving as our chairperson, I would like to call upon Dr. Deepak sir, Associate Professor at Subhan Singh Jina University, Uttarakhand, to share some feedback and suggestion with us about this session. Thank you, Mr. Akash. Respected Chair, Dr. Sheila Sridhar, Ma'am, Moderator, Dr. Akash Kashyap, Reporter, Mr. M.N. Dubey, respected speakers, research scholars, faculty members, scholars, and all the participants, a warm welcome to you all. I am Dr. Deepak, Associate Professor, Department of Geography, Sobhan Singh Jina University, Almora, Uttarakhand. It is my pleasure to be with all to chair technical session 4 of this international conference on the tribal development, challenging opportunity and sustainable development. I sincerely appreciate Chaitanya Science and Arts College, Pamgarh, and the organization for bringing together researchers for different disciplines on such as a important and relevant themes. As we come to the end of technical session 4, I would like to sincerely thank all of participants for sharing their valuable research and ideas with us. The session covered a wide range of important areas, including the tribal development, health, indigenous knowledge, entrepreneurship, technology, and social and economic inclusion. The diversity of their presentation truly reflect the multidisciplinary spirit of the conference. I appreciate the effects of all researchers and participation
for the making the session of informative and energetic. I also thank our coach, chairperson, moderator, and reporters for the valuable supports. I hope the ideas and discussion shared today will encourage further researcher collaborations and practical effects towards the inclusive and sustainable development of tribal communities. With this, I formally conclude the technical session 4. Thank you all of your valuable participation, and I wish you pleasant and enriching continuation of the conference. Thank you. Thank you all. Thank you so much, sir. थैंक यू दीपक सर। हेलो दीपक सर, सुन पा रहे हैं? थैंक यू सर। नरेंद्र नाथ सर, थैंक आपने यू। बहुत बिजी शेड्यूल से जुड़े हैं, मुझे पता है हेलो अपना जो शेड्यूल था। और सर एक्चुअली अभी मैं बाहर ही बैठा हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम भी है और किसी से रूम लिया है कि मैं थोड़ा देर यहाँ बैठूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह जुड़े रहेंगे सर, यही उम्मीद है। जी। अगर और सर और कोई पार्टिसिपेंट्स या शीला मैडम का कंक्लूजन फीडबैक? हाँ, मैं हूँ। नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था सर, बहुत आपके कॉलेज को देखने की बड़ी इच्छा है मेरी। आप आइए, बिल्कुल स्वागत है। हेलो सर। सर मैं लीना कुमारी, मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ। मैं हाँ बिल्कुल प्रेजेंट करें, ऐसा कोई Sure, sure. नॉर्मल ही नहीं, बिल्कुल अगर कोई जो भी छूट रहा है बिल्कुल करिए। जी सर। सर आप सबों को मेरा नमस्कार सर। मैं लीना कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जीएलए कॉलेज, पलामू, झारखंड। मेरा शोध शीर्षक है झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय विकास नीतियाँ और सरकारी योजनाएं। बहुत संक्षिप्त में भी मैं देना चाह रही हूँ सर कि भारत के जो सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर में विशिष्ट पहचान देने में आदिवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आदिवासी समुदाय को विभिन्न विद्वानों ने ऐसे तो विभिन्न नाम दिए हैं, उसमें हमारे जो मार्टिन एवं रिजले जी ने इन्हें आदिवासी कहा, और हटन जी ने इसे आदिम जनजाति, और धुरिये ने इसे पिछड़े हुए हिंदू, और गांधी जी ने इन्हें गिरिजन कहा। लेकिन हमारे भारतीय संविधान ने इन्हें अनुसूचित जनजाति नाम से सूचीबद्ध किया। तो भारतीय स्वतंत्रता के बाद सरकार ने आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अनेक कदम उठाए। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का 28वां राज्य, जो कि खनिज भंडार व जनजाति बहुल राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या करीब 86 लाख थी। तो ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ के जो आदिवासी जनजाति समुदाय के जो लोग हैं, उनके लिए सरकार ने काफ़ी संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान किए और उनके लिए नीतियां निर्माण की हैं। उसमें 5वीं अनुसूची एवं पेशा अधिनियम है। तो संविधान के 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र जो स्थानीय स्वशासन को मजबूती करने के लिए पेशा कानून लागू किए गए, और पेशा कानून के द्वारा जल, जंगल और जमीन पर ग्राम सभा के अधिकार सुरक्षित किए गए। सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट, आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए सीएनटी एक्ट 1908 और एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने की नीति भी अपनाई गई, ताकि आदिवासियों की जो जमीन है स्वयं अपने पास रह सके। वन अधिकार अधिनियम 2006, झारखंड में इस अधिनियम द्वारा वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों को एवं पारंपरिक वनवासियों को अपनी आजीविका एवं भूमि पर अधिकार दिया गया है, जो ब्रिटिश सरकार इस पर पूर्व में प्रतिबंध लगाए थे। साथ में आर्थिक और कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई गई हैं। उसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, झारखंड में केंद्र और राज्य सरकार ने अति पिछड़ी जनजातियों के गांवों में पक्के मकान, सड़क, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए व्यापक अभियान चलाया है। और दूसरा है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना व्यवस्था, झारखंड में गरीब आदिवासी और वंचित परिवारों को रियायती दरों पर वस्त्र उपलब्ध कराने की भी योजना है।
तीसरा है आदिवासी उपयोजना व्यवस्था। झारखंड में राज्य के कुल बजट का एक निश्चित हिस्सा अनुसूचित जनजाति के अनुपात में उनके विकास के लिए आरक्षित किया गया है। साथ ही साथ आदिवासियों के लिए जो आजीविका, स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की, उसमें है वन धन विकास केंद्र, अर्थात कि आदिवासियों द्वारा जंगलों से संग्रहित लघु वन उपज के प्रसंस्करण एवं सही मूल्य के लिए केंद्र खोले गए हैं ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। आगे है रियायती ऋण और स्वरोजगार। क्योंकि झारखंड में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से आदिवासी महिला एवं युवाओं को आजीविका, शिक्षा एवं सूक्ष्म ऋण योजना से जोड़ा गया है और इससे उनकी स्थिति को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया गया। आगे सांस्कृतिक संरक्षण। झारखंड राज्य में सोहराय एवं हूल दिवस जैसे पारंपरिक एवं ऐतिहासिक पर्वों पर अवकाश एवं सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि झारखंड में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2008 के तहत इसका भी प्रावधान किया गया है। विकास परियोजना, खनन, उद्योग आदि से विस्थापित आदिवासी परिवारों के समस्या एवं समाधान हेतु उनके उचित मुआवजा, आजीविका के साधन, बुनियादी सुविधाओं देने की नीति बनाई गई है। अतः पुनर्वास व्यवस्था में उनके पुनर्वास स्थलों में पेयजल, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा आदि बुनियादी ढांचा को व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास किया गया है। अतः फिर भी इनके बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं जिनको हमारे आदिवासी समुदाय को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज भी बड़े पैमाने पर झारखंड में औद्योगिकरण से आदिवासी परिवार को उचित मुआवजा या पुनर्वास नहीं हो पाया है, जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन काफी प्रभावित हुई है। अतः इस दिशा में संघर्ष की स्थिति भी पैदा हुई है। चुनौतियों में ये भी देखा गया है कि झारखंड में आदिवासियों के विकास और नीतियों के क्रियान्वयन में कुछ ऐसे कारण हैं जिसको अधिक से देखा जा सकता है कि उन चुनौतियों का सामना वो किस प्रकार कर रहे हैं। पहला है शिक्षा और कौशल विकास की कमी। तो आदिवासी महिला में साक्षरता दर कम है। दूसरा है ये भी देखा जाता है कि झारखंड के कुछ दूर दराज क्षेत्र हैं जहाँ स्कूलों की भी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और स्थानीय भाषा में पठन पाठन पर्याप्त रूप से नहीं है। कौशल विकास योजना का जमीनी स्तर भी लागू नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण हमारे आदिवासी समुदायों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जबकि सरकार ने ये योजनाएं बनाई हैं, लेकिन ये क्षेत्रीय स्तर पर कुछ कमियां रह जाती हैं। कहीं ना कहीं ये अशिक्षा है, अंधविश्वास है, गरीबी है। इनके कारण वो जो पर्याप्त सरकारी की जो योजनाएं हैं वहां तक उनको पूरी तरह से पहुंच नहीं पाते हैं। यही कारण है कि ये स्थिति रोजगार भी पर्याप्त रूप से सुलभ नहीं हो पाता है, जिसके कारण वे दूसरे क्षेत्र में पलायन कर जाते हैं और विशेषकर महिलाएं इस क्षेत्र में कुपोषण का भी शिकार हो जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा भी नहीं हो पाती है, जिसका इस पर प्रभाव हमारे सरकारी योजना पर भी पड़ता है। जबकि सरकार सरकारी योजना बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं जिसके कारण वो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे ये समुदाय ढंग से नहीं कर पाते हैं। अतः आज आवश्यकता है बहुत कि महिला हो चाहे पुरुष हो, आदिवासी समुदाय को अपने अधिकार के लिए अर्थात जो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उनका वो अधिक से अधिक प्राप्त होने के लिए उनको खुद जागरूक भी होना है और कुछ कहीं ना कहीं उनको इनके लिए उसको कुछ शिक्षित होना होगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं क्षेत्र में अशिक्षित होती हैं जिसके कारण सरकारी योजना का लाभ वो नहीं ले पाती हैं, क्योंकि सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि वो अपनी जो हक है उस हक को लेने के लिए वो उतना बोल्ड नहीं हो पाती हैं कि अपने हक को क्षेत्र में प्राप्त कर सके। अतः आज हम देखते हैं कि झारखंड सही मायने में सरकारी योजनाओं का पर्याप्त रूप से सरकार ने पूरा ध्यान दिया है, लेकिन हमारे क्षेत्र की जो आदिवासी समुदाय की जो शिक्षित तो हैं, लेकिन कुछ बहुधा सुदूर क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो शिक्षा से थोड़ा
पर्याप्त शिक्षित उतना नहीं है, जिसके कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं हो पाया है, जिसके कारण उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः इस क्षेत्र में उन्हें आगे आने की आवश्यकता है, उससे जागरूक होने की आवश्यकता है और उसको अपने हक अधिकार लेने के लिए आगे आना होगा। और सरकार पूरा प्रयास कर रही है और सतत इसके साथ साथ ये आदिवासी समुदाय के जो सतत विकास है, तो ये भी देखा जाता है कि सरकार के पूरे प्रयास के बावजूद भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, जंगल के जो क्षेत्र हैं, अभी भी पर्याप्त विकास नहीं हो पाए हैं। उस क्षेत्रों में सरकारी योजना को त्वरित गति से प्राप्ति होने के लिए कुछ सरकार को और भी सकारात्मक रूप से कदम उठाने चाहिए, ताकि उन अशिक्षित और गरीब क्षेत्र में पूर्ण रूप से उनका वो योजना पहुंच सके और अधिक से अधिक हमारे गरीब अशिक्षित आदिवासी समुदाय के लोगों तक वो योजनाएं पहुंच सके। तो ये झारखंड के ग्रामीण आदिवासियों के विकास नीति के तहत सतत विकास का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करते हुए जनजातीय समुदायों की आजीविका, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का विकास करना, ताकि सांस्कृतिक पहचान के साथ हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। ऐसा इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने झारखंड के सभी और विश्व के सभी आदिवासी समुदायों से मेरा ये है सर कि हमारा जो है शिक्षा और जागरूकता और सकारात्मक सोच ही हमें विकसित भारत की लक्ष्य तक हमको पहुंचा सकता है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मैम। जी बहुत बधाई। आपने लीना कुमारी जी, आपने बहुत अच्छा बोला और आपने विकसित भारत तक की बात कह दी है, तो निश्चित रूप से हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। पूरा भारत आप इसकी इस ओर प्रयासरत है। और गुप्ता जी, आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया आप लोगों के साथ सम्मिलित होने के लिए, तो मैं बहुत आभारी हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबको बधाई देती हूँ कि आपने यहाँ बोला और एक प्लेटफॉर्म आपने दिया सर, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर। सर की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सर माइक अनम्यूट करिए जी। क्षमा करेंगे। बहुत आभार मैडम, आपने बहुत समय दिया, हमारे प्रत्येक वक्ता को आपने इतने ध्यान से सुना और इतना सुंदर मार्गदर्शन दिया और बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छा अवसर था कि विश्व आदिवासी दिवस पर हम सब जुड़ सके। डायवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ आवर नेचर। और जो विकसित भारत तक मैडम ने बात किया, अल्टीमेटली ये वो भारत है which is going to contribute in the global society, globalization, जो वसुधैव कुटुंबकम है, उससे आगे का कोई सोच नहीं है। और इस तरह के जो क्योंकि जो we are ancient tribals, we are all tribals, और ये जो सबके वेलफेयर की बात है, इसमें कोलैबोरेशन है, इंटीग्रेशन है, डाइवर्सिटी है, और जो लिमिटेशन है सरकार के ऊपर अगर हम पूरा निर्भर रहेंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं सीमाएं होंगी। लेकिन हम सामान्य जन की कोई सीमा नहीं है। हमारे अंदर अनंत शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए बच्चों ने बताया कि हमारे पास इतने संवेदनशील टूल्स हैं, AI है, GIS है, इतने सेंसर रिलेटेड। तो हमारी जो लिमिटेशंस है, हम हर आदमी तक पहुंच सकते हैं, उनके विचारों को, उनकी परिस्थितियों को हम बदलने की क्षमता रखते हैं। So this is the great era in which all we are living. The important is that we should be connected, then we are really going to make a better world. तो मैं अब नरेंद्र सर से कहूँगा कि आगे इस आयोजन को बढ़ाएं। उनका बहुत सारे लोग इसमें जुड़े थे, डॉक्टर अमित चंद्रा जी, नरेंद्र जी, अथक परिश्रम, और सबसे ज्यादा हमारे जो सहयोगी हैं, जो मध्य प्रदेश के हमारे जो सहयोगी हैं,
अपूर्व, very wonderful collaborators. अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. Over to नरेंद्र जी. थैंक यू सर. क्या मैं समराइज प्रोग्राम रिपोर्ट पेश करने का मौका मिले तो आकाश सर? Yes, you can briefly present then invite Amit. क्योंकि मैंने ये देखा लगभग 2000 पार्टिसिपेंट्स आए गए, कई लोग जुड़े रहे, लेकिन लास्ट जो अभी दिख रहे हैं 35 प्लस 50 प्लस, this is the our very lucky and their 2-day international conference. So actually, first of all, today international conference on the tribal development challenges and opportunity and sustainable development. This program organized by Chaitanya Science and Arts College, Pamgarh, Chhattisgarh, India, autonomous institution, and also collaboration with Madhya Pradesh, Chhattisgarh Economic Association and Social Science Management. मेरा आवाज इको हो रहा है क्या? हेलो, अभी ठीक है? हाँ, हम हो रहा था तो मैंने भी अपना माइक म्यूट कर लिया है सब. बोलिए बोलिए. Am I audible, Akash sir? Yes, you are. A very warm and respectful greeting to everyone on the occasion World Tribal Day 2026, and also we celebrating the 2-day international conference with collaboration Madhya Pradesh Chhattisgarh Economic Association and also International Social Science and Management Welfare Association, India, and also we are very happy to say you this conference is not merely an academic gathering. It is an opportunity to listen, understand, discuss, and rethink the future of tribal communities through the perspective of development, dignity, culture, knowledge, and sustainability. So I am very happy. It gives me immense pleasure to share a brief summary of the important tribal conference. And this conference provides a valuable platform for bringing together researchers, academicians, policymakers, participants, and all research scholars and respected faculty members in then 300 institutions more than. And the participation of such a large and diverse group reflects the growing academic and social interest in the development of empowerment of tribal communities. This conference received approximately 150 research papers and approx 200 plus abstracts and covering a wide range of important issues and related to tribal development. And this research contribution, valuable findings, field experience, and innovative idea and practical approaches for addressing the challenges faced by tribal communities. This academic program was organized into 4 technical sessions where researchers and participants actively presented and discussed their work. Also, 300 institutions and brought 10 countries. This is very major strain in our major strain of the conference was the opportunity provided to researchers to share their research findings and experience. The discussion focused on several important dimensions of the tribal development, including health, education, livelihood, opportunities, and social and economic empowerment, culture, indigenous knowledge, sustainable development. This conference also highlighted importance of protecting and promoting the rich culture heritage and traditional knowledge of tribal communities in India and abroad the world. And while ensuring that their participation in the development process, the discussion emphasized that the tribal development should be inclusive, particularly sustainable and community entered, while more than 300 institutional participants. They discussed different thoughts, different suggestions, different more valuable suggestion platform for presenting 250 research papers approx, but
also important forum for our sharing knowledge, identifying challenges, exchanging innovative idea, and exploring pathway towards the holistic development and empowerment to tribal communities. So I congratulate the organizers, all members, researchers, delegates, and all participants for their valuable contribution and for making and all thoughtful suggestion will be published. There are the international research journal also will be published. And thanks to last of all students. Students all there are the all approx in our college students and several institutions that students and research scholar. You are one of the best person and in our future. So all request to all research scholar must be success in your future and continue research work, and research work is important and present now. Their tribal study, tribal development in our India, not only India, overall why. So special to thanks all students who join us and the continuously support our program. And on behalf of organizers, I extend my heartfelt greetings to all engineers and tribal communities also. And thanks to all our
faculty members also in this institution and good team. Also, there are the Saumil Tiwari, Indra Patel sir, Dr. Raja madam, Dr. Chanchal madam, Janini madam, Sarojmani madam, Bhagwati Sao, Dimple Patel, Bhavna madam, Akash sir, also Deepak sir, and Emin Dubey, Dhanesh sir, Sujongji sir, technical support, our computer assistant professor, Dr. Dhanesh sir, Sujongji sir, Indra Patel sir, and there are the Sital, Sarojmani sir, Sohili Oja madam, Rupesh sir, all faculty members. But one name very important in this session, in this conference, this is the Mr. Virendra Tiwari, chairman of the governing body, Chaitanya Science and Arts College, Autonomous India, is support, and without support not possible in this type of conference. And also special thanks Mr. Brijesh from International Social Science Association, and our respected Professor Dr. Garima Tiwari ma'am, and our respected Dr. V.K. Gupta sir, our principal. Without your support, without your inspiration, that not possible in this type of conference. I thank you to all once again. I hope you are all participate in this type of conference. Okay. Thank you to all, my dear all participants. Thank you. Dr. Naren, we also give big thank you to Dr. Amit Chandra, Principal B.Ed College, for his great support and the sincere efforts. Thank you very much. So this is going to be a new beginning. Thank you, sir. Thank you. Sir, would you mind to say a few words? Dr. Garima Tiwari is here. Madam, please bless us. Dr. Chandra, please. Yes, sir. सर मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हमारे कॉलेज की ये जो पूरे ग्लोबल लेवल पर पहचान बनाने का ये जो शुभारंभ हुआ है और आरंभ हुआ है और इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने जो विषय भी चुना है, जिस विषय पर काम करने का निर्धारण हुआ है पूरे साल के लिए, ये समय की मांग है और हम इसी तरह से बहुत अच्छा काम करते रहें और हमारी टीम को और ख़ास तौर पे सर आपको और डॉक्टर गुड़िया, डॉक्टर चंद्रा, आप सबको बहुत-बहुत बधाई कि इतने कम समय में एक विश्व स्तरीय सेमिनार करवा लेना और इतनी सफलता से उसको एग्जीक्यूट करना, क्योंकि मैं बहुत देर से सुन रही थी। पूरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें भी एक उत्साह देखने को मिला। ये खुद सामने आ रहे हैं और ना केवल नेशनल फोरम पे बल्कि इंटरनेशनल फोरम पे हम एक छोटी सी जगह में रहकर पहुंच पा रहे हैं। ये कॉलेज के लिए बहुत सम्मान की और उपलब्धि की बात है और इसके लिए चेयरमैन श्री वीरेंद्र तिवारी सर को भी बहुत-बहुत बधाई है और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये जो जिस उद्देश्य को लेकर हम काम करना शुरू कर चुके हैं, ये निरंतर जारी रहेगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. So let us